Okay, assalamu alaikum everyone. Welcome to day 2 of comstech training on health and hospital management. We'll start off the day with the first session. For that, I would like to invite our moderator again today, Dr. Tariq, to introduce the first speaker of day 2. Please. Thank you, Hasib. Ladies and gentlemen, our first session today, first session is about hospital financial management and budgeting. This is very important topic. I know very well because I'm teaching Health Service Academy since a long. The doctors are not aware of the finance and even the basic mathematics and finance. It is an essential component. It is a very, very essential component in health system to deal with financial matters. So now today, I have invited very special speakers. I want to introduce Dr. Mohsen. Has over 15 years of experience with the professional organizations. He has worked as a finance manager at British High Commissions, Islamabad, and managed a portfolio of 20 million pounds stretched to the 25 projects between the India, Afghanistan, and Pakistan. He has also worked with the Ministry of Health as a finance specialist, looking after the financial management of donor funds grants, the Global Fund, USAID, and UN agencies. Beside that, he was the lead consultant with the World Bank and has completed various assignments, including costing the national action plans for health security, conducting a health security financial assignments, and assessing a public financial management for health finance. Currently, he is a faculty member at Bahria University, Islamabad, and financial management, taxation, and financial modeling. Ladies and gentlemen, this is a very important. There are very few people who did a PhD in finance. In Pakistan, I think there are only 5 to 10 people who did a PhD in finance exclusively. Dr. Mohsen is among of them. I would like to invite, without any delay, Dr. Mohsen to deliver a lectures. Please come up stage and deliver lectures. Thank you very much. Assalamu alaikum, everybody. So I'll start the lecture, but before I start, when I was coming here, I was ये इससे क्या होता है? इससे नहीं हो सकता, बस तो इससे कर दूँ. So before I was coming here, I thought like I would be lecturing students, but it was a surprise to me because when I came here, I looked like I will be talking to professionals. So it's a good thing in a way, but I think in terms of financial management, I now, because looking at you people, it looks very educated audience already. So I won't stick to the formal presentation which I have made. What I'm going to do is like, by looking at you, I already changed the strategy. And the strategy is simple. So we are going to talk about financial management in next 1 hour or so. And it would be very ambitious that we can learn about financial management in this short span of time. So my methodology or my way of progressing today would be, I'll straight away ask questions. And then based on your questions, I will build the narratives that what we want to discuss in this 1 hour, make this 1 hour some productive hour. Because
being a lecturer, being a professor, I already know that when you start lecturing, after 5 to 10 minutes, people lost their concentration. It is basically they only learn when there is a demand for learning, and that comes from you. So my first question is, how many of you has a financial background? Just raise your hands. So you have one, we have two, and that's it. And the rest of them has a, I believe, has a medical background. Medical background. Okay, so I'll start from. So it would be more of a like teaching finance to a non-financial managers. I would rather say it's something like that. So I'll take two straight questions from finance people, and then of course I'll come to the medical staff, who then I will ask again simple one question, and then we'll start. So from the finance, madam, could you please? The question is simple for every one of you, and that is, if you have to learn one thing in financial management, what would it be? So I'll start from you. So you want to learn about budgeting in the public sector, I would say, because you are all from the public sector, yes? No, you are from the private sector. So we have private sector as well as the public sector, yes? Okay, that's great. So she wants to learn about budgeting. And anyone from the public sector and have a background of medical? Anyone? Yeah. You have constrained resource and you want to manage your budget within this constrained resource. You have competing priorities and you have to choose among one. That's the problem. Well, by the way, it's not going to help because Pakistan don't have at leisure to raise the health financing or health money straight away. But yes, we have other things which we can talk about today. So two questions, both are related to budget. They want to manage the budget. They want to learn about things. But before going to presentation, I have basically give you an idea about how the financial management differs between the public sector and the private sector. The good thing is, there is one thing about finance, that irrespective you are talking or you are working in a public sector or in the private sector, the rules of the game remains the same. So if you know the very, very basic rules of finance, you will survive either in public sector as well as in the public sector. And as I told you, in this 1 hour, it will be very difficult, but what I can give you right today is a path. Is a path that if you want to excel in the financial management, okay, we are talking about specific context of hospitals, but we can go beyond that. We can talk about overall health sector. Someone of you might end up in Ministry of Health, where I'm working. Someone might be working with the as a consultant with WHO, World Bank, and they are more talking about the same things you are talking about, efficiencies in spending, the budget. Because you see, I will give you one idea and then I will proceed. That invariably government, our health budget is, by the way, is very small. We are spending very small portion of GDP on health. And if you go to ministry, if you go to any platform, they said we need to raise the health spending. Currently, our public health spending is 1.2% of GDP. That is the current year. And it has to be raised to a certain level. So they said, okay, we need to raise the health spending by so much %. We need more money. And
Usually they're talking finance is not giving us money. Ministry of Finance is not giving us money. Government is not giving us money. Fine. So this is one side of the picture. But at the same time, I share my experience working with the ministries and different health departments. At the federal and provincial level, this is documented, by the way, you can validate these numbers, that every ministry or health departments almost surrender 30% of their budget every year. So now it undermines your claim that you need more money. You don't have a capacity to spend what you have been given, let alone you're talking about more money. So how your capacity will be in the question. When we go to the finance, they talk about numbers. It's where the money stops. So they will say, okay, we'll give you 100 rupees, you didn't spend, you spend 80 rupees. And in Pakistan, budgeting, by the way, is usually done on the incremental basis rather than anything else. And what is incremental? You get 100 rupees, you spend 60, next year you get 66 because you were unable to spend. Okay, adding the inflation will give you small money, extra money. But this will always remain the same. Another example, and then I will go to the presentation, is recently we faced COVID. And what happened during COVID? We raised 1.2 trillion rupees for the COVID. It's already there. You can see on the website of the ministry, and you can again check this. 1.2 trillion rupees is a huge amount. And what happened? In the first 9 months, only 30% of the money was released. So you know what is released means that the money is released by Ministry of Finance to the spending unit, either it's at the federal level or at the provincial level, only 30%. And ironically, only 10% of was spent. So you raise the money through, sorry. Yeah, sure. You can shout anytime. We know that we have all the different heads. The money is in a different head. They have. People are not employed. Excellent. So once they are not employed, obviously they cannot spend what they have. Reappropriation is not possible. Yeah. That is going to be left. Until unless you have the manpower, that will be only used. That money will only be used once a person is there. So usually it is the money which is on this head, but there are other heads also where they are unable to use because where the money is required in some other head, and it is not, and they cannot use it over there. That is the one of the reasons for being left. I will later come on to this framework. This is accounting framework, and the question you are asking will be answered with the chart of accounts concept. And it will be answered, of course. But you are absolutely right. That's the problem. That's the problem with the government. So when yes, we have the solution. Currently, I'm working on the solution. So you are in luck, because this is exactly what is my current assignment with the World Bank, with the Health Ministry, that we will be able, if this assignment works, because we have, of course, problems. But if this works, I will show you what I'm doing, so you have an understanding what I'm trying to do, and you can also build on that. If this works, it will bring a paradigm shift to health financing in Pakistan. Research ke saath, we can always pray because what we are doing right now is like what we are doing from the last 50 years. So either we can move with the same direction, with the same results. So someone said that if you want to get the different results, you have to be a different person. With the same methodology, same person, same way of living, you can get the different results. So the problem is that that the thing you are asking is basically is part of financial management. This is purely PFM reform, public financial management
reforms. And again, whole chapter, I can talk at length about that, but this is, I'll touch this. So we'll start with the definition of financial management. You already know that is what is management function. Anyone already know management functions? Nobody knows. It's a weird, yeah. Excellent, thank you very much. So we have As well, like motivation and human resource management. So that's going to be a So- so basically, yeah, Sam. management is an art and science. Through many functions, yeah. So basically, what he was telling is that we have planning, organizing, controlling, monitoring. These are the standard. When you go to any lecture of management, they will tell you that these are the four things. But these are related to management sciences. When we talk about finances, what do you think then how these functions correlate with management? These management function can gel in or can work with the public financial management or with the financing, how that could be. So what we are talking about here, my question, I repeat my question, is that we have functions of like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So for example, we are working in an organization, we have to plan, we have, yeah. Sir, full light off. Light off. Light off. Hello. So in terms of, yes. नहीं कौन सा कितने हुआ सी हाल ही चार्ज होता Okay, thank you very much. So basically, simple as that, I'll take you to a financial institute or any health institute. Now, as I told you, or he just mentioned that we have the budget. The only problem is we cannot spend because of some issues which I'm going to discuss shortly. Dr. Mose, sorry for interrupt you. I request the audience, please, we will take a question answer session. Take question and answer, question answer session. इनको carry on करने दे. अभी फिर बहुत लेट हो जाएंगे क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है फिर बहस शुरू हो जाती है हम इररिलेवेंट टॉपिक की तरफ चले जाते हैं तो कोशिश करें आप अपने क्वेश्चन जरा होल्ड योर नर्व्स एंड पुट योर क्वेश्चन इन पॉकेट. Okay, so I think then I will go through the same presentation and I'll give you more time of asking questions so we can have a discussion later on. So I'll straight away go to, so basically, as I told you that if you have the money, so what you need to do, either you are working in a public sector, either you are working in a private sector, what matters that you have been given money, you have to efficiently use this money. And because, and here the plannings and control, organizing, staffing, and directing and controlling works. So for example, simply saying that you said, okay, we have the budget of 100,000 rupees for ABC intervention. Now, this is the ceiling. You can't go beyond that. Now, this would be you're planning that how can we spend the whole year within the allocated budget. So the first thing you need to do as a finance person, or even after you're a non-finance person, is how much budget you have. Simple as that. And then
how you can spend that exactly. And then you organize it, you hire people or you work with the people to spend that. And then you see the monitoring activities. And all these things happen either in the public sector or in the private sector. Then we have a management connecting processes where we coordinate, we communicate with people who are working with us, and then we make the financial decisions. So in terms of financial organization, this is a very general, but this is standard, but usually I'll show you two different view of financial structure at the public and the private organization. So one thing we should keep in mind that there are two different ball games. When we talk about public financial management which is at the government level, there are different rules, there are different procedures. And when we talk about private, again, there are different rules and procedure. But usually it's a hierarchy. So different persons are working on different things and everyone has a different role to play. So for example, we'll just take two things, financial and managerial accounting, because this whole diagram can take a long time to explain, but anyone has an idea what is difference between the managerial or the financial accounting? No one has an idea. Okay. Okay, in simple, perfect, thank you very much. So in simple words, you have to manage the finances, but you have to account for it. You have to tell someone, okay, you are accountable for someone. So your manager will be asking how much you are spending, what you are doing. So there are two sorts of reporting. A, internal reporting for your organization. B, external reporting. So internal reporting, how we are spending money, are we spending efficiently and things like that. All the questions which are within the organization, you have to answer within the organization will be under the managerial accounting. And the questions you need to answer, you are answerable to the external environment, like other ministries, other stakeholders, that will be financial accounting. So in terms of private sector, usually financial accounting is done by external people, auditors, chartered accountants. They make your books of account, they present it and things like that. And internal accounting or managerial accounting is usually done by the people who are working within the organization. So you will be asked to develop reports how you are spending against the budget. That will be budget versus actual. So they can see the variances. So that sort of thing will be under the managerial accounting. In terms of external things like making financial statements and compliance with the global practices, these things will fall under the head of financial accounting. And then usually if the organization is big, then financial management is not the responsibility of one person, because every function is different. Even only talking about taxation, it's so complex that you need a full-fledged person to manage all the taxation issues. Similarly, if you treasury issues. So if the organization is big, then they have different people working within the organization. And if it's small, so then I have seen organization with only one or two finance people. One is finance manager, one is accountant. They are working very good and they are doing all these functions among themselves. But if the organization is big, then of course you have to have specific expertise in each of the areas. Now, this is usually the private. In public, you are already in the public sector, that there is a total different things. Like here, thing won't work like the private organization. The line of authorities are different. The procedures are different. So you see, this is a very basic diagram which says that the overall responsibility for the federal and provincial sits with Accountant General and Ministry of Finance. So they are the key people who drives every financial management decision at the higher level.
And then, of course, then we have AGPR, provincial offices. Then we have at the district level, we have DDOs, which is drawing and disbursement officer, DO and PO. So basically, in government, the financial management is done differently than in the private organization. So I have a question. If finance is same, this is same debit credit, we have the same money problems, we are running short of money, we have budget problems, then how the public finances is different than private finances? Public financial management is different than, what would be the main difference? You seeing on this two organization charts, this is usually for the private and this is for the government of Pakistan. So what would be the basic difference of financial management in these two organizations? Anyone else? One is the availability and the priority monitoring. Availability is the private sector is that is so. It is also the public sector has to ask that one can see private sector. Okay, so I'll in a nutshell, suppose you are working in a private organization and people came to you and they said, you need to raise the salaries. Okay, so this is one decision because it has direct impact on your budget. You have to raise 10% salary, 20 employees, 10% raise in the salary. It's a huge amount for every month. The same question goes to government's department. You need to raise 10% salary. So what are the consequences? Which is easy? In private, they can do it. They are at leisure. They can take their own decisions. Yes, anybody you want to say? Okay. But in public sector, we are talking about millions of people. So the hierarchy of the government, it's so big that a simple small financial decision, which could take like 15, 20 minutes, or it's just you have one meeting and you decide the destiny of the people. In public sector, it didn't work like that way. Approving a budget, raising salaries, cutting the budget, reappropriations, giving the budget underspend to other departments, they're all lengthy processes and you have to work with different departments at different layers to get things done. So in terms of public financial management and private financial management, the biggest issue is the processes. The accounting remains the same. The financial function remains the same. The only thing, the processes. So that is why what you have seen, or if you not understand, you don't understand it, but I can tell you right now that people, those are expert in public financial management, they are very, very heavily paid because they are talking about public finances, which is they know all the procedures, how to do it, how to reappropriate things, and they have a very good value in terms of they charge anything because they are expert of the finances of the government. But on the same side, the finances at the private sectors, if you are a chartered accountant, you straight away go there, you can do all the things. But in public sector, even you have all the degrees, you have to work there, you have to learn things, and then you have to deliver. So there are two different things, and you can only learn by doing in the public sector. So that's the basic thing. I come to the accounting framework. One thing I will emphasize here, and it will answer many of the questions, and you have to understand only one simple concept in this slide, and that will make your life easy in the subsequent slide. So I'll make an example.
Suppose you earn 100,000, and at the start of the month, you make a budget. So what would be the budget items? Anyone? So what would the budget items? No. I'm talking about, for example, you earn 100,000. This is first day of your week, and you said, okay, I have these. Grocery is a one item. You are going to spend your money. Food, education, traveling, things like that. Yes? Transport. And then there are others which are already raising. So at the first day of your month, you know you have 100,000. You know there are 5 heads, and you're going to spend this amount in these subheads. At the end of a month, you just see, okay, I have earmarked, or I thought I will spend 20,000 on grocery, but it's 25,000. So there's a variance. Now, these 5 things are called heads. And let me tell you one thing which you need to understand, and you have to work on it. The starting principle of financial management, either at the public or at the private, is understanding the codes which we have just developed, 5 codes. In accounting, it is called chart of accounts. The first line, chart of accounts. What are chart of accounts? Is the agreed subheads for your income, agreed subheads for your expenditure. So what at the end of the day, you know, okay, I get income from 2 different sources, 001, 002. But I have expenditure on 10 different areas. So 01 to 010. And if you can develop it, all subsequent financial management will depend on it. The more professionally you develop your chart of accounts, later on, you will be able to extract financial information according to these chart of accounts. So this is the crux. And then so again, one question and then I move on. In terms of chart of accounts for government versus private, anyone has an idea how the chart of account looks like in public organization or in a private organization? Okay, so there are few in public and more in private. More in public, few in private. So who said more in public and few in private? Sorry? Very good question. Chart of accounts mean I have to step one further. So chart of account has basically 5 heads. I'll make it 4 for your understanding. You earn income, that is income chart of accounts. All the income chart of accounts, 1, 2, 3, 4. You spend the money, you have another, which is called expense chart of account. So there are now 2. You save money and buy a car. Car is an expense or income? It's not an expense, it's not an income, it's an asset. So you have 3rd chart of accounts, assets. Okay, but basically you were short of money, so you take loan from people to buy that car. Is it an asset? It's an expense, it's income, it's a liability. So now you have 4 chart of accounts. The first is equity, which I'm not going to discuss, but basically, so you have income, you have expenses, you have assets, and you have liabilities. Is that clear? Is it very clear? Now we come to public sector, equity. Now we come to public sector and we go to hospitals. And if you answer my question, I think you understand the chart of account. So you are a financial administrator of a hospital and they say to you, we need to track the health expenditure in this hospital by disease. By disease. So what we're going to do?
You have your accountant sitting with you next to you. You said, okay, sir, you said we have to track the expenditure because you, at the end of the year, you are going to ask me, okay, in this hospital, we are dealing with 20 diseases. How much we spend on each diseases? Excellent. Disease-based chart of accounts. Excellent. Simple as that. Now your question. Pakistan does have disease-based chart of accounts. So now another question. You understand it. We need to track the diseases. We need to have the chart of accounts. So everything would be aligned. So if you have chart of accounts, will you get the money by disease? Yes or no? Of course, yes. You said we are tracking 10 diseases. We need 20 million for COVID. Where you book it? Where you book the expense? Against COVID. At the end of your year, if you ask, they will ask you, tell me you are dealing in 20 diseases. Where you spend most? Can you tell it? Yes. Yes or no? Excellent. Just I will take the question. And can you ask more budget next year because you spend higher in specific disease? Yes or no? Yes. The ugly part came here. In Pakistan's financial management system, which is public financial management system, through which you earn all the government finances at the federal level, provincial level, district level. There are no disease-based chart of accounts. So what are the consequences? You tell me. Sorry? I come. This is a इशारा I call. तो मैं एक इशारा आपको बताता हूँ ताकि मैं बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे तो this would be in Urdu क्योंकि otherwise it won't make any. पाकिस्तान में जो अदालतें उसमें बहुत झूठ बोला जाता है. नो ऑफेंस बट झूठी गवाहियां भी दी जाती हैं. नहीं मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, ये इशारा बताने लगा हूँ ताकि जब आप पूछेंगे मैं आपको इशारा करूंगा आप समझिए. तो क्या होता है एक दफा के एक बंदे ने गवाही दिलवानी होती है तो बाहर आता है तो देखता है यार कोई बंदा गवाही कम है. इधर आया तू. कहता क्या करना है? कहता है गवाही देनी. झूठी गवाही होती 500 रुपये दे दूंगा. ठीक है. तो जब वो जाता है जज साहब पूछते हैं हाँ जी क्या चोरी हुआ था? उसने डंगर चोरी हुए थे. नहीं जज साहब उसको कहते हैं हाँ जी डंगर चोरी हुए थे. तूने देखे थे? हाँ जी देखे थे. कितना बड़ा था? इतना बड़ा. कहते मुर्गे इतने बड़े कब चोगे? सर आपने नीचे वाला हाथ नहीं देखा. थोड़ी देर सबर करे. सो कहने का मकसद ये जब भी मैं आपको ये इशारा करूंगा थोड़ी देर सब्र करना आपका जवाब आ जाएगा थोड़ी देर बाद. सो अब आपकी बात वो ये टॉकिंग अबाउट चार्ट ऑफ अकाउंट. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट. वी नो देयर आर 4 डिफरेंट हेड्स expenses, income, balance, assets and liability. And we don't have chart of accounts in government system. So what will happen invariably if someone asks, I was working with Niram Hospital, and they said there was an assembly question which they said that we need tell us the expense by head. We don't have it because chart of accounts not developed like that. So this is the biggest problem in public sector. So coming to the financial management, there are 6 different pillars, and because of shortage of time, we are not going to discuss everyone. We will touch base on the 3 of them, which are in green color: revenue management, cost, and budgeting. So now, before I move to this 3 things, now you tell me. You understand the basic concept of accounting, which is chart of accounts. And you now understand it.
you've been working as a public financial management specialist or working in a private organization, and you've been asked that you have to manage the budget. You have to do the public financial management. The first thing, what would you do now? Revenue management or whatever. So what first thing what you do now? Collect data or budget planning or resources. Okay, so let me just jump over to the things. First thing you will, when you're working in the public sector, it's a little bit different. When you are working with the private sector, the first thing you will try to establish how much money you are going to earn in this year, how much revenue you are going to generate this year. Because if you know this is the target, getting money of 1 million or 2 million, whatever it is, then you plan accordingly how much resource we need, how the things will work. Starting from your basic thing is revenue management, because it provides you, there are 4 functions: financial stability, sustainability, cash flow, and improving operating margin. Now, in terms of revenue management, we are talking about hospital now specifically. Apparently, it's very easy. You render a service, you bill for the service, and you get the money. Simple as that, isn't it? So someone walks in, I'm sick. Okay, so this is the services we provide you, we charge you that much amount, happy go lucky. Isn't it simple? Yes or no? It's very simple. But actually it's not. Why? Because when we talk about revenue management, again, I'll take you the same chart of accounts, because I told you there are a few things you need to understand about financial management. And one of them, of course, is chart of accounts. The next thing is, of course, basic accounting. But chart of accounts is the one thing you need to understand. So we'll just talk about recently that we have what happened globally, that either you are working in a private sector or you are working in a public sector. They have very specific codes for each of things, either for revenues, either for expenses, either for budgeting. So what happened if you have categorically detailed codes? What will happen? You tell me. So if you have codes separate, you are covered. What will happen? It will be easy. Data extraction, budgeting will be easy. What is a budget, by the way? Allocation of money, 2 different heads. So you need to have heads. Of course, you need to have money, of course. But you need to have heads to allocate the money. So you allocate the money correctly, you can correctly extract the expenditure. You can correctly budget it. So globally, there are 5-6 heads, which are called international classification of disease. You have diagnostic related groups. You have, so basically what they are only coding systems. And what they have done, so you are doctor, you have a doctor background. What is burden of disease? So how many diseases there are there in burden of disease? Prevalence, how many diseases we are talking about? If you talk about international, so how many diseases they track? 1. But what is the overall? 270. I'm not doctor, but at least because I work with. So there are 270 at least diseases they track. Not everyone is like having the same diseases. Every country is different. But so do you think we need to track everything or no? At least which is prevalent in that area. So this means you should have flexibility in your chart of accounts or detail enough chart of accounts. So in case you want to add, because COVID was not there previously, now it's there. So you have new disease, which was not there. So you need to have a new chart of accounts because you have to track the expenditure. Yes or no? And by the way,
Government has created a chart of accounts in government public financial system, which with the name of COVID. The bad thing is that they are putting everything in it. So if someone asks, okay, what is the expenditure of COVID? It is 2 million. So what was human resource? What was vaccine? What was other things? Don't ask. So when you are dealing with financial management and you are talking about revenue, so you design your chart of accounts based on any these classifying growths, and that in later on, it will help you to identify where you are getting your money, where you are spending your money. It will be very, very easy for you to track the expenditure, allocate the budget, and just monitoring activity. So in revenue cycle operations, we have front end functions, middle functions, and back end functions. Basically, it's again, when someone walks in for the medical treatment, the front desk officer basically he registered you, and then he gave the case to the accounting officers and said, okay, you have insurance cover or how you're going to pay us, things like that. So, but the bottom line is that to have a good financial management system, one thing which is imperative you should have in your organization is a good accounting system. So without having an accounting system in your organization, either it's a very small or a big, but what matters is you are not doing the manual accounting. You should have to have a good accounting system to run the finances of an organization, either it's public or private. For private, this accounting system is not small. So it is Oracle Financial, which is huge. In fact, whole ministry are working on it. So you can understand the scale of work when you're dealing with the public finances. In terms of private finances, even a QuickBooks, a small software or any software you can buy, and you need to have basic understanding of accounting so you can do all these things. The second thing is managing cost. So you manage revenues. So what if I ask you what would be the best thing you can do with your cost? What would your answer would be? What one thing you want to do with your cost? Perfect. Thank you very much. So you want to reduce the cost and you want to deliver the same results. That is efficiency. So you said, okay, we are planning to a revenue of $20,000 or 2 million rupees. And for that, we need to do these expenses. But we can cut off these things. We can do cost saving plans or things like that. So the second thing, in the first thing in cost management, you need to have understanding of what are the strategies where you can cut the cost. And for that, you need basic 3, 4, 5, or 10 things. These are the basic concept of types of costs. So you have direct cost, you have indirect cost, you have opportunity cost. I won't go into details, but on a very basic level, anyone has an idea about the fixed or variable cost? Sorry, yes. So for example, in a hospital, what would be a fixed cost or what would be a variable cost? Equipment, the machinery. Equipment, machinery, आपकी fixed cost हो जाएगी. And then what would be variable cost? आपकी medicine और legal. So as you get more patients, your cost will increase, yes or no? Because you have to provide more medicines and more treatment. So the costs which are directly related to your activity, and you are dealing with patients, so your activity is basically dealing the patients. So the more the patients, the more the work you have. So that would be your variable cost. And fixed cost is that you have all the machineries installed there, everything is there. So which cost you need can manage easily, variable or fixed? Fixed तो आपको manage करने की जरूरत ही नहीं होती. Well, you have to manage both costs, by the way. But yes, fixed cost is one-time cost. And then if you don't invest the money prudently, that becomes your sunk cost, which is another issue, which is like
You buy a machinery, you don't envisage it will work for the next 2 or 3 years. And then there is an X-ray machine, and you know there will be new X-ray machine coming in 1 or 2 years. You invested a lot of money in that X-ray machine, and that just get outdated. So that is a sunk cost. So you need to understand these things. Then you have opportunity cost. Then you have what is differential cost? This is one concept you need to understand. What is the differential cost? Because in hospital management, you need to understand the differential cost. Differential cost, I would explain it in a way that, for example, you are going to University A or University B. Now, there are differences in terms of their teaching methodology, but you have to travel. So either you go to University A or you go to University B, there will be a travel cost. So it is irrelevant. You can't change because you have to bear this cost. So differential cost is when you can avoid this cost. The transportation cost, you cannot avoid it. But the things, same in hospital, there are costs which you cannot avoid. You have to do these costs. You have to clean the hospital, you have the other things. Differential costs are that cost which can be avoidable. So you have to keep an eye on the differential costing to be a cost effective at the public and private hospitals. Marginal cost, what a simple marginal concept, as long as treating a patient is giving you money, you take more patients. When you stop it, if that is your marginal revenue is less than your marginal cost, you don't treat the patients. Break even is when all the costs are covered by your revenues. So if you have more revenues, you have less costs, of course, you are in profit, and vice versa. Budget. So why the last topic is our budget, and why you think budget is important, and how the budgeting works in public and private. Is it same or is it not same? So there are so many questions, but first question is, what is a budget and why it's important? So this from these people I haven't heard any much. So anyone from this side? Resources in order to achieve some certain targets that you've already decided. And why it is important? It's important because you have to have some check and balances around what resources you're putting in and what targets you have to achieve. So targets can be in terms of profit, or maybe the public side, then in terms of maybe health. As many targets, you have to treat this much of people, and we can spend this much amount. Perfect. So thank you very much. So simple is that you have a plan, you have a financial plan, in fact, which is called your budget. So at the start of the year, you said, okay, and again, another question is that, is the budget same in terms of public or private sector, or there are differences? What would be the first difference between public budgeting and private budgeting? Sorry? Excellent. Hierarchy. Scale. Because when you're talking about a hospital budget, a private hospital, it may be some millions, but you're talking about government, it's huge. So, and then of course, hierarchy, procedural changes. So let me explain it. For example, so this is the government budgeting system. There are basically lots of steps, but I just summarize them. So when we talk about the government budgeting, it is, as I told you, there are lots of procedures, and it is a lengthy process where you issue a budget called circular, Ministry of Finance, where they ask us, every department, to tell us, okay, how they are going to spend this year. This is their budgeting. And then and based on these budgetings and estimates, they release you the money, and then of course they check how you are spending as per your allocations. And in private organization, it doesn't work like that. You simply have a budget committee who approves the budget, and then you allocate the budget, and then you spend it. So in terms of now I'll tell you something about financial management in the public and private, and then I'll straight away take the questions, because when we have a question answer session, it is the time when you learn more. So I won't speak much now. One thing you need to understand is that for financial management, especially for non-finance managers, one, you need to understand the chart of accounts.
clearly. Even you have no financial background. You ask your finance person how we are tracking their revenues, how we are tracking their expenses, how we are tracking or how we are developing your budgets. The more detailed chart of accounts you have, the more easy it would be to report either a non-financial person that what is happening. So this is the first thing. B, you need to have a very, very clear or basic understanding. I would, if you personally ask me, I would recommend every doctor at least to go for a 5-day training on basic accounting. So he or she understand that what is, and by the way, it's not very difficult. It looks like difficult. It is not difficult because if you have the basic accounting training, finance is based on accounting. There is no financial decision which you can take without understanding the accounting. Yes, you can take it, but to have a sound knowledge of financial management, because most of the people who ended up in the financial management career, they come up from the basic accounting and then they develop their financial expertise. So the second takeaway would be invest in your knowledge of basic accounting. Any public financial management course or any accounting course which will give you an idea about how things happen. The third thing, which specifically for public people, people working in the public sector, is have a simple course on public financial management, because unless you understand the whole circle of budgeting, allocating, spending, and then monitoring in the public financial management system, you won't be able to understand what is happening, how the budget is allocated, how you reappropriate, when the budget lapses, why they are lapsing, and what are the problems. So you need to have a basic understanding of that. And based on that, I would like to have questions from you, and then we can. Thank you very much, Dr. Most. If we'll take only 2 or 3 questions first. Ladies first. Gigi, you can ask question. Dr. Fatma from Health Services Academy. Sir, I want to add a comment. जैसे आपने कहा कि हम बजट प्रॉपर्ली यूज ही नहीं करते, बेसिकली हमें दिया ही नहीं जाता, हमारे पास मेडिसिन नहीं होती है, हमें एक लिमिटेड अमाउंट दी जाती है और कहा जाता है कि इसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए आप यूज करें। जब तक हमें एक टाइम नहीं दिया जाएगा कि इतने महीनों के लिए आपको इतना बजट दिया गया, तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? तो ये कहाँ पे लैप्स है, ये इस पे थोड़ा सा आप ये बोलो। क्या बोले? अच्छा, देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन है, मैं सबको एक ही उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बात याद रखें कि when we talking about health financing, so we have health and we have finances, it has to be financed. The only thing which we don't understand is that health financing is based on financial management. So if you have a good financial management, public financial management, then you will be able to spend money, allocate money, and get more money. The problem is that we are still, right now when we are talking, is working about health issues. Even if you go to Ministry of Health, no one is talking about public financial management for health. Even there is no department at all. So when you don't answer something, you don't address something, do you think it's automatically will fixed? It won't. So the first thing I would recommend for the public people, while they're working with that they need to have one person specially trained who has an accounting background. I don't want to say, because I've worked with the ministry and other departments. The person who is dealing with the finance sometime, and quite a time in fact, is a non-finance people. So he don't understand basic accrual and cash concepts. So there are huge capacity gaps in terms of financing. So what the first step would be, you have desk officers for every disease and everything in ministry or departments, but you don't have a desk officer for PFM, for health. So when you don't have a person who can fight for you, no one fight for you, because the person you have is an accountant, DDO, or basic person who don't understand in depth what is public financial management system.
So first thing we need to do is someone on your behalf who knows finance, who is from the minister, who is in touch with these CGA, control general account, AGPR, finance, and he's continuously working with them for you. This is the only solution. Otherwise, the things we are pursuing right now, it will remain the same. Thank you. It won't change. ये इसका मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ. आई प्रैक्टिकली वर्किंग विद हेल्थ मिनिस्ट्री. या जैसे डॉक्टर मोहसिन ने अभी आपको कहा कि तकरीबन हमारा जो रिलीज जो थी तकरीबन 45% थी और उसमें सिर्फ 10% हमने यूटिलाइज कर सके. यानी उसकी रीजन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन दैट इज ऑल सिस्टम. हमारा एक सिस्टम में रिलीज आती है, एजीपीआर में जाता है, वहाँ पे एक एसओ बैठा होता है, सब लोग आपने कुछ मिनिस्ट्री, तो 10 दिन तो उस एसओ के टेबल पे फाइल पड़ी रहती है. फिर उसने लेटर बनाना होता है, फिर डीएस के पास जाता है, फिर जीएस के, फिर एस के, और डीएस है, जेएस, एएस और देन सेक्रेटरी. सेक्रेटरी की अप्रूवल होने के बाद फिर एजीपीआर जाता है, सिस्टम हमारा लेटर जाता है, वहां से फिर रिलीज आती है. और ये रिलीज प्रोसेस के अंदर हम पैसे जो रिलीज होते हैं, मतलब रिसेंटली है वन द PC1, वो पूरा एक साल हम उस पर कोई काम नहीं कर सके. 65 मिलियन का PC1 था मेरा, मैंने खुद बनाया था, हमने खुद, लेकिन रिलीज हो गई. रिलीज कब आई? जब आखिरी दिसंबर था. 6 माह गुजर गए. उसके दिसंबर के बाद रिक्रूटमेंट शुरू हुई. रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हुए 6 माह गुजर गए और वो पूरे के पूरे हमें दोबारा फिर वापस सरेंडर करने पड़े पैसे. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. क्वार्टरली रिलीज होती, नहीं रिलीज जो आती है वो क्वार्टरली होती है, मैडम क्वार्टरली होती है. लेकिन इसमें वो जो क्वार्टरली रिलीज होती है उसमें इतने इश्यूज होते हैं कि आपके जो एजीपीआर इन्वॉल्व होता है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, प्लानिंग कमीशन इन्वॉल्व होता है, अगर फॉरेन फंडिंग है तो इकोनॉमिक अफेयर एडमिन, ईएडी इकोनॉमिक अफेयर एडमिन इन्वॉल्व होती है, स्टेट बैंक इन्वॉल्व होता है. देयर आर लॉट ऑफ मिनिस्ट्री हु आर इन्वॉल्व इन दिस रिलीजिंग प्रोसेस एंड वेटिंग प्रोसेस. तो देयर इसका सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन की तरफ आ जाए. Yes, I give one example. इसका solution मैं बता रहा हूँ. Yes, that's the same. हाँ, ये नहीं, मैं आपको इसका solution का बता रहा हूँ. Solution ये है, how we can solve this problem. If all the funds, allocated fund, directly sent to the accounts of the concerned organizations. आप directly उसके organization के दे दें. मसलन जो अब हमारे पास 2 PC1 थे हेल्थ सर्विस अकेडमी में. एक PC1 वो है जो मैंने 65 मिलियन का था मेरा था. दूसरा था एक यूएसएड फंडेड. फॉर्चुनेटली उसमें अब हुआ क्या है कि जो यूएस फंडेड नॉर्मली वो आता है कि डायरेक्ट उसके गवर्नमेंट के अकाउंट से होता हुआ, लेकिन यूएसए डायरेक्टली हमें फंड एचएस अकाउंट को दे रहा है. वो सिर्फ एक पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन खत लिख देते हैं उनको, इकोनॉमिक अफेयर एडमिन को, प्लानिंग कमीशन को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को. तो हम बड़ी आसानी के साथ डायरेक्टली यूएसए से कंसर्न. लेकिन नॉर्मली बाकी PC1 से अगर आप देखें, जितने भी फंडिंग पीएसडीपी के अंदर फंडिंग आती है, वो पैसे इस तरह नहीं आते. वो डायरेक्टली इकोनॉमिक अफेयर एडमिन के पास जाते हैं, फिर प्लानिंग के पास जाते हैं, और वेरी लॉन्ग प्रोसेस, फिर तो उस कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचते. तो इसी वजह से डिले होता है. ये सिर्फ एक ही हल है कि जो रिलीज या जो पैसे जो एलोकेटेड अमाउंट है वो डायरेक्टली सेंड टू द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑटोनॉमी दी जाए, ऑटोनोमस कर दिया जाए. तो देन जैसे कि हॉस्पिटल सारे के सारे एमएस उनको अगर ऑटोनोमस हो जाए या ऑटोनॉमी उनको दे दी जाए. आपको पता है हॉस्पिटल के जो एमएस है या आप सब डीएचओ रहते हैं, उनके हाथ बने होते हैं. वो ये सॉरी यहाँ पे बहुत हमें टाइम बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इस तो बहस करने लगे, क्योंकि यहाँ आपके पास फाइनेंशियली सर मैं हेल्थ इकोनॉमिस्ट हूँ, तो ये बड़ी लंबी बातें शुरू हो जाएंगी, शाम तक लगे रहेंगे यही बातें. One short question. Sir, you have discussed about financial management and budgeting. What about our share? What about Our share? our share? Yes. Your share is zero. So either it's officially or unofficially, but without share, we cannot issue the bank draft. Yes. We take the share. This is reason behind the share की सारी गेम है. हाँ जी, वो तो no expenses. ये तो आपको उसकी बजाय ग्राउंड रियलिटी देखें पाकिस्तान में. वो तो
both you can't get on resume in your organization until if you included 5 to 6% in AGPR. अभी तक वो आप शामिल नहीं करते थे, आपको resume नहीं मिलता, वो एक अलग बात है. और कोई क्वेश्चन है तो बस लास्ट क्वेश्चन, I want to take only one question. आप टी ब्रेक में हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के साथ. Yes. My name is Dr. Medina. I'm from Peshawar. So my question is, in when we have budgets in the hospital, it is not a chart of account budget, as you said. It is not for a specific disease. It is just to run the hospital on daily basis. So what kind of budget is that? And the second question is, where can we have the courses? As you said, we should have courses as doctors, the budget courses. Where can we have those courses as well? Thank you. Okay, so basically, in terms of public financial management, there are 4 sources of finances which currently our government is using. One is recurrent budget. So what you are talking about is a recurrent budget, which is basically approved by the cabinet, by the parliament, and then it's given to the different department and organization. So you can spend that as per the chart of accounts, which he was saying that. The second is a development budget. You have to develop a PC1, you have to get it approved, and then it is called development budget. Again, it was given to you, but again, it's a lengthy process. The third is own sources. For example, NIH is like charging fees for services, and they are making revenues, and then they are spending on. And the fourth is donor funding. So these are the total 4 different sources of public of financing in government of Pakistan. Now, what you are talking about is purely current budget, which you've been allocated at the start of the year as per chart of account. So the irony is that there are 2 things which we can change at this current account, is that we have more chart of accounts. Currently, what happened if you receive a budget for line A, which is salary, and there you don't spend that, it has to go back. You cannot reappropriate to other things which you need. That is the problem. Another problem at public financial management is that even you have the money, you do, because of decentralized or devolved setup, decentralization has taken place, but the fiscal decentralization has not taken place. So they have not the authority to spend the budget. So you have the money. What happened during COVID? They have the money in their pots, but they were not able to spend because there was no authority to approve it. You have to go to the federal ministry, and this again. So as I told you, this is first part of the question. You need public financial reforms right now to go to the next level. And yes, of course, there are cuts and everything. We are saying this will be part of public financial reform, because you have to accept things like that. The second part, if you go to Ministry of Finance, they have courses. The only problem is that we don't talk to them. So if you talk to them that we need these financial courses, they will arrange it through PEPRA or through other. They have multiple trainings going on. So you just ask them that we need a group training. Thank you. But my problem is that we have to start a session on time. So we have a very short time. The next session is online question. Dr. Fahim? Dr. Fahim, can you hear me? Yes, sir. So, my question is, what is the role of priority setting in financial management? What is the priority setting in financial management? Priority setting in financial at the public level. Sorry, at the public level, the only financial management is that you spend your whole amount, and that's what government is looking at. Because in government, the public financial management revolves around Ministry of Finance, not the spending unit. So they are the boss. So what they said, okay, we'll give you 10 rupees, you spend it, otherwise we'll take it back. That's simple what they do. So in terms of other financial management at the public level, as such, it's not very professional. It's like 2 + 2 = 4. You spend the money, you get more money. You don't spend, you have to surrender the money. So I'm sorry, but this is the very straight answer for that. Thank you, Dr. Mohsen, a very brief or precise answer. Ladies and gentlemen, now we have the next sessions. Before we'll start the next session, just I want to request for all of you, because you are all hospital manager, you must know about the finance and account a little bit. Otherwise, your account officer, your financial manager, वो आपको बेवकूफ बनाएगा. तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको इसका इल्म होना चाहिए. लेकिन now at that time we will start next session. The next session is about the behavioral change, communications, and effective communication in health. The speaker of this session is
Mubashir Nabi. He is the founder president of ex-CEO of ACT. Mr. Nabi is community development specialist with one expertise in the area of social mobilizations, public information campaign, and designing of communication and BBC strategies. Having a diversified background of 30 years of experience and contributed to the policy work and designed and n- piloted a number of national programs and development initiatives across Pakistan and AJK. He has understanding of working with international and national organizations aiming at poverty elevation through community mobilizations. He was also part of the formation of Human Resource Development Network, which sets milestones in the history of capacity building endeavors in the country. His special interest revolves around the institutional development, organization strengthening, leadership management, social mobilization, public information and campaign, capacity building programs management, and innovative divergent program in the field of poverty alleviations, health and education, disaster preparations and early recovery, livelihood, social sector. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Mr. Mubashir Nabi to deliver a lecture on behavioral change. शो पे होगा कौन सा बताना है हाँ सेंड करो हाँ सेंड करो पर ये बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान. Today's our topic is a very interesting topic, but time is too limited. 1 hour is very limited time to discourse or discuss in depth the behavioral change communication, its perspective, its challenges, and its impact, particularly with context of health programming in Pakistan and the region. But I will try my best to come up with some salient part of that whole process, and this will be highly interactive session. I will speak less and it will be more interactive with you people, and I hope you will enjoy and participate in the session. I recited some verses from the Holy Quran, that is Surah Rahman, and when I was a student, my teacher was said that if you want to understand the priority of Almighty Allah, you need to understand the Surah Rahman, that first 3 things where Allah has clearly communicated to the humanity that at the end of the day, his third top priority after creation of humanity is to taught speech. So it is top most thing that if we want to come up with anything, we in our personal life or in our family life or in our community life or in our professional life or in our business, the speech and the communication plays a pivotal role. With this note, before starting this, I was reading a 6th global health report, and I pick one sentence, and that was very interesting in terms of this whole business which we are talking today. Health should be attained, not to be imposed. This was the agreement and written in the 6th global health report.
Health should be attained, not to be imposed. It means if this is the frame of perception and understanding, then there is no other option for health workers, for health professionals, or public sector or private sector that they must engage. You never attain health if you will not attain as a stakeholder, as a partner with the community to reach out the challenges and address the challenges by doing that thing. For that purpose, I will be, first I would like to ask a simple question, behavior. We in our general discussion said the behavior of this community is very harsh. This behavior of this community is very progressive. Behavior of this community is very responsive. I would like to ask this question to the audience. What is your understanding about the behavior and how you can translate or perceive the word behavior? Any volunteer can share, but I need to be run also. Please. Ji? She said aadaton ka majmua. It means the composition of attitudes, a composite of attitudes. Any other, please? Yes. हाथ खड़ा करेंगे क्योंकि बहुत गार्डियन से जी सर. How you will interact with other? Interaction is communication. जी sir. Interaction within and within the community. Yes. Yes. First, he said that it is a, sorry, how you perceive. Okay. And response and reaction. Very good. Ji. Any other from that side? Please. आप जो समझते हैं, please share that. You don't need to. Okay. So if we can see that the behavior is a very complex phenomena, it is not as easy as we are discussing here. All of you people who shared their perception, that is true. And if I can translate that, all that in a sentence, we can say behavior refers to the actions as you shared, or reactions of an object or organism, usually in relation to the environment. It means that any reaction or action or response from an individual or from a group or from a community at a larger audience within a specific environment is called behavior. Because, for example, my attitude is I am not good listener. This is my attitude. But I am sitting in a forum where 600 people are in a discourse. Due to that attitude, there's someone can ask such question, and because I don't have patience, I have that attitude problem, so I reflect immediately, and the community group said his behavior is non-patient, yet his behavior is not, he's aggressive or he's too critical like this. So that is basically the action or reaction or response from an individual or a community group or any organism in context of the environment. Then second is human behavior. Anyone can, if you have mic, please, वो mic किसी के पास है जो इधर कोई team member है? Any volunteer can read this. Mic दे दें किसी volunteer को, आपको इनको दे दें खाते. थोड़ा बेटा स्पीड करेंगे क्योंकि वरना मसला है. जी. Read it loudly so that. Human behavior is the collection of activities performed by human beings and influenced by culture, attitudes, emotions, values, ethics, authority, persuasion, and or coercion. Now, what you understand? Last one, please. आप में से कोई इस ग्रुप में से, मैं आपको 3 ग्रुप समझ रहा हूँ, 1, 2, 3, जी.
Very good. Please. तो यंग बंदे को दे जी आप बोलते थे मैं सुन रहा हूँ behavior is obtained by a person by the environment. Activities that are being done, that is from the environment side, and culture, of course, is obtained by the environment side. Attitude, of course, aggression, or ये सारी चीजें that has been obtained by emotions, values, ethics, that are related to the environment that a person has. What I think from your definition. It is a continuous process statement. You have adopted from the knowledge from the जो भी आप उसे इनपुट दे रहे होते हैं उसी तरह वो चेंजेबिलिटी आपकी एज के लिहाज से आती रहती है कंटिन्यूस प्रोसेस है बिल्कुल if we can say like this that ultimately we need to understand this thing that the behavior at soul is the outcome of the number of factors, and all those factors are either the internal or the external. That is the overall holistic environment where a person is residing, where a person born, what type of family culture was, what type of institution, educational institutions culture was, what was his friends in the teenage, what type of knowledge he attained, what type of caste, creed, or trade he possesses, and what type of education or knowledge base an individual has, and what type of interest as individual he urged. So all these things we call in English word in psychology, that is orientation. That every person sitting in this hall has its own orientation. And we need to communicate everything after understanding the orientation of the individuals. We need to understand and communicate on the basis of the orientation of that particular target group. If we are working in the newly merged districts of Khyber Pakhtunkhwa, you must understand the orientation of those people. If I am working in Bangladesh, in Ashorganj, then I should understand the context and orientation of those people, and our whole mechanism of communication should be accordingly. So orientation merge from that, and this is the phenomena that human behavior is not controlled. It always influenced and influenced with all these factors. So as a his internal and external environment is volatile. For example, one person residing in the North Waziristan, but he is very smart, very progressive, very responsive. The then question is why he is, because his outreach, his culture, he born there, so and so. So it means there is a cushion and space, that is the relationship between the attitude and the behavior. How that individual can change or try to change. I will come to that slide, sir. Will not authority be able to control the people, sir? For example, I will give you the example of COVID. Here the authority means that when there is a pandemic of COVID, I was working for designing this strategy. Then there was this question that number of regions or the areas in Pakistan where the people are not responding. For example, the business community, XYZ, other things. So ultimately, the state has also engaged and adheres their own, invested their own authorities, and they use that authority by taking number of steps. And through those steps, you see number of people who don't want to be vaccinated, they compelled to be vaccinated. For example, for your travel, they banned that XYZ. So this is the phenomena that ultimately, if we can see, is there acceptance? For example, for X thing, immunization, vaccination for EPI program is, for example, still in 2022, there are some regions where still there is a resistance.
but at large there is acceptance. If we can compare the data of last 2 decades, there is a tremendous change, and that change is because of that whole BCC programming that has been launched by the public sector through the assistance of different donor agencies, particularly UNICEF, WHO, and others. So this is the phenomena which we understand, that there are rejections. Why that rejection? There are resistance. So all these things are related to that. Coming to the next point, that is, if we can say behavior, very simple. I will skip this slide. It will not. I will not discuss in detail. Behavior is observable, definable, and measurable. There is a frequency. In some cases, how often does it occur? It is not always I am reactive, and it is not always I am proactive. So if you can see the behavior of your manager, if you can see the behavior of your family head, if you can see the behavior of your politician, if you can see the behavior of your malaks, are the influencers in the society, so that they manage, that occurs in a span of time that has a relation with the duration and frequency both. And that is very important when we will lead to the conclusion of the session. This indicator will be a very important indicator in terms of designing this BCC programming. What key factors? It has been discussed already. I will not go in detail. That attitude, social norms, and perceived behaviors. These are the 3 key indicators, 3 factors, which are directly or indirectly affect the behavior. Human behavior, they directly affect or indirectly affects. So if I can conclude like this, the behavior word, understanding of the behavior, all these factors are directly or indirectly contributing in developing a behavior of an individual, or a behavior of a society, or a behavior of a community at large. Yesterday night, someone asked me this question, that why Bangladesh, the indicators of Bangladesh in family planning is high to Pakistan. I refer the study, and I would like to refer again so that you understand this box. That is the key 3 things which are the essence of that study. One was political will. Other was the literacy. They have worked too much in the literacy, not only the read and write, but financial literacy, and that gives the essence to individual to understand the economics of a household, or subsistence of livelihood, subsistence of an individual or a family. And the third was their overall community engagement or nationalism. They derive from that whole thing. So these are the 3 major things, but there are a number of things. So if we can see that commitment, political commitment, all those things. So these are the areas where someone can influence through these areas: knowledge, personal advocacy, social influence, emotions, self-image, attitudes. All these contribute for the development of a behavior. If I can say change, the word change, what is your perception from top side? माइक किसी को दें, और यंग बंदा दें, सर डॉक्टर साहब कोई यंग बंदा दें जो घूम सके। जी वो माशाल्लाह बड़े, नहीं माइक देने वाला तो माशाल्लाह यंग बॉस है ना। अच्छा दे सर ऊपर, ये सब दे, थोड़ा जल्दी करें। उतनी देर, अगर आपकी आवाज ऊंची है तो आप बात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एनी वॉलंटियर फ्रॉम दिस साइड, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड चेंज? ये हमारे पास 10 मिनट है, इसमें हमने ये बिल्ड करना है, आगे हमने चलना है, वरना टाइम बहुत कम दिया मैंने। जी हाथ खड़ा करें जी बेटा, जल्दी उनको दो। In this case, it will be the acceptance to modification. ठीक है, acceptance to modification. But the word change again, adoption. This is the result. What is change itself? अच्छा एक एक बोलेगा ताकि मैं एंजॉय कर सकूं।
Change from one place to, yeah, surrounding circumstances. Response to stimuli. Behavior modification. If, okay, very good. Sir, पीछे. From X stage to desired stage. Transition from one stage to another. Okay. All these are correct, but question is this. If I ठीक है, ये तो हो गया, ये तो सबको पता है। मैं सुबह ये कोट पहन के आया था और अब बास्केट पहन लेता हूँ। मेरा आप सवाल जरा सुनिए, आप प्लीज तवज्जो रखिए सर ना, प्लीज। Everyone should be attentive. I will use a word. Change is a cumbersome process. Cumbersome is a very hard, difficult, painful. Change is a painful process. So it means we need to classify this, the word change, because behavioral change communication, I will take 30 minutes to deliver the session, but this is the base. If we can understand these phenomena, it is very easy to understand the BCC. That change itself is a cumbersome process. If I can talk about the physical change, it means you can take the example of ice cube. This is the ice cube in a oval shape. And you want to change this ice cube in a rectangle state or in a vertical form. So what you will do? You will first do to melt this. It means it is a freeze stage. We want to defreeze that. And once it has been defreezed, then again I will use this water to that triangular or rectangular box and use that again freeze. So it is a process of freeze and defreeze. In a physical term, I said like this. Let's come to the. सर हमारे दीन में अखलाक का दर्स दिया जाता है. अब उस तरफ जरा रोशनी डालें ना. अभी अखलाक पर आऊंगा, अभी अखलाक पे ना ले जाए ना सर. This is very important. अखलाक पे भी आएंगे. अखलाक आएगा. I was talking about the freeze defreeze phenomena. For the physical situation, if you want to change one shape to another, this is the phenomena of freeze and defreeze. If I can apply to the human being, again, is a person can change? How that person can be changed? Who will be the driver within an individual or within a community who will contribute in change? Any answer? Lots of effort. It's always painful to change. It is painful. Okay. From one aspect to माइक another. इस्तेमाल कर रहे हैं. Mic use करें. Okay. Please. Yeah. Very good. उनको अगर आवाज सुनने, उन्होंने बड़ी पत्ते की बात बता दी. Please. Yes. Repeat it. He is of the opinion that we need a very strong influencer. We have a very strong influencer in our country. At community level, at family level, at political level, every level. But we are not ready to change. Why? Okay. Self-determination. Willingness to change. एक नहीं. So I fully endorse this. This is not one thing. This is a holistic and cohesive and multi-faceted phenomena of behavioral change communication. But let's come back to the change. The word change is a process, and process is a painful. And when I say the human, then I narrate another example, or that human mind is like a parachute. Human mind is like a parachute. It works when it is open. It works when it is open. The question is that who will open that parachute? How that parachute will be opened? How that process, that perceptional process which you were talking about in the early, that has been initiated in an individual or at the community level or at the interest group level or any target ideas of health. For example, you have the malaria control program.
you have a EPI immunization program, you have this COVID program, you have MNCH program, midwives program, and so and so. And because I engage in all these programs in terms of divining communication and mobilization part, so it is very clear that we need to understand the word change, and change is the only thing which we can basically say it will contribute in terms, and that is the perception first, how we can change the perception. For example, it is the perception that the public sector is not working. It is the perception. It is not the fact. The performance of the public sector against the given variable is, sir, beyond our those standards. If you can list down the variables which are the bottlenecks, the barriers for a public sector official, DHO, ADHO, or any BHU in charge, or THQ in charge, there are number of reasons. So all those factors, if you can calculate that, then we can't say the public sector is not performing. So this is the perception, and I would request someone to read this slide. I have a pressure of time, basically. I requested these people, this is not 30 minutes, 60 minutes session, but let's. कोई भी जिसकी आवाज मेरे अच्छी बुलंद हो आवाज. Please. So what is perception? The process by which people select, organize, interpret, retrieve, and respond to information. People process information inputs into responses involving feeling and action. Quality or accuracy of person's perception has a major impact on responses. Perception consciously and unconsciously involves searching for, obtaining, and processing information in the mind in an attempt to make sense of the world. It is now clear that perception, if we can document that perception of an individual, any individual has its own perception, how that perception developed and how that perception can be changed. It is the one person belonging to the rural community has a perception immunization is not good thing. How he attained that perception? Maybe some bad experience, and yes, wrong information. Very good. Any other? Childhood experience. Lack of knowledge or information. Very good. Social environment. So it means that there is a circle of influence. That circle of influence belongs to the family or the community, where some influencer can share that rumor, instinct one rumor about this vaccination, and everyone started, yes, it is not good. It has this problem. As like in COVID initially, there are Facebooks and all these media, digital media, they are proving about different things. It means the circle of influence at the individual level or at community level or at larger level that directly influence, and then the experiences, one experience or two experiences, that can be trickled down, and how that perception can change. सबसे बड़ा influencer social media. But if you remember in the COVID, when there was not there was a challenge of this turnout of vaccination and the vaccination center, then it was decided let's identify champions. Then they said let's identify celebrities, pick them and tell them to come for vaccination. First they will vaccinate it, and then everyone say, okay, the mullah has vaccinated, now we are vaccinated. This minister has vaccinated, it means vaccination. So this is the phenomenon. Role model is important for that, then that will shift the perception. If you can see this, and what is your perception now after looking this? Information transfer from
one mind to, this is the game of mind. Perception is the game of mind. You can change the personal perception of individuals or group when you are calculating their goals. How you interpret this? It shows one is 6 and other is 9. Both are true. Yes, it means that in a community, the people have their own angle of looking things and understanding the thing. This is the DCC, that how you can transit that translation, that angle, and they can reach to the common. Either this is 6 or either this is 9. So this is again the issue of perception. What is this? Hmm. Hmm. Yes. Then there will be a demand. Yes. That will be a genuine demand. For example, in family planning, your worker is going and he's supposed to provide those condom and everything or whatsoever the package is to its defined outreach. But there is no response or there is no demand, then he has the target. He sold those things in the market. And I carried out that in Punjab, there is a result-based management study for 10 districts, and they have been transformed because this was very clear that we need to be very open to the people. Yes. बिल्कुल होंगे, अभी मैं आ रहा हूँ, अब मुझे टाइम नहीं है इतना, मैं आपको बता दूं, फिर स्लाइड नहीं पढ़ेंगे उसकी वजह एसेंस यही नहीं, मैं तो बता दूंगा। जितने भी स्पीकर हूँ कि भाई 90% जो भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें 10% जो दीन हमारा कुरान कहते हैं, हदीस कहते हैं, उसकी नहीं, मैं उससे बेटर हमें लेसन किसी और से नहीं मिल सकता। मेरी अर्सों ने अगर आपके ऑर्गेनाइजर 2.5 घंटे दे दें मुझे यहाँ अभी, नहीं मुझे 2.5 घंटे दे दें, मैं बर्थ कंट्रोल्स में सब चीजें इस्लामिक मैंने उस पर वर्किंग की है, लेकिन आप बात कर लें जी प्लीज। ये है कि प्रेगनेंसी के लिए जो टाइम मुकर्रर किया है ना, अल्लाह पाक ने कहा है कि माएं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, दूध पिलाने के बाद 1 ईयर उनका रेस्ट है, और अगर आप चाहें मदर वीक है तो 1 ईयर उनकी हेल्थ का पीरियड है। आफ्टर 4 इयर्स आपका नेक्स्ट जो बेबी आएगा 5 इयर्स बाद आएगा। इसकी तालीम ही नहीं दी जाती, ये पढ़ाया नहीं जाता। इट इज नॉट इन योर सिलेबस। फारिग है, हमारी बेटों की शादियां हो जाती हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या? डॉक्टर बशीर। बशीर साहब प्लीज लेट्स आई विल रिस्पॉन्ड सिंपली। दिस इज द क्वेश्चन, हु विल टीच देम? And please, there are standards of levels of teaching and the level of engagement. One level is at the individual level, the other is at the community level, and other is at the national level. So it is very important that at every level, there must be inculcation of such information and knowledge in our curricula. In single national curriculum, they were doing these things and they entertained number of things. But question is this, I will debate these things. If organizer can identify time, I will come back and share with you. I will skip this, but only one thing, if you can see in the extreme left, what you are looking, 2 faces. What is in between 2? Again 2. What you interpret from this? What is your understanding basically? Faces, these are faces, but question is this, that what is your interpretation from this? That some colors are dominant and you immediately look to the dominant side. Okay, and if you will not look that dominant side, then shape will be, you understand, interpret shape will be different. It will be very difficult for you to persuade on white color to understand these are 2 faces.
You can say this is glass, but question is this is the human phenomena. The dominant can immediately pick. Now this is theory. If I can say, please read. Anyone? Yes. Yellow के बाद orange. Now you also read. That was green. You see, this is the phenomena that your human mind is progressive, working in a dimensions, in 2 dimensions, right and left. So our focus is we are saying to please read them with color, not with word. Green है, yellow So है. this is the psyche which we understand that when we are working with the people, they have also their mind. They have the same machine which we have. And when we are giving that message, this is the total process of all our mobilization and communication process. If you can see, what you understand from this? Red is identical. If you can cover to frame this whole space, that is identical against other colors. Why red is identical? It is the dominant and is related to the influence of the background. Okay. Now whole process of disseminating information, knowledge, or reaching to theory of change for behavioral change, the main character is the influencer. Who is influencing? There are factors which we have already discussed. These are factors are directly or indirectly influencing the society or an individual, either for proactive or we call that reactive approach. In our country, this is our common consensus that in number of events or number of areas, our approach is more reactive rather than be proactive. Reactive means this happened, then everyone is start doing XYZ. We are waiting for incident and then we are, this is reactive approach. This is not proactive approach. And proactive approach is where we can absorb those things, and the society and the individual who are proactive, if you can analyze that from different literature, you will see that those people who have a strong research background, who have a strong evidence research base, they are more proactive rather than to reactive, because they have the base. They analyze the things and then they plan accordingly. And the society or the individuals or the groups or the community who are lacking this side of analysis, evidence-based research work, all those things, they are reactive. Once it happens, they will start. To counter that perception, because this is the first bottleneck of is perception. We want to address that perception to 3 stages are there. One is situation, other is target group, and third is perceivers. For example, in health department, you have a challenge of this immunization, vaccination. You will see the situation, work setting and social setting of that particular area, you will define accordingly. Then your target size, intensity, background, proximity, and motions. And then the perceivers, their attitude, their motives, their interest, their experience, and their expectations. That must be matched. If you design like this, if that can match, you can go through and there will be change process instigated in that particular region or area, and the people can start working. I will skip also this. This is very easy. That communication functions are in the external environment. Communication functions are these: advocacy. You are doing media relationing. You are developing partnerships and all those things. But communication for development,
goes beyond providing information. These are the three things. That is, raise awareness, building knowledge, and change attitude, expectations, and practices. Now that change I have discussed, this is at the level, it will be different for everyone. It has a process, a change of state, a change in the way you do something, like vision, plan, everything. Physical, it has emotional transition, that is also change. Preferences, previous experiences, which you were talking, and influence by size. These are the areas through which we can change. Now, this is the core definition or the work. What is behavioral change communication? Because time is limited, I will not go in detail discussion. Behavior change communication is an interactive process for developing messages and approaches using a mix of communication channels in order to encourage and sustain positive and appropriate behavior. For example, hand wash, it is related to the health and hygiene. And you have the study that in the region, in the outreach, 70% population is ignorant for this practice of hand washing. Or more than 70%. They are not, they don't know it is important to hand wash. Now you need to identify the target audience at all level within that particular proximity to evaluate their habits and their attitudes towards hand washing, and there are also health indicators related to health and hygiene. On the basis of that indicators, you can determine the whole frame that how we can develop their messages. The message for a woman will be different, message for child, and message from youth or teenage will be different from a message for an elder, old man for that area. Because every message has its own contents and depth in terms of that particular target audience or target group, where you can work to engage with them. Second part is when we are talking about the behavior communication, that is the stakeholder engagement. Stakeholder engagement means that the influencer, the political worker of that society, departments, education department, all those associated departments that must also be engaged in different planning and implementation processes. BCC is an interactive process with communities as integrated with an overall program to develop tailored messages and approaches using a variety of communication channels. Second is develop positive behaviors, promote and sustain individual, community, and societal behavior change, maintain appropriate behaviors. Why we required BCC? Because before BCC, our core approach was IEC, information, education, communication. We were developing IEC material and we were disseminating IEC material. The IEC material was basically to provide basic information to the people, but that was not as comprehensive and as cohesive in terms of engagement. So there is need to engage with the community, engage with all those stakeholders which are influencing positively or negatively to that particular issue, health issue. So it will provide you to increasing the area of interaction. Second, study revealed that traditional IEC method has stopped giving information and creating awareness, but BCC is characterized by its direct approach towards changing behavior. It is basically more action oriented. BCC is more action oriented. Now, if very simply we can say, it is important to carefully define the precise behavior and actions you are wanting to influence. For example, if you are programming for family planning, you must know that what we really precisely wants to change, which actions and behaviors in family planning, which actions and behavior in smoking. For example, in smoking, someone asked me that there is a gold leaf and there is some photograph of cancer patient like this, but everyone is smoking, including myself. Why? Then I said that this is very important to understand that
there are two things. One is that how we can transit and transform the attitudes. The attitude of myself of 58 years old, having 20 years smoking habit is too difficult. It can be reduced, but the philosophy of BCC and the change processes that we can focus on the teenage groups, so that who are basically at the risk and they are now indulging towards the smoking habit. You can engage them in extensively. Within next 10 years, you will see that there will be lesser number of smokers in our society. नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने मेरी बात नहीं सुनी, सॉरी। मैंने कहा कि नहीं, आपने नहीं सुनी, मैं ये नहीं कह रहा। ये स्टॉपिंग स्मोकिंग, नॉट स्टार्टिंग अप आफ्टर क्विटिंग। माय क्वेश्चन इज, जी सर, मालूम होने के बावजूद इसी से रिलेटेड, आदमी को पता है कि इसके स्मोकिंग के ये सारे इतने बैड इफेक्ट्स, इसके बावजूद तो इन्फॉर्मेशन तो हमने दे दी। हम पहले बात कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन, इसको इन्फॉर्मेशन है, खुद डॉक्टर है, पल्मोनोलॉजी का डॉक्टर है, और वही सिगरेट पीता है और ये नहीं छोड़ रहा। सो व्हाट इज दिस, व्हाई नॉट दिस? मैंने अर्ज किया ना कि ये बेसिकली आपका सोसाइटियल एटीट्यूड है ना, ओवरऑल इन्फ्लुएंसर है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मिसाल के तौर पर मैं कभी दोबारा में 2 डब्बी सिगरेट पीता था, आज 4 सिगरेट पीता हूँ, वो भी सुबह दोपहर शाम वाले, क्योंकि मैं तबलीगी जमात के साथ चला गया 40 दिन के लिए। जब 40 दिन सिगरेट ही नहीं पिया, तो सी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना, ये क्रिटिकल मास क्रिएट करता है। ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइम कम है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो हमारा डिलेमा है ना, हमारी सारी मोबिलाइजेशन का और कम्युनिकेशन कैंपेन्स का, उसमें यह है कि वी आर ईदर रीच टू द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस and stop there. Why we are stop there? We want to be shortcut and say okay, everything is fine. No, circle of influence transit into a critical mass, where that particular circle of influence of a society, for example, we said students, they have their own circle of influence. Ulama have their own circle of influence. General community has its own circle of influence. Women has its own circle of influence. Number of where they sit together. So engaging the circle of influence and then creating a critical mass, which is basically directly influence the whole process. And we did this experiment in Khyber Pakhtunkhwa, in Sawabi and Mardan, Nowshera district, in gender-based violence. We borrow this program of SASA from Uganda. We alter that program of BCC here, transit that with the local context and local culture and all those things, and then we have practice and operationalize 4 years. And after 4 years, you can see those villages. There is a totally different attitude of those Pathan and those communities, including their ulama and all those things. So this is basically that how we can identify the target. What should be our, if we have very clear that we want to target this group, then there will be a different strategy for that. We are taking one strategy and apply it to everyone. That is not. This is the concluding slide in terms. There are number of slides I will go through, but I hope they will provide them everything. And I will also read the technical note completed day after tomorrow. I will share with you. You can share with them. That will be purely practical experiences of what I experienced in my last 30 years in this country. That this BCC and communication, all this. If you can see this one, framework of BCC, this beneficiary behavior change communication. First is stages in behavior change. This is a society totally unaware of COVID. So first stage will be transform from them from that status of unaware to aware. Once they have been aware, they start dialogue, they start discourse, they start discussion. That will be positive or negative. Our general social mobilizer, general practitioners always come to me in field. X person is negative. You are negative. What happened? Oh, he's opposing that. I said, this is positive. You don't understand this. Parachute is open. Now we want to do this empty glass. Then they will receive new things. Otherwise, never. So we are not allowing people, the groups, the individuals, the community
when they enter in this process of awareness, they have number of questions, they have number of queries, they have number of opinions. So we need to give them that space. They can transit that to awareness, and then they, once they will be in the discussion, they start concern for that. And that concern is calculated on the basis of their household subsistence, their local economy impact, economic impact of that particular issue, and number of things. For example, in COVID, we designed this, we reached to the trade union, we reached to the masajid, we reached to this. That was, every message was different from trade union message was different from the message who have been delivered in masjid, which have been delivered in school, that was different. This was delivered in the general public, that was different. And that was created on the basis of this thing, that once we have entered in this dialogue, they can realize what is the intensity and what is the level of threat. If it occurs, it happens to myself, where I stand, where my family stands. So like this. So this is the, and that is then create the knowledgeable base in that society that started motivated to change. That is the catalyst in that particular area who will instinct that thing, and modifying behavior, practicing sustained behavior change. Then gradually that starts. So I am of the opinion that if you can read number of BCC studies in the South Asia region, Pakistan, and you will see this, there is a very significant trends of change in different areas of health issues, particularly pandemic issues related to immunization, related to COVID, related to TB, related to malaria control, and so and so. So you will see how that can be created a giant statement, giant बयानिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, मैं बयानिया आजकल क्यों बहुत बोलते हैं, मैं इससे बोलता नहीं. तो giant narrative develop करना पड़ता. If you will fail to develop a giant narrative, you never reach to the goal. As you said, giant narrative is that we are a Muslim society, we have this background, so we must inculcate and define all those things, engage that thing and determine like this so that we can do that. And enabling factors are very important for that BCC programming. First is providing effective communication. This is whole subject again. Sir, aapko maine kaha bhi tha na. It is whole subject, effective communication, providing effective communication. Then creating an enabling environment by the policies, community values, and human rights. Enabling environment is desired, and then providing user-friendly, accessible services and commodities. If we can generate demand, but supply side has some problems, that will be backlash. वो वापस आएगा, that will be backlash to you, and you will not then manage it. And the channels can be, topmost channel is social media or digital media. Then up mass media, community networks, traditional media, interpersonal group. The last example I will quote and conclude this here. In one project of Economic Affairs Division and Nadra, this was for TDPs in Khyber Pakhtunkhwa, in the newly merged district. At that time, they called that FATA and agency. So we were working with the 5 agencies, and they had the one-stop shop where they had the 2 streams of intervention. One was about the rehabilitation of their livelihood support, and the second one was there about the immunization and the MNCH support through child wellness grant. We started and designing in the initial state, and after 1.5 years, it was found that our insertions, our messages, our newspapers, our radio messages, and all these things, and our mobilization team, they are not fully coherent with the compatible with the local context. The reason was there was not a media habit survey of that region. That what is the media habit of that particular region. So then we have conducted that media habit region and totally transit and transform that whole BCC programming, public information campaigning and beneficiary mobilization. And the result was 26% immunization reached up to 79% within 2 years.
So this is the basic thing that we need to, how we can select medium, what should be our message. We should be very clear about the intended message, our audience, who is our audience, what should be his and her message, that should be very important. So this is three key components, if we can say, is like this. This is the example of UNICEF, and if you can see in this picture, they are presenting like this, that message is their hand wash. In COVID, we were saying 22 seconds. Sir, kitna keh rahe the? 22 seconds? 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. That was very interesting. I have 1 second. So in this hand wash, if you see, this is very important message that yes, I am doing hand wash, but still the area which is missing is a gray color. So developing, designing messages is very important, that how that can communicate to that particular audience. These are the slides which I will not go through, but it will be very helpful for those people who are interested basically in this. BCC aims. This is the three things. BCC, this whole behavior change communication, is aimed to increasing knowledge, improving attitudes, and improving norms. And if you can, this is understandable. With the essential attitudes, unko aapne determine karna. You want to identify first, and then engage with those target groups for that particular purpose. And these are the three levels which I already shared. I will not go with this individual level, how we can engage with the individual level, how we will engage with community level, and how we will engage with national level. And this is the strategic guiding principle. If you want to do that, what should be your research evidence, how you will proceed step to step. You can read. This is self-explanatory and give you the determination how to develop message. In your own personal life, if you want to communicate some group, personal work, this message should be communicated with this group that they can engage in this Kare Khair, for example. How you can draft and how you can determine this thing. So this is key steps. And the last, this is important to success factors for effective communication is number one, identification of the barriers for behavior change. When you really understand the bottlenecks, when you really understand the barriers, then you will be in position to determine the solution, define the solution. And the solution must be compatible to the local context, local culture, local values, local norms, and all those things should be inculcated in that. Accurate target audience definition. It is very important for any health program that they can determine and define the target audience within one program. Let's EPI is one program. You have a target audience. One is the influencer of the local areas who are against the vaccination. That is one target audience. Second is your facilitator enabler. That is the society at large and the groups like religious scholars, political workers, political activists. You can engage them and they will counter that thing and disseminate. Third is that activists at the grassroots level and your own health workers and all those people. So it is very important to define every target audience and then develop strategy accordingly for that purpose. Relevant content should be, this is success. Viral effect must be there and enabling environment should be there. Thank you very much. मुझ पे बड़ा उन्होंने प्रेशर रखा. ये आखिरी स्लाइड है, वैसे ही पढ़ना है. Thank you very much, Sir, क्वेश्चन जो है वो एक सेकंड सुन ले, क्वेश्चन लेते हैं आप. लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारे पास आपका चाय का टाइम जो है वो कम हो जाएगा अगर क्वेश्चन लिए. तो अब वापस आ रहे हैं 11:50 पे. वहाँ पूछते है, मेरा एक फीडबैक है, मैं चाहूंगा चाय पीने चले. आप बुनियादी तौर पर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी सर आपकी, लेकिन आपने ये ट्रेनिंग कोर्स है ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसपे कि पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, पेशेंट स्टाफ रिलेशनशिप और डॉक्टर स्टाफ रिलेशनशिप पे फोकस किया जाना था, जबकि यहाँ पर आपने देखा कि इस चीज को बिल्कुल टच नहीं किया गया. सो वी आर ब्लैंक इन रिलेशन टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट देयर.
इसका जवाब मैं दे दूं? I wish कि नहीं, next नहीं। time जब आप ऐसी कोई प्रेजेंटेशन दें तो टॉपिक पे फोकस किया जाए। ये एक जनरल प्रेजेंटेशन थी जो किसी भी फोरम पे दी जाएगी बिहेवियर के टॉपिक पर। मेरा ख्याल है कि आपने दुरुस्त फरमाया। अब मुझे इजाजत दें क्योंकि सब ऑडियंस को क्लैरिटी देनी जरूरी है। देयर इज नो स्पेसिफिक साइंस फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेशनिंग। नंबर 1 मेरी सुन लेना, आप मेरी रिक्वेस्ट सुन लें सर, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें पहले। आपने सवाल किया, आप बोलने का मौका दें। You need to understand the phenomena of behavioral change process. Okay, you need to understand the ethics of communication. You need to understand the how you can build the relation and constituencies. All those things have been discussed here. Now the example is, for example, if you can say in the hospital, there is a hospital and there is a hospital management, and they must have a attitude. What type of attitude they must have? Okay, how they will be more receptive, how they can be more responsive, what should be the SOPs or standard operating procedure to engage with yes. So this is the standards, so international standards. लेकिन उसके बावजूद मैं वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यार वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है ना, आप बीसीसी का टॉपिक दिया था ना, मुझे कहते हैं कि कम्युनिटी आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी है, ह्यूमन मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। सुने ना, आईएचएस के लिए मैंने की है ना, नीचे तो आए ना, नीचे है आईएच, नहीं आईएचएस के लिए मैंने पूरा है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. I hope you will be fresh now. Ladies and gentlemen, the next sessions about the principle of hospital planning and designs. The lecture delivered by Major General Muhammad Salahuddin Qasim, retired, Halal Imtiaz military. A little bit, I gave a little bit introductions. It has a huge, he has a huge profiles. जैसे कल भी मैंने कहा था कि there are few generals in medical course. He is among them. Major General retired Salahuddin Qasim, presently member policy board MTI KP and a chairman board of governors MTI Swabi. Ladies and gentlemen, now I would like to request Major General Salahuddin to come on stage and deliver lectures. Thank you very much. स्लाइड चेंज है ये सिर्फ आपने ये भी करना है, इससे भी हो जाएगा ना। Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dr. Tariq, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and thank you very much for the gracious words about me. I hope that it's visual to you. You can see that. ये लाइटें ऑफ करते हैं ऊपर। So our topic today would be hospital planning and design. Basically, I'm not going to tell you how to build a hospital. I'm not a planner, building planner, neither am I an architect. I'm a doctor, but I have been user of this facility for the last 37 years or so. And by virtue of being in Army Medical Corps, I had the experience of working in various hospitals and transforming one of the hospital into a very
into Center of Excellence, that CMH Rawalpindi, which is presently 1200 bedded hospital. And similarly, there were other hospitals in which I worked. So that's how I gained my experience and knowledge, by working in those hospitals. And then after retirement, I worked in Fauji Foundation as commandant of Fauji Foundation Hospital Rawalpindi, which is again a teaching hospital, 830 beds. And with that, I was looking after, as an advisor to the MD on health, so I was looking after the other hospitals as well. And later on, I joined MTI board of Khyber Teaching Hospital and Medical College. So by virtue of my experience and my passion for improving health services in Pakistan, so I sort of became a focal person for hospital design and building in various organizations. Hospital management, unfortunately, in Pakistan has been practiced for a very long time, but it has never been a subject properly taught or practiced. And I'm glad that Health Services Academy has taken the lead and they have introduced it as a subject. And I'm sure that with so much interest in it, things would improve. So that's a preamble of hospital management. And then we'll be talking about hospital planning and design. D. Angelo is a senior hospital technology planner in G Healthcare America. So he worked in Africa and Southeast Asia. And this is what he says, that most of the hospitals which we plan and design and which we build are not built and designed to cater for efficiency and improvement of staff working. They are not catering for patient safety, for workflow, and for control of infections. So the whole idea is that we should be talking about those hospitals and how we are going to build them and plan them. What constitutes a hospital? Just a century ago, the hospitals were just inpatient department run by the nurses. Doctors would actually come as a visiting faculty, and that's why most of the places we still call them as visiting professors. Because in England, Harley Street, the doctors would practice there, and then they would go to the hospitals which were being administered by the nurses, and then they would see the patients and fall back to their clinics. So this is how the tradition of involvement of doctors with the hospital started. And eventually they realized that instead of bringing them from the clinics, why not house them in the hospital? So then they had their clinics there. So the OPD started there. So hospital was initially of inpatient wards and OPD. And then, of course, with the development in laboratories and radiology, so by 1900 or 20th century, the hospital started having labs and radiology as well. So the hospitals are evolving over the last few centuries. And the present hospitals, what we have now is outpatient, inpatient, clinical laboratories, imaging, operating rooms, hospital function, hospitality functions such as food services, housekeeping, and administration, etc. Can we have this bar removed? I don't know if anybody, or this can't be removed. Okay, Ji, so this can't be removed, I'm sorry. Distribution of floor space. There is no hard and fast rule. As I was telling you that if you would have seen the hospitals of yesteryears, there would be only inpatient blocks. So 100% covered area would be, floor space would be of the wards. And gradually now various departments, specialties, services are coming into the hospital.
So now what happens that if you are going to plan a hospital, you should have a fair idea that what kind of floor space would you require. So this is for that for inpatients or for the wards. Inpatient is wards, ICUs, HDUs, all those places which have got beds where you admit a patient or you retain a patient. So that would constitute 37 to 45% of the space. Then OPD, depending on it, if it's a public sector hospital, probably you would require a larger OPD. And if it's going to be a private hospital, their OPD is different because it's purely consultations. So their OPD would be more sort of efficient with a limited space. So you might want to have between 8 to 12% of area as your OPD. Then diagnostic and therapeutics. I remember that once we started our medical school days in 1976, we used to have very smaller diagnostic places. Generally, the diagnostics would be ward side. But now look at it, with MRI, with CT scans, with ultrasounds, you require huge spaces for diagnostics. So diagnostics are again expanding. So you might require 18 to 22% of the area of the hospital for diagnostics. Then administration, and administration is not that you have got an MS now. Administration is a full-fledged specialty with so many things. You've got your procurement system, you've got everything which runs the hospital. Then of course there are support services. So you have to cater for all these services when you are planning a hospital. So what makes hospital building different than other buildings? वो भी तो इसी तरह का brick and mortar की बनी हुई है ना? They're not different. इसी तरह की brick and mortar की और air conditioning की हमारे hospitals भी बने हुए हैं. So what's the difference between them? It's the integration of services and facilities, infection control measures, flow of patient and staff, privacy and dignity of the patients कि जहाँ पर उसको comfort मिले. स्टाफ का ईज हो, ये ना हो कि जनाब आप स्टाफ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसको लेके जा रहे हैं और उसको मुख्तलिफ कामों के लिए. सो देयर शुड बी ईज फॉर द स्टाफ एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट. Therapeutic environment is that environment in which the patient should feel comfortable और उसको ख्याल आए कि मैं ठीक हो जाऊंगा यहाँ पर आकर और ज्यादा बीमार नहीं होऊंगा. And when to do this planning? इसमें जरा देखिएगा, इस पे ये बहुत सारे वो आ रहे हैं, ये जो बार है वो कहीं ना कहीं पर ठीक है, वो अगर कहीं पर हम उसको हटा सकें. जी pardon me, ये अगर मैं स्टॉप शेयर कर लूं, ये ना हो कि मैं उसको ही देख रहा था. अच्छा स्टॉप शेयर हो गया तो बस फिर तो बात खत्म हो गई. मैडम इससे एक बात पता चली कि हर किसी की बात नहीं माननी चाहिए, और दूसरी बात ये पता चली कि एडवाइस जो है ना उसको देनी चाहिए व्हेन यू नो व्हाट यू आर सेइंग. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन लर्न्ड है जब आप हॉस्पिटल डिजाइन करेंगे. सो काइंडली कीप इट इन माइंड दैट इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट you are going to damage the system, honestly. So when to do this planning, ये कब होगा? To build a new hospital. आपके पहले जमाने में there would be very few chances, but what's happening now that hospitals have become part of our life. अब हर जगह पे नए हॉस्पिटल बन रहे होते हैं. जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं आप उनको एक्सपैंड कर रहे होते हैं, आप उनको रेनोवेट कर रहे होते हैं, रिवैम्प कर रहे होते हैं. जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं आप उनको बड़ा कर रहे होते हैं बिकॉज यू वांट टू मेक देम टीचिंग हॉस्पिटल्स. सो यू विल गेट दिस चांस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ हॉस्पिटल बिल्डिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट विद यू. ये वो स्लाइड है कि जहां पर आप एक्चुअली सोचेंगे कि डू वी रिक्वायर अ न्यू हॉस्पिटल और डू वी वांट टू हैव अ न्यू फैसिलिटी बिल्ट. Do we want to expand our hospital to a teaching hospital? So uske liye what you do is you do situation analysis. I would presume that you have done your situation analysis very well and you have come to the conclusion that there has to be a new hospital or the hospital has to be expanded. So it's a complex phenomena and it should be undertaken by professionals in the field.
And mind you, you are also one of the professional because you are a healthcare manager or you are a consultant. So you have your user input. So that's very important to understand. So three major components of the hospital planning, which are parallel activities. You understand these terminologies, what are parallel and what are series. So serial activities are those activities that once one activity finishes, the other activity starts. So please, in Pakistan, 90% of our public sector buildings are considered as serial activity. Do not do that. These are parallel activities, especially while building a hospital, because with building you have to have manpower. तो इस तरह ना करें कि your hospital has been built and you do not have manpower, or the manpower has been acquired but you do not have equipment. Because try to understand that larger equipment would take 2 to 3 years to reach and to be installed in those buildings. So all these activities would be sort of parallel: building, manpower, and equipment. Most healthcare managers, you know, that they are involved in building a hospital very rarely, once in a lifetime maybe. So you have to get ready for that. Whenever you get that chance, you will have to be ready for that. It's important for the hospital manager to know how all the pieces fit together and how they fit into a larger picture. So this is the important slide which you have to understand. So hospital planning core activities, what are those? Number one is that you have to form a project committee. It all depends it depends on your organization, whether you want to call it a project team, you want to call it a project committee, or you want to call it a project management board, whatever you call it. But you have to have a designated project committee. And that project committee should have access to all the information and knowledge. And it should be preferably managed by a person who has complete knowledge, or at least much of the knowledge of building or planning a hospital, or who has worked in that. And this committee would select the consultant for the hospital. ये जो hospital है ना, ये बहुत complex system है. Peter Drucker कहता है कि hospitals are the most complex organizations of the modern world. आपको जब मैं थोड़े उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल जो है ना इस ऑडिटोरियम की तरह नहीं है. This auditorium would be part of a hospital and not a very important part of that hospital, because there are more important places than that hospital that would take your attention. So you have to select those consultants which know their job. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. Then there has to be a text of requirements. What is text of requirements? Text of requirements ये है कि आप consultant को जब hire करते हैं, so you should be able to tell him that what do we want. The consultant needs to understand. It's just like building your house. You have a fair idea के how many bedrooms do I want, what size of the bedroom should be there, how the kitchen should be, where the kitchen should be placed. आप imagine करें कि you are living on the ground floor, why would you like to have your kitchen on the first floor? कितना मुश्किल होगा. और हमारे हॉस्पिटल्स एग्जैक्टली इसी तरीके से डिजाइन होते हैं, इसीलिए कि उसको डिजाइन करने वाला कोई ना उसके पास इंफॉर्मेशन होती है और ना वो कोई कंसल्टेंट हायर करता है. सो आप इमेजिन करें कि अगर आप अच्छा आर्किटेक्ट हायर नहीं करेंगे तो आपके घर के साथ क्या सलूक हो सकता है. So selection of consultant is important. Text of requirement is those items, exactly what you require in your hospital, the type of hospital you want to have, उसमें क्या कुछ रहना चाहते हैं. उसके बाद उसकी मास्टर प्लानिंग होती है कि हाँ जी कौन से पीसेस कहाँ किस तरीके से फिट होंगे. Once you approve the master planning, then you have got building designs. फिर उसके बाद आपके building design बनना individual buildings के बनना शुरू हो जाते हैं. और जब वो बिल्डिंग डिजाइन बनना शुरू हो जाते हैं, सो देन यू हैव गॉट इन हाउस डिस्कशंस ऑन दोस प्लान्स. फिर उसके बाद आप बैठते हैं. नेचुरली जब ऑपरेशन थिएटर का डिजाइन बनेगा तो एनेस्थेटिस्ट वुड बी देयर. जब आईसीयू का डिजाइन बनेगा सो आपने आईसीयू के ऑलरेडी उसकी इनपुट ली होगी. सो देन दे विल वैलिडेट इट कि हाँ ये डिजाइन ठीक है कि ठीक नहीं है. वार्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं,
ये जब सब कुछ हो जाएगा तो then you would like to build that hospital. So उसके लिए आपको selection of a contractor करना होगा. मुझे कोई शक नहीं है कि जब आप अपना घर बनाते हैं तो आप उसके लिए 10 लोगों से पूछते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर सबसे अच्छा है. आप इंफॉर्मेशन लेते हैं लोगों से. तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि जब आप पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल बना रहे होते हैं जो कई अरब का होता है, यू डू नॉट आस्क एनीबडी एंड यू आस्क C&W के जनाब ये मुझे लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर पे दे दे. दिस इज व्हाट वी डू, इजंट इट? सो आप एक कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है जिसने कभी हॉस्पिटल नहीं बनाया होता, उसने सिर्फ बिल्डिंग्स बनाई होती हैं. So this in more, can you see that all those are in white? So they are being highlighted that they're extremely important steps. Then of course, when you start building your hospital, then you monitor it, refining building plans, agar usme kuch galtiyan ho rahi hain, and then you start planning for your equipment. So we'll be discussing some important consideration of whatever we discussed. They do not exist in vacuum, these hospitals. They influence and are influenced by the manifold demographic, epidemiological, economic, and socio-cultural settings within which they operate. The location is very important. You know about it, that what accessibility is, how connectivity is. I'm not going to discuss all those things with you. It's very important that you have to have water and electricity, but gas is sometimes not available. We'll discuss that. How gas is important. Gas means sui gas. And then sewerage system. This is a very sore point. It's an extremely sore point. Probably you are not aware that most of our hospitals do not have their own sewage plant. And they are discarding all their biological and biochemical and other infectious, hazardous liquid waste direct into the municipal waste. So we'll be discussing that as well. Scalability. Your hospital should be functioning for another 30 to 50 years. और आपको पता है कि after every few years requirement do change and new things are inducted. So the hospital which you design should be able to expand. So you should keep that option with you. Facilities for the staff, not in the hospital, but you have to have in the vicinity, in the area, school, colleges, banks, gyms, recreational and social places, and transport facilities. Otherwise, you will not be able to induct the staff for the hospital. Then availability of hospital manpower. Will you be able to get all those people? ये बड़ा important है. हम hospitals तो बना लेते हैं. The other day, I was invited to see a hospital. मैं उसके ऊपर मैं comment करूँ. It's a teaching hospital, 500 bed, PMC approved, and there is no कोई joke नहीं है इसमें. So I asked them, how many nurses do you have? They said 25. I said, please, आप अपने अस्पताल को 15 बेड से ज्यादा मत रहने दें. आप इस तरह के अस्पताल क्यों बनाते हैं जब आपके पास nurses नहीं हैं? Do you have an idea that how many nurses do we have in Pakistan? अगर आप PNC के पास जाएंगे तो आपके पास you have got 106,000 nurses for 22 crore population. यानी you have got extreme shortage of nurses. मुझे कभी कभी हैरत होती है कि आपको पता नहीं है कि आपके पास nurses नहीं है, so why you are making hospitals? And if you know that you have got shortage of nurses, why you are not actually fighting it on a war footing and ensuring that every private medical college, unless and until it has got the same number of nurses, you will not give them license to start a medical college. And out of 106,000, 1,06,000 nurses में जो आपकी functional nurses हैं, those who work in Pakistan are not more than 92 or 93,000 nurses, because बाकी किसी की शादी हो चुकी है, कोई someone is on administrative duties and some have gone out of Pakistan. So can you imagine that with 93,000 nurses you can have a hospitals in Pakistan? So this is very important. You see, health system has to work in totality. Health system doesn't work in bits and pieces. And we are very fond of working in bits and pieces, and that's the reason that what kind of health system we have in Pakistan. I'm sorry, but this is important that you have to understand these things.
User requirement, we have already discussed who are the users. So these are the users. It includes the community as well, the patients. So of course, when you do not have a hospital, you will not have patients. So the community is your prospective patients. So you will be talking to them. And one thing which is very important, that you do not have to reinvent the wheel. You know it very well. आपको जिस तरह पता होता है कि मैंने किस घर का डिजाइन पसंद आ गया है और आप आर्किटेक्ट को कहते हैं कि मुझे इस तरह का घर डिजाइन करके दें. So you should be able to understand the kind of hospital I want. How many hospitals of this kind are available in the city or in the area? Benchmarking करें, उसको देखें. Get some ideas from them. We have already discussed about selection of consultant for master planning. So these consultants जो होते हैं, he's not a person, it's a team. And the team has got town planner, architects, engineering services, civil, mechanical, electrical, structure, and of course other complementary services. So consultant वो आदमी होता है या वो team होती है जिसके पास ये सब कुछ available होगा. And if he doesn't have access to these facilities, please do not hire him. Important is जो मैं आपको बता रहा था कि आप पहले से मास्टर प्लानिंग करते हैं, पहले से आप बिल्डिंग डिजाइन बनाते हैं. So solve the problems with pen and ink instead of sledgehammers के बना करके फिर तोड़ रहे होते हैं. So it's important to remember that you will pay for a mistake 3 times, one to build it, one to tear it down, and again to rebuild it, which is so common in Pakistan. So both the process of selection, consultant and contractor should be open and transparent, and consideration must be given to the past experience. देखिए, हमने जितने भी रूल्स बनाए हैं ना, इसके बड़े रीजंस हैं. अनफॉर्चुनेटली चूंकि we always try to bypass और circumvent करते हैं. So अभी भी जो है वो कैपरा हो गया या पेपरा हो गया या बाकी नैब हो गई या वो हो गई, ये सारे के सारे बेसिकली किस लिए हैं कि to have an open and transparent and level playing field. लेकिन उसका फायदा जो है ना वो लोग उठाते हैं जो कि अक्लमंद होते हैं, तगड़े होते हैं और sort of sharp होते हैं. So they always find a way to sneak in और वापस जिस चीज को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके साथ वो आ जाते हैं. So आपने इंश्योर करना है कि आप उन्हीं लोगों को लें जिनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा हो, जिनने काम किया हो, और आप अपने रूल्स के मुताबिक उनको आप टेक्निकली प्री क्वालिफाई करें और फिर उनके दरमियान आप बेशक लोवेस्ट स्टैंडर्ड या लोवेस्ट बिडिंग करें. फाइनेंसिंग की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो दैट फाइनेंसिंग अरेंज होंगे तो तभी आप हॉस्पिटल बनाएंगे. अदरवाइज आप इसको आपने कहीं पर वो ब्रेकर लगा करके तो वो छोटा सा वो चंदे का बॉक्स रखना नहीं है ना. So we'll not be talking about it, and I'm sure कि मैं देख रहा था प्रोग्राम्स में कि आपकी फाइनेंसिंग वगैरह का काफी डिटेल में हो चुका है. यूजर रिक्वायरमेंट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. इसमें जो वन वर्ड ऑफ एडवाइस और कॉशन इज कि यूजर रिक्वायरमेंट जो है ना इट शुड बी इन राइटिंग, क्योंकि आप ये कंसल्टेंट भी जो है ना बाद में इनकार कर देंगे कि नहीं हमने तो नहीं कहा था. बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं. सो इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड, ताकि आप जब और यूजर रिक्वायरमेंट जो है वो आपके ऊपर कोई वो नहीं है, बाइंडिंग नहीं है. यूजर रिक्वायरमेंट आपने इंश्योर करना है कि वो जो है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उससे डेविएट नहीं कर रहे हो या स्टैंडर्ड के करीब तरीन हो. सो ये आपको बताना है कि व्हाट स्टैंडर्ड्स वुड वी हैव इंशाल्लाह. जनरल लेआउट है अबाउट द हॉस्पिटल बिल्डिंग. मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हॉस्पिटल बिल्डिंग्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. Every place and every country has got their own designs. There was a time in Rawalpindi that you could not have a building because the military engineering services had no experience of building a block of more than 6 story. So आप क्या करते थे? Then you used to have lot of space. और उस जमाने में नाइटिंगेल डिजाइन बहुत पॉपुलर था. So you used to have single story buildings with lot of space around, with verandas and open spaces. So yes, you could afford that, but now there is no, you can't find piece of land that big. So what's happening that you are going for single vertical structure, and it's a very popular design in West and other countries which they can afford, and they've got technical superiority as well.
So developed nations, they are always going for single vertical structure. They are basically urban areas. वहां पर आपके पास स्पेस की कमी होती है. They are cost effective in the long run. They are good for integrated services because everything is under one roof. When we talk of one roof, that's so important that the patient does not have to go from point A to point Z. Then various blocks connected to each other. This is also very good design. I mean, you have got different structures. For example, you have got an inpatient ward, you have got an emergency ward, emergency, and you've got a outpatient ward, and they are sort of connected with each other through bridges or through pathways or through covered areas. And it's good for scalability as well. That if you want to expand, you can have another ward, a block adjacent to that. And it has got access to natural elements. Then spread over structures. Most public sector hospitals are like that. And there is little connectivity but abundance of open spaces with natural elements. So it all depends. Just to give you an idea of a single structure, Shifa International is one of that. Shifa International is a huge, big structure, although it's not very, but it has got a huge footprint, but it's one structure sort of. Of course, it has got some auxiliary structures, but the main hospital is one building. Similarly, Qaeda International is one building. You have seen it, it's one structure. You go there and you are inside the hospital. Every facility is under one roof. This is CMH Rawalpindi, it's in the making. Now it has got multiple blocks, but they're all connected to each other, either through bridges or through covered pathways. For the simple reason that it could have gone to 28 stories, it could have had a larger footprint, but the problem is of aviation and other things. So you could not have a building taller than 8-story there. So then they had to resort to various blocks. This is, one of our key hospital in the country is Al Khan. So you could have any kind of hospital, depends on so many things. In fact, you can have a hospital of this kind also, one single structure. So it all depends. What is more important is this slide. And this slide is so important, it would give you actually the model of care, the linkages and flow of patient and staff. The color does not signify anything else except that the red is the critical areas. So it tells you connectivity, that if you are going to have a hospital, what department is connected to which one, and how many departments are dependent on a particular department. So this connectivity is very important when you are designing your hospital. So just to give you an idea, that for example, OPD, they can 95% of your hospital patients, जो आपका इनफ्लो है, वो तो ओपीडी में आता है. और वो जो ओपीडी में आता है, आपको पता चलना चाहिए, you should know that what are the processes which take place in the OPD. So that's registration, consultation, and consultation का जो end product है वो क्या होगा, और मिडिल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उसको डायग्नोस्टिक्स के लिए कहेंगे कि आप लैब्स करवा के लाएं, आप एक्सरे करवा के लाएं, यही होगा ना, अल्ट्रासाउंड करवाएं. और तीसरा जो है, जो कहीं पर होगा या कहीं पर नहीं होगा, दैट वुड बी फार्मेसी. और उसमें जो आपके पास आते हैं, जो आउट ऑफ जितने भी आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 पेशेंट्स आपके पास ओपीडी में आ रहे हैं, सो उसमें से हार्डली 5 to 10% वुड बी एडमिटेड. सो आप इमेजिन करें, जब आप उसके लिए डिजाइन करेंगे तो आपका ओपीडी कहाँ पे होना चाहिए, जहां पर आपके पास 3,000 या 4,000 लोग पेशेंट के तौर पर आ रहे हैं. सो इट शुड बी इन द फ्रंट ऑफ अ हॉस्पिटल, मतलब फ्रंट एरिया में आपको वो ओपीडी बनानी चाहिए. और उसके साथ एडजेसेंट कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक्स एंड फार्मेसी. हो सके तो आप एक बिल्डिंग बना लें, नहीं है तो कम से कम उनकी एडजेसेंसी रख लें. उसके बाद आप देखें कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी भी जो है वो आपको आपके हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल, एंड एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट. फिर आप इमरजेंसी की उसको देखें,
कनेक्टिविटी को देखें, इमरजेंसी की कनेक्टिविटी है डायग्नोस्टिक्स के साथ है, इन पेशेंट के साथ है, आईसीयू के साथ है और इमरजेंसी ओटी के साथ है। आपके पास अगर अपनी इमरजेंसी ओटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपको मेन ओटी में अपने पेशेंट्स को लेके जाना पड़ेगा। सो उसके बाद आपको यहां से फिर आप उसको मेन ओटी जहां पर भी होगी सो आपका टाइम लगेगा। सो आपने ये कनेक्टिविटीज देखनी है, तो आपने इमरजेंसी भी इस तरीके से रखनी है और आपने डायग्नोस्टिक्स इस तरीके से रखने हैं कि वो इमरजेंसी को, ओपीडी को और डायग्नोस्टिक आपके इन पेशेंट को इजीली अवेलेबल हों। सो मैं सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ इस स्लाइड पर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बन जाए। जब आप यहाँ पे बनेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम सब लोगों को पता होता है लेकिन हम बनाते फिर क्या है। उसकी वजह यह है कि हम लोग बिल्कुल इसको नहीं देखते। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने कभी अपने आप को पेशेंट के तौर पे नहीं सोचा। हम जब हॉस्पिटल डिजाइन करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, हमने कभी नर्स से नहीं पूछा कि तुम्हें किस तरह का वार्ड चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वार्ड जो है वो नर्सों का है, हॉस्पिटल जो है ना वो नर्सों का है। हम वैसे उसके ऊपर काबिज हुए हैं। भाई आपके वार्ड में आपकी नर्स 24 आवर्स रहती है। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब जो कंसल्टेंट है वो कितनी देर के लिए आते हैं? 5 मिनट के लिए आते होंगे ना, 10 मिनट के लिए आते होंगे। सो जो बंदा उसमें 24 आवर रह रहा है आप उससे क्यों नहीं पूछते? सो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हम हॉस्पिटल के वार्ड्स डिजाइन करते हैं उसमें जो नर्स का वर्क एरिया है, इंग्लैंड और अमेरिका में शी हैज टू वॉक इन वन शिफ्ट फॉर 6 to 7 किलोमीटर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ पुअरली डिजाइंड आर पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स आर। आप देखें ना एट द एंड ऑफ योर शिफ्ट आप नर्स की कभी शक्ल को तो देखें, वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है क्योंकि हमने इतने पुअरली डिजाइंड अपने स्पेसेस रखे हुए हैं। सो ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि आपने ये इंश्योर करना है। इससे एक चीज तो मुझे पता चल गई थी क्योंकि मैं पढ़ाता था, मुझे अंदाजा था। सो व्हेन आई वाज डिजाइनिंग CMH Rawalpindi's emergency, I ensured it has to have its own diagnostic। CT स्कैन उसमें लगा हुआ है, उसके अंदर डिजिटल लगा हुआ है, उसके अंदर तमाम अल्ट्रासाउंड्स मौजूद हैं, नॉट ऑफ द जो मेन हॉस्पिटल के, लेकिन उस 72 बेड के लिए यू शुड हैव एनफ आइटम्स। लैब का कलेक्शन पॉइंट वहां पर होगा, फ्लेबोटमिस्ट वहां पर मौजूद होंगे। आपने पेशेंट को क्यों भगाना इन तमाम जगहों पे? सो व्हाई कांट यू डिजाइन दैट, व्हाई कांट यू डू दैट? ओके जी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने ये देखना है कि ओटी है वो उसकी क्या कनेक्टिविटीज हैं, कहां से उसके लिए सर्विसेज आ रही हैं, CSSD क्या चीज है। बहुत सारे लोगों को हमारा नहीं पता होता कि CSSD क्या चीज है। चले हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और जो कि सपोर्ट सर्विसेज हैं उनको हम फ्रंट पे लेकर आ जाते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि हु रूल्स द हॉस्पिटल। बैक पे रखेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा? भाई आपको बैक एंड पे ही होना चाहिए। ये सारी की सारी क्या है, बैक एंड सर्विसेज हैं। लेकिन आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को आप ऐसी जगह पे रखें कि इजीली एक्सेसिबल हों और उनका जो ट्रैफिक है वो बाकी हॉस्पिटल के ट्रैफिक के साथ मिंगल ना करे। बेशक आप उसको बिल्कुल शुरू पे रख लें लेकिन इस तरह ना रखें कि जहां पर पेशेंट को आप उसकी फ्लो को आप मुतासर कर रहे हो। सो द हॉस्पिटल शुड हैव एन इन एंड आउट सर्किट विद गुड ट्रैफिक फ्लो। ये है कि नहीं? आपके हॉस्पिटल में अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप इमेजिन करें अगर इस ऑडिटोरियम के बाहर अगर ये गोल चक्कर ना होता फिर क्या होता? क्योंकि इनके तो एक है ना, एक गेट है। अगर ये गोल चक्कर नहीं होगा तो एक्चुअली क्या होगा कि एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी उसमें अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, आगे वो उसके पीछे खड़ी हो जाएगी, जो पहली वाली गाड़ी वो बाहर नहीं निकल सकेगी। हॉस्पिटल में भी हमारा यही होता है। ये पढ़ा पढ़ा के हम तक जाते हैं कि यार प्लीज इन एंड आउट सर्किट होना चाहिए, लेकिन फिर नहीं होगा। पार्किंग एरिया फॉर हॉस्पिटल स्टाफ, पेशेंट एंड विजिटर्स हम क्यों कैटर फॉर नहीं करते? Emergency outpatient department, diagnostic and pharmacy should have easy access and be co-located. ये बड़ा important है। They should be co-located and they should be connected with inpatient block. ICUs आजकल जो है ना, once upon a time there should be one ICU जिसको हम ICU या ITC कहते थे। शुरू में 5 बेड की होती थी, 6 बेड की होती थी। 2011 में when I took over command of CMH Rawalpindi, मेरे ख्याल में अगर कोई CMH Rawalpindi में सर्व कर चुका होगा तो उनको पता होगा कि हमारे पास एक so called ITC हुआ करती थी। मेरे ख्याल में it was 10 beds। इस वक्त CMH Rawalpindi में there are more than 100 beds of ICU। So within the span of 10 years इतनी mammoth expansion हो रही है।
سو آپ کے اب آئی سی یوز کیا ہو گئے ہیں کہ نیونیٹل آئی سی یو علیحدہ ہے, پیڈز آئی سی یو علیحدہ ہے, سرجیکل آئی سی یو علیحدہ ہے. اب تو ایون گائنیکولوجسٹ نے بھی کہا کہ ہماری بھی اپنی آئی سی یو ہونی چاہیے. وائی ناٹ, دا مور دا میریئر. لیکن اب میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو وانٹ ٹو ہیو دوز آئی سی یو, سو دے شوڈ بی آن ون فلور. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی تک انٹینسوسٹ کی, آئی سی یو ٹرینڈ نرسز کی, آپ کے پاس لوگوں کی بہت شدید شارٹیجز ہیں. سو آپ 1.5 انٹ کی بہت ساری مسجدیں نہیں بنا سکتے. وی آر فونڈ آف دیٹ, وی آر فونڈ آف دیٹ. میں ابھی سوات سے ہو کر آئے ہوں, کالام سے آپ آ رہے تھے, آپ یقین کریں گے ہر 200 گز کے اوپر ایک وہ کیا کہتے ہیں بریکر ہے, بریکر کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اسپیکر کے ساتھ کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, اللہ کا گھر جو ہے نا. سو اسی طریقے سے ہمارے ہر جگہ پاکستانی دے آر ان ہیبٹ آف ہیونگ دیئر اون اسمال لٹل ایریاز آف ڈومیننس. تو میری ہوپ سو یہ آپ نے انشور کرنا ہے. جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ڈو ناٹ گیو ان ٹو دا ڈیمانڈز آف ٹیکسٹ آف ریکوائرمنٹس آف دوز پیپل. آپ کے پاس یہ سب کچھ ہوگا, آپ کہیں گے نہیں, وی ہیو ٹو ہیو اٹ آن ون فلور, otherwise easily connected through lifts and stairs. Operating rooms or surgical suite, if located in a vertical building, should be at top floor or away from normal traffic. آپ نے لوگوں کو ادھر سے گزرنے نہیں دینا کہ وہ ایکچولی وہ تا کر رہے ہوں دروازہ کھول کر کے, وہ فلانا صاحب کدھر ہے بھائی, یہ آپریشن تھیٹر ہے. آپریشن تھیٹر کی کوئی سینکٹیٹی ہوتی ہے, کنٹرول ہوتا ہے انفیکشن کا. ایڈمنسٹریشن should be near main entrance so that its traffic should not enter the main clinical area. Then CSSD should be near operating rooms. Mortuary should be away from the normal traffic. Mortuary کتنے لوگ آپ ہاسپٹلز میں جب ہوتے ہیں آپ جا کر کے ایکچولی دیکھتے ہیں, جو آپ کو پتہ نا جو دیکھتے ہیں آپ کیسی جگہ ہوتی ہے مورچریز ہاسپٹل کی, جی بہت خطرناک قسم کی. بندے کو وہ سارٹ آف یو ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیئر. ایک تو ہمارا اپنا کلچرل ریزن بھی ہے, لیکن کلچرل کے علاوہ وہ اتنی صاف ستھری ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو ٹینشن نہ ہو, ویل لٹ ہو, صاف ستھری ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جینیٹر کو حوالے کی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں بتایا ہوتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. So all those people who they would like to see a mortuary, they should go and see CMH Rawalpindi's mortuary. I'm sure there would be very good mortuaries as well, لیکن وہ چونکہ ہم نے خود ڈیزائن کی تھی, خود وہ کیا تھا, اس کے اندر 32 فریزرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر پورا واشنگ ایریا سیپریٹ ہے, سب کچھ ہے. واشنگ ایریا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کے ریلیجیس کلچرل یہ ساری ریکوائرمنٹ ہے, یو شوڈ ہیو. آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو واش کرنا ہوگا تو آپ اس کو کیوں نہیں باڈی کو واش کرنے کے لیے اس کا ایک علیحدہ ایریا بنا لیتے. اور وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم کہتے تھے کہ بس پیشنٹ کی ڈیتھ ہوگی, اب تو ہم ہاسپٹلز ان کو لے کر آتے ہیں کہ ان کو اپنے فریزر میں رکھیں, چلز میں رکھیں. سو یہ آپ کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے اسپیس فار دیٹ. سروسز بلاک کی بات آ گئی ہے. پھر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے آکسیجن ٹینک, جس کو ہم وی آئی رینٹل کہتے ہیں. جنرلی وی آئی رینٹل ہوتا ہے. کمپریسرز ہیں, بوائلرز ہیں, دے شوڈ بی کو لوکیٹڈ وتھ سروسز بلاک, کیونکہ سروسز بلاک میں ہماری ساری وہ ہوتی ہے, مینٹیننس کے سسٹمز ہوتے ہیں, باقی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹورز والے ہوتے ہیں. اینڈ دین انسینریٹر, اف یو ہیو این انسینریٹر, آئی وڈ ناٹ recommend that every hospital should have its own incinerator. It's a very resource intensive system, number one. Number two, اس کے اپنے ایشوز ہیں بہت سارے. سو بہتر یہ ہے کہ گروپ آف ہاسپٹل should have one incinerator جس کے اوپر باقی ہاسپٹلز ڈپینڈنٹ ہو. سی ایم ایچ راولپنڈی میں میں نے اپنا انسینریٹر لینے کی کوشش نہیں کی ڈے ون سے, اور نہ میں نے لگایا وہاں پر. I was perfectly comfortable with this. وہ NCPC ہے, اٹک آئل ریفائنری کا انسینریٹر ہے, وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. وہ پے دیم پر کے جی, وہ ہم سے لیتے ہیں. اس زمانے میں 25-30, آج کل 40s میں ہو گیا ہوگا, 50s میں ہو گیا ہوگا. وہ ان کی گاڑی آتی ہے, لے کے چلی جاتی ہے, اس کو برن کر لیتے ہیں. سو آپ کو بھی انسینریٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بٹ اف یو آر پلاننگ ٹو ہیو این انسینریٹر, سو اٹ شوڈ بی ان ایریا اوے فرام مین ٹریفک بٹ اپروچیبل بائی ہیوی وہیکلز اینڈ مسٹ کنٹین اسٹوریج ایریا. پھر اس کے بعد فارمیسی ہے, کیفیٹیریاز ہیں, ATMs ہیں. دے شوڈ ہیو ایکسیس ٹو OPD بلاک اینڈ ٹو ایمرجنسی ٹریفک ایز ویل. اوکے جی, سو دس از اگین مائی ہاسپٹل, فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل. It's a tertiary care hospital with oncology, with every, I mean 27-28 specialties. اور میرے خیال میں it's a very good, one of the best faculty in Twin Cities of the Islamabad, Pindi.
It was built in 1950s اور یہ کافی بڑا ہاسپٹل ہے. یہ جس جگہ پر موجود ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, اس کو ڈیفینس چوک کہتے ہیں, DHA1 کے اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے درمیان, آئی ہاسپٹل کے درمیان ہے. بہت ٹریفک والی جگہ پر ہے. جب یہ یہاں پر بنا تھا اس وقت یہ پنڈی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اب یہ پنڈی کے درمیان آ چکا ہے. اب آپ اس ہاسپٹل کا امیجن کریں کہ جو ہاسپٹل کی جو یہاں پر جب ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی گیٹ ہے, یہ ایک ہی گیٹ ہے, اور اس گیٹ سے یہ جو ٹریفک چلتی ہے تو تقریباً 700 میٹر کے آنے کے بعد, اندر داخل ہونے کے بعد پھر کہیں جا کر کے رجسٹریشن آتی ہے. اور جب ایمرجنسی ہوگی تو ایمرجنسی کو کچھ اور بھی جانا پڑے گا آگے, یوں کر کے یہاں پہ جا کر کے 1 کلومیٹر پورا کرتی ہے تو وہ اس کو ایمرجنسی آ جاتی ہے. ہاسپٹل میں ایک کونے میں ہے, جس کے لیے اس کو 99% چانس ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کدھر جانا ہے, کیونکہ اب اتنی ساری بلڈنگز آ چکی ہیں. اور جب پیشنٹ ایمرجنسی میں ہوتا ہے اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر ہوں. وہ ہی از گوئنگ فرام پلیس ٹو پلیس, اور اس کو بتاتے ہیں یار وہ سیدھا چلے جاؤ, سیدھا چلے جاؤ. وہ سیدھا چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوور شوٹ کر چکا ہے. پھر اس کو کہتے ہیں واپس آؤ, واپس نہیں آ سکتا کیونکہ ایک روڈ ہے. سو یہاں پر جناب ایمرجنسی ہے. اس کے بعد یہاں پر جو او پی ڈیز ہیں بہت اچھی او پی ڈیز بنی ہوئی ہیں, ماڈولر سسٹم کے اوپر بنی ہوئی ہیں. 4 سٹوری ہے. لیکن چونکہ ہاسپٹل اسی طریقے سے میرے طرح کے کسی بندے نے بنایا ہوا تھا, سو اسپیس نہیں ملی, تو او پی ڈی کے اوپر کافی بڑی اسپیس تھی, جگہ تھی, تو انہوں نے وہاں پر 120 بیڈ کا آپس کا وارڈ بنا دیا. 120 بیڈ کا. تو اب اس کے اندر اپنا زبردست تھیٹرز ہیں, اور وہ ہیں 20 وہ ہیں ڈلیوری کے لیبر روم کے بیڈس ہیں. 120 بیڈ کا وارڈ ہے with own operation theaters, but the ladies have to go through the OPD with the 2 lifts, and that OPD is catering for at daytime for minimum 7,000 to 8,000 people, جس میں 3,500 صرف مریض ہوتے ہیں, باقی ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں. So you can imagine کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جنہوں نے اوپر جانا ہے, کیونکہ وہ ٹاپ فلور پر ہے. سو انٹرسٹنگلی یہ کہیں سے انڈیا والوں نے آ کر کے ہمارے ساتھ سازش نہیں کی. یہ ہمارے تمام میرے بہن بھائی اور ہم جیسے لوگ ہیں نا, یہ بناتے ہیں. اور وہ جو پروفیسر آف گائنیکالوجی ہوگی اس نے خاص طور پر وہ جگہ سلیکٹ کی ہوگی کہ یہ جگہ بہت بڑی ہے, یہاں پر مجھے آپ 120 بیڈ کا وارڈ بنا کے دیں. یہی ہوتا ہے نا, اسی طرح دس از ہاؤ یو میک یور ڈیسیجنس. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس او پی ڈی کے اوپر, اس او پی ڈی کا یہ جو بلاک ہے اس کے بالکل ٹاپ فلور پر تھرڈ اس کے اوپر وہ ہے, اور اس کے اوپر پھر اس کا سویٹ ہے, انڈوسکوپی کے سویٹس ہے. کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں کسی چیز کا. اور انٹرسٹنگلی یہاں پر ان کا اپنا وہ ہے, او ٹی ہے, لیکن دوپہر کے 2 بجے کے بعد وہ او ٹیز بند ہو جاتے ہیں. تو اب اگر اس خاتون کو آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے نیچے اتارنا ہوگا, پھر یہاں سے لے کے جانا ہوگا, اور آپ کو اس کے یہاں پر لا کر کے جو فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ فلور, جو سیکنڈ فلور پر جو او ٹیز ہوگی ان میں سے آپ اس کو لے کے جائیں گے. سو تب تک جو آپ کے پاس وہ جو 4 منٹ یا 3 منٹ پریشس ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ایون مائی ڈاٹر اس کا خیال, ان کا خیال یہ تھا کہ شی ول بی بورن نارمل, اس کی وہ ہوگی, لیکن سڈنلی دے ریئلائز صبح کے وقت ان کو پتہ چلا, گائنیکالوجسٹ کو پتہ چلا کہ اس کا جناب وہ کارڈ پرولیپس ہے. سو کارڈ پرولیپس ہے تو سی ایم ایچ راولپنڈی جو کہ ہمارا ٹیرشری کیئر ہاسپٹل ہوتا ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوتا ہے, اس کا جو فیملی ونگ تھا جہاں پہ خواتین ہوتی تھی اور جو مین او ٹی تھا, ان کے درمیان کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی. اس کے لیے گاڑی چلنی پڑتی تھی, گاڑی آتی تھی. سو اس کو پتا تھا کہ اب یہ گاڑی آئے گی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. سو گائنیکالوجسٹ ایکچولی اس نے میری وائف کو کہا کہ تم میری گاڑی میں جاؤ گی, اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا, سیدھا لے کر گئی ہے, اس کو انیسٹھیٹائز کیا اور ڈیلیور کیا. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ ہمارے پورلی ڈیزائنڈ ہاسپٹلس ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں. انٹرسٹنگلی جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں, یہاں پر یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, یہاں پر یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے, 27,000 اسکوائر فٹ کا ایریا ہے, جس میں بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹل آتے ہیں. یہاں پر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے ایک آرٹیفیشل لمب سینٹر بنایا ہے. آرٹیفیشل لمب سینٹر بالکل رائٹ آن دا مین گیٹ.
realizing کہ ہم ان ایمپیوٹیز کو فائدہ دیں گے. اب وہ جو ایمپیوٹی ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, وہ آلریڈی اس نے کوئی لم پہنی ہوئی ہے یا اس کو نئی لم لگنی ہے. I fail to understand that why we had that there. تو ہمارا یہاں کا ٹریفک جو وہ آپ کو روکتا رہتا ہے, مطلب جو یہاں کا جو ٹریفک جانا ہوتا ہے, اور اس ایمپیوٹی کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو FCPS ریہیب اسپیشلسٹ ہے, اس کو کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا ہاسپٹل یوں چکر لگا کر کے یہاں پر آ کر کے یہاں پر اس کا ڈپارٹمنٹ ہے آف ریہیب ڈپارٹمنٹ, جہاں پر ایمپیوٹی کو جب ریہیب کروانی ہوتی ہے وہ کروانی ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. تو نیچرلی اب اس کو وہاں پہ لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے وہ الیکٹرک کارٹس رکھے ہوئے ہیں, یا وہ تمام لوگ جو بسوں میں یا اس میں آ جاتے ہیں, پھر وہ الیکٹرک کارٹس ہیں ان کو ہم مختلف ڈپارٹمنٹس لے کے جاتے ہیں. وہ الیکٹرک کارٹس اتنے نہیں ہوتے نا, کبھی کبھی ان کو گھنٹے گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ 1.5 کلومیٹر کا جو وہ کیسے کریں گے. یہ نہیں کہ ہاسپٹل کے پاس ایریا نہیں تھا, ہاسپٹل کے پاس ایریا تھا. یہ جو سارا ایریا نظر آ رہا ہے, یہ جو سارا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سارے کے سارے گھر بنے ہوئے ہیں, اکوموڈیشنز بنی ہوئی ہیں. So this is what our tertiary care hospitals are. So my one advice would be, do not make this kind of hospitals. Challenges ہیں, ایک تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے, I'm sure کہ آپ تمام لوگ ابھی تو آج کافی مور وائز ہو چکے ہیں. ہاسپٹل کے جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں جس کو ہم اوپیکس کہتے ہیں, آپریٹنگ ایکسپینسز سے مطلب ہے کہ جو ریکرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, جس طرح یوٹیلیٹی کے بلز ہیں, لوگوں کی تنخواہیں ہیں, مینٹیننس ہے, اکوپمنٹ کا مینٹیننس ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے 50 to 90%. یہ میں نے 80% تو ذرا اس کے لیے لکھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ ایسے ہاسپٹلس بھی ہیں کہ جہاں پر خرچہ ہی صرف HR کا ہے, باقی کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے خاص طور پہ ٹرشری کیئر نہیں سیکنڈری اور پرائمری کیئر کے جو ہمارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس ہیں, وہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا, صرف دوائی کا خرچہ ہوتا ہے اور HR کی تنخواہ کا خرچہ ہوتا ہے. سو آپ امیجن کریں کہ اتنا خرچہ جب استعمال کر رہے ہیں HR کے لیے, تو اٹس ورتھ وائل کہ جب آپ ہاسپٹل ڈیزائن کریں تو اس کی ایفیشنسی کا بھی خیال رکھیں نا, تاکہ ان کی جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ امپروو ہو سکے. بلڈنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہوں گے. آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پاکستان میں دیر از ناٹ اے سنگل اتھارٹی جو ہاسپٹل کو کمیشن بلڈنگ کی اتھرائزیشن دیتی ہے کہ آپ ہاسپٹل بلڈ کر سکتے ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ کوئی ہیلتھ اتھارٹی نہیں ہے. آپ نے اگر ہاسپٹل بلڈ کرنا ہے, پبلک سیکٹر میں کرنا ہے, تو آپ کو اپنے TMA سے یا میونسپل کمیٹی سے پرمیشن لینی پڑے گی, جن کا ہیلتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر آپ کو کسی CDA میں کرنا ہے تو آپ کو CDA سے پرمیشن لینی پڑے گی, DHA میں آپ کو DHA سے پرمیشن لینی پڑے گی, بحریہ میں آپ کو بحریہ سے پرمیشن لینی پڑے گی. جبکہ باقی دنیا میں اس کے اپنی اپنی اتھارٹیز ہیں. ایون انڈیا میں اس کی اتھارٹی بن چکی ہے 2016 کے کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت. ہمارے پاکستان میں کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن تو بن چکا ہے, لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن ابھی تک ہاسپٹل کی ان کو چیک تو کر سکتا ہے, جو بنے ہوئے ہاسپٹلز ہیں وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے لیے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ ہاسپٹل کے ویسٹ کو صرف دیکھتی ہے. PNRA جو ہے وہ آپ کے ریڈیولوجیکل ویسٹ کو دیکھتی ہے اور آپ کی ریڈیولوجیکل سروسز کو. یہ واحد اتھارٹی ہے جو آپ کو جب تک آپ اس سے اپروول نہیں لیں گے تو آپ کے ریڈیولوجی جو ہے وہ کمیشن نہیں ہو سکتی. اس کے بعد PMC ہے, PMC رہتی ہے نہیں رہتی, لیکن چلے ہم کہہ دیں گے PMC ہو یا PMNDC ہے, وہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے سٹینڈرڈز بیان کرتی ہے, لیکن وہ ہاسپٹل بنانے میں اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا. لیکن کم سے کم اس نے چونکہ وہ سٹینڈرڈز دے دی ہیں, تو اب جو بندہ ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے تو کم سے کم وہ ان کے اپنے سٹینڈرڈز اٹھا کر کے اس کے مطابق بنا سکتا ہے. اور پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے وہ ڈاکٹر اور نرسز کے اس کے اوپر تعداد کے اوپر بتاتی ہے. سو یہ ہمارے اتھارٹیز ہیں.
For structure, Building Code of Pakistan SP 2007 under Ministry of Housing and Works and Pakistan Engineering Council है, वो सिर्फ आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कमेंट करता है. So हमने जो बिल्डिंग एंड डिजाइन एट्रीब्यूट्स हैं कॉमन टू ऑल हॉस्पिटल्स हैं वो हमने देखते हैं. मैंने ये भी देखना है कि मेरे पास टाइम कितना होगा. तो हो गया. हाँ हो गया नहीं, हमने तो स्टार्ट भी बहुत लेट किया था. बस फिर स्टार्ट लेट किया था लेकिन अच्छा हम टाइम के मुताबिक करना है. ओके जी, जो ऑफिशियल है वो टाइम हो गया. ओके जी. सो मेरा अगर टाइम हो गया तो फिर मैं तो आपको सर क्या आपके लेक्चर के बाद एक और लेक्चर है, फिर लंच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो. हाँ ओके जी. सो ये बिल्डिंग एंड डिजाइन एट्रीब्यूट्स हैं. सो मुझे तो इसको रश करना पड़ेगा. ओके जी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल्ड सर्कुलेशन है. आप जब भी हॉस्पिटल में करेंगे तो आपने सर्कुलेशन को कंट्रोल करना है. आपके हॉस्पिटल में मुख्तलिफ किस्म की सर्कुलेशन होगी, आपको इसका पता चलना चाहिए. आपके पास जो सबसे ज्यादा लोग आएंगे वो पेशेंट्स आएंगे और पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट्स आएंगे. वो आपके पास ओपीडी में आएंगे या इमरजेंसी में आएंगे. आपने उनके लिए अलग रास्ता रखना है और वहां से उनको रास्ता भी वाहिद दूसरा रास्ता देना है कि उसी रास्ते से या डिफरेंट रास्ते से आप उस मेन चंक को आप निकाल सकें. दूसरा, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होंगे जो कभी अपने डेथ सर्टिफिकेट के लिए किसी के लिए आ रहे होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आ रहे होंगे, अपना आईडी कार्ड रखा होगा, पैसे कलेक्ट करने हैं, पैसे देने हैं या इस तरह के जो हैं, उनके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग को आप किसी ऐसी जगह पे रखें कि वहां पे जाओ और वहां से वापस आए, बजाय इसके कि पूरे अस्पताल में वो घूम फिर करके जा रहे हों. तीसरा आपका वो है जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके विजिटर्स होंगे. सो एडमिटेड पेशेंट्स के लिए आप हमेशा, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि आप उनके लिए एक अलग से रास्ता रखें. आप उनके लिए एक अलग से रास्ता रखें. पेशेंट जो एडमिटेड है वहां पर, जो विजिटर्स हैं वो वहां पे जाए और वहीं से निकल जाएं. तो आपने उनका वो करना है. और आखिर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रांसफर ऑफ कैडावर्स हैं. जो डेड बॉडीज हैं उनको जब आप मॉर्चरी लेकर जाते हैं तो तमाम मेन एरिया से उनको घुमा के न लेके जाएं. बाकियों के लिए बहुत ज्यादा इसमें इशू आ जाता है. जोनिंग है, हॉस्पिटल की जोनिंग वही है जो मैंने आपको पढ़ाई थी. आउटर जोन क्या होता है, विच इज इमीडिएटली एक्सेसिबल टू पब्लिक, जिसमें इमरजेंसी है, ओपीडी है, ये तमाम सर्विसेज आ जाती हैं. फिर सेकंड जोन है विच रिसीव्स द वर्कलोड ऑफ द ओपीडी. इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक्स हैं और आपकी लैब्स हैं. सो वो जो है आप उसको, दे आर सम टाइम पार्ट ऑफ योर आउटर जोन. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनर जोन है जो इन पेशेंट सर्विसेज है. और डीप जोन में जहां पर आपकी लैब्स ओटी होती है, लेबर रूम्स होते हैं, नर्सरी है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं और सर्विस जोन है. सो ये आपके 4 मुख्तलिफ जोन्स हैं. और ये जोन्स को, दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. वेंटिलेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो चीज है जो आपके हॉस्पिटल को बाकी हॉस्पिटल से मुमताज बनाता है. आपका अगर बड़ा हॉस्पिटल है, फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है और वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है और उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, वेंटिलेशन सिस्टम तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल है, एसी लगा हुआ है, लेकिन वेंटिलेशन सिस्टम, ये वेंटिलेशन सिस्टम है, ये उसके 4 कंपोनेंट है. अगर उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट नहीं है तो वो हॉस्पिटल का वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है. वो 4 कंपोनेंट क्या है? नंबर 1, टू प्रोवाइड इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट. इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट, और इसमें ये होगा कि इसका मतलब है कि फ्लो वुड बी फ्रॉम क्लीन टू डर्टी एरिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, रूल नंबर 1 है. दूसरा है टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स ऑफ एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स. वो आप किस तरीके से करेंगे? थ्रू फ्रेश एयर. आप फ्रेश एयर वहां पर डालेंगे और जो यूज्ड एयर है आप उसको निकालेंगे. एंड टू प्रोवाइड कंफर्टेबल टेम्परेचर, जिस तरह यहाँ पर है, इट्स वेरी कंफर्टेबल टेम्परेचर, हम अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. एंड देन टू प्रोवाइड एम्बिएंट थर्मल एंड ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट फॉर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टू फंक्शन. सो ये 4 चीजें हैं. अगर ये 4 चीजें आपके अस्पताल के उसमें नहीं होता, सो हमारे यहाँ जो 90% हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हम ये 2 का तो केयर करते हैं, लेकिन ये 2 चीजें नहीं होती. उसकी वजह ये होती है कि हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं, हमने वेंटिलेशन सिस्टम्स नहीं लगाए हुए थे. So there is difference between air conditioning and ventilation. So हमारे यहाँ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं. जो हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है वो HVAC सिस्टम है. अगर आपके पास HVAC नहीं है तो फिर आपको VRV या VRF लगाना पड़ता है.
ओके जी, सो ये ट्रेडिशनल एयर कंडीशनिंग है, वो आप सबको पता है कि व्हाट इज ट्रेडिशनल एयर कंडीशनिंग। वो स्प्लिट लेवल की भी हो सकती है, वो आपके उसमें भी हो सकते हैं जो छत में लगती है, जिसको हम सीलिंग माउंटेड कहते हैं, वो कैसेट्स टाइप की भी हो सकती है, या वो विंडो भी हो सकती है। सो ये ट्रेडिशनल वेंटिलेशन है, एयर कंडीशनिंग है, नॉट वेंटिलेशन। इसमें कोई फ्रेश एयर नहीं आती, इसमें कोई आपकी जो यूज्ड एयर है वो नहीं जाती, कोई आपके फिल्टर्स नहीं लगे हुए। फिल्टर्स वही लगे होते हैं जो गर्त को करने के लिए वो आप फिल्टर निकाल करके साफ कर लेते हैं, दे आर नॉट फिल्टर्स। जो चीज है वो HVAC है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिफाइंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है। इट्स अ प्रॉपर हॉस्पिटल सिस्टम है। इसके जो मेन वो है कि इसके अंदर चिलर्स लगे होते हैं, इसके अंदर एवेपोरेटर्स लगे होते हैं। इट्स अ ह्यूज बिग सिस्टम, इट्स अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम। और इसके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि ये फ्रेश एयर लेता है, फ्रेश एयर को या ठंडा करता है या उसको गर्म करता है। फ्रेश एयर लेते हुए इनलेट पर ये उसको वो करता है, फिल्टर करता है। फ्रेश एयर को फिल्टर करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है, जिस तरह करना हो। अगर ह्यूमिडिटी है तो उसको डीह्यूमिडिफाई करता है, और अगर वो खुश्क है तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी ऐड करता है। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो एयर हैंडलिंग यूनिट उसको आगे मुख्तलिफ जगहों पे जहां पर उसने जाना है उस एयर को थ्रू बड़े बड़े डक्ट्स होते हैं उनके जरिए लेके जाते हैं। वो डक्ट्स जो हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के कई किलोमीटर पे भी हो सकती हैं। वो जो डक्ट्स होते हैं वो 1.5 से लेकर के 2 स्क्वायर फुट के डाय के इस तरह के काफी बड़े वो होते हैं, कि उन पे लेके जाता है। और जहां पर लेके जाता है वहां पर उसका मिडल वो लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। उसके साथ 99% एयर को ये प्योरीफाई कर लेता है। और वहां से जब वो ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, क्रिटिकल एरियाज में लेके जाता है, एयर को लेके जाता है, तो वो इतने प्रेशर से होता है उसके ऊपर आपने फिर HEPA फिल्टर्स लगाए होते हैं, जहां पर आपको 99.9997% आपको कंप्लीट प्योर स्टेरिलाइज्ड एयर देता है। हम जब कंप्लीट की बात करते हैं तो वो 99.9997% है, वो आपको देता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल के ये, बट दिस इज हाईली रिसोर्स इंटेंसिव विद लार्जर फुटप्रिंट है। आपके अगर आपने JCI एक्रेडिट होना है, सो यू हैव टू हैव दिस सिस्टम। एशरे जो है, जो अमेरिका का जो एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग सिस्टम है, पूरी दुनिया में माना हुआ है, सो वो इसको रिकमेंड करता है। फिल्टर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये उसका सॉर्ट ऑफ वो है। अब इसके अंदर खूबी ये है कि हर कमरे में, हर जगह पर जहाँ पर इसका हो, इसके डक्ट लगे होंगे। ऑपरेशन थिएटर में तो ये लैमिनर फ्लो के जरिए काम करता है। इसकी ये बड़ी खूबी है कि जहाँ पर आपको नेगेटिव एयर चाहिए वहाँ पर आपको नेगेटिव प्रेशर देता है। नेगेटिव प्रेशर आपको आइसोलेशन रूम्स में चाहिए होता है, ICUs के या बाकी आइसोलेशन रूम्स में। जहाँ पर आपके पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको पॉजिटिव प्रेशर चाहिए होता है। वो नेगेटिव प्रेशर में आप उनको रखेंगे तो आप उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, सो दे हैव टू बी इन पॉजिटिव प्रेशर। ये सारी कहानियां जब आप सुनते हैं ना, जिस अस्पताल में जाएं जिसके पास HVAC सिस्टम नहीं होगा, वो आपको जब ये कहानी डालते हैं तो आप उनको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। आप उनको बताएंगे किस तरीके से तुम उसको नेगेटिव प्रेशर करोगे। वो नेगेटिव प्रेशर इस तरह करते हैं कि जी हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है। भाई एग्जॉस्ट फैन से चीजें नेगेटिव प्रेशर्स नहीं डेवलप होते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो प्रॉपर वो है, ये आपको पॉजिटिव प्रेशर देता है, फिर ये आपको बड़ा स्टेराइल इन्वायरमेंट देता है आपके ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर। फिर जब ये आपको फ्रेश एयर देता है तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक रिटर्न डक्ट्स भी लगी होती है। तो रिटर्न डक्ट के साथ वो फिर ये डिपेंड करता है आपके पूरे सिस्टम के ऊपर। तो रिटर्न डक्ट के साथ आपकी यूज्ड एयर बाहर चली जाती है। उसमें से चूंकि वो एयर ऑलरेडी फिल्टर्ड होती है, ट्रीटेड होती है, ठंडी हुई होती है, तो उसमें सारे के सारे को ज़ाया नहीं करते, उसमें से कुछ एयर को ज़ाया कर लेते हैं और बाकी एयर को वो दोबारा रिसर्कुलेट करते हैं, फ्रेश एयर के साथ उसको मिला लेते हैं। जब उसको फ्रेश एयर के साथ मिला लेते हैं तो फिर उसको फिल्टर करते हैं और फिर आपके पास 100% कंप्लीट आपके पास सिक्योर होकर के आ जाती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसी का फिर वो जो डाइकन वालों ने ये VRV इसको हम कहते हैं या VRF कहते हैं, ये एक और सिस्टम है। ये जरा उससे थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, लेकिन इसके अंदर HEPA फिल्टर्स की वो ग्रेडिंग नहीं लगी हुई, इसके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं। ये इसका सिस्टम है। ओके जी, ये इश्यूज टू बी हाईलाइटेड व्हाइल सेलेक्टिंग अ वेंडर फॉर वेंटिलेशन। आपने ये करना है,
न्यू ट्रेंड्स की हम बात नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं कि आपको सर्जिकल सूट्स किस तरह के चाहिए. बस सिंपल सी बात है कि जनाब देयर शुड बी नो टॉयलेट इन ऑपरेशन थिएटर्स. उस ऑपरेशन थिएटर्स में कोई टॉयलेट नहीं होने चाहिए. आपको डॉक्टर बहुत कहेगा कि नहीं वो टॉयलेट होना चाहिए, फलाना होना चाहिए. देयर शुड बी नो टॉयलेट इन द ऑपरेशन थिएटर्स, क्योंकि पाकिस्तान में वो हर हाल में ब्लॉक होगा और उसके बाद आप पूरा सिस्टम जो है ना तबाह करेंगे. सो एयर लॉक एरिया में कर सकते हैं, एयर लॉक एरिया से पहले अंदर नहीं कर सकते. ये ऑपरेटिंग रूम का वर्क जोन है. आपको पता चलना चाहिए इस तरह की चीजें. आपने जब अपने हॉस्पिटल डिजाइन करने होते हैं, कमरे डिजाइन करने होते हैं, तो आपके पास इस तरह का होता है कि प्रोसेसेस क्या हैं. आप इसमें इस तरह, ये आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि ऑपरेटिंग रूम में आप ये बता देते हैं कि ये टेबल होगा, इस टेबल के इर्द गिर्द इतना बड़ा एरिया है कि जो सर्जन का एरिया होगा, क्योंकि आप सर्जन को इस तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आप सिर्फ यहाँ से देखेंगे, सर्जन उस तरफ से भी जा सकता है, मुख्तलिफ उसका एरिया. तो सर्जन के एरिया को आपने डिफाइन करना होता है. सर्जन के एरिया के साथ हेड एरिया होगा जो कि एनेस्थेटिस्ट का एरिया है, उसके पास वहाँ पे पूरा सिस्टम लगा होगा. पहले जमाने में ओटी हमारी बड़ी छोटी होती थी, लेकिन आजकल हमारे पास हर किस्म के इक्विपमेंट आ गए हैं. टीचिंग हॉस्पिटल्स में फिर हमने ट्रेनिंग देनी होती है, लोगों को बताना होता है, पीजीज को, अंडर ग्रेजुएट्स को, तो आपकी ओटीज भी बड़ी होनी शुरू हो गई. सो ये उनके एरियाज हैं. फिर ये स्क्रब नर्स का एरिया है, सर्कुलेटिंग नर्स का एरिया है. सो इसके मुताबिक जब हम ये करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ओटी साइज है वो क्या होना चाहिए. पूरी दुनिया में तकरीबन जहाँ पर भी अच्छे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स बनते हैं, वो जनरली 50 स्क्वायर मीटर के करीब उसको एक ओटी को वो कंसिडर करते हैं कि ये उसका इतना होना चाहिए. और स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10.76 के साथ उसको ज़रब देना पड़ता है, 10.76 के साथ. सो जब आप उसको देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो ओटी है वो तकरीबन 555 स्क्वायर फुट का आपका अच्छा ओटी होना चाहिए. ये सारे के सारे आपके पास वो हैं. हमारे पास पाकिस्तान में 20 और 25 और 30 के हैं. ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, दे एक्चुअली, ये तो उन्होंने तो और कुछ भी नहीं लगाना होता. उन्होंने तो एक विंडो टाइप का या एक, आप में से कोई एनेस्थेटिस्ट बैठे हुए हैं? एनेस्थेटिस्ट बैठे हुए हैं? जी सर, बैठे हुए हैं. मैडम, आपने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी ओटीज किस तरह की होती हैं? नहीं होते, छोटे से होते हैं उसमें, और उसमें उन्होंने वो लगा होता है. तो बस ये आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारे ओटीज किस टाइप के होते हैं. फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेट्स है. अभी चूंकि इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अपने वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं. आपको बस जो मोटी सी बात बतानी है कि हर इंटेंसिव केयर का जो बेड है उसका एरिया 20 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. ये उसका मिनिमम एरिया होना चाहिए. जो उसका आइसोलेशन रूम होगा उसका 25 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए. एंड एवरी बेड, एवरी ICU bed has to have at least 2 ऑक्सीजन. मैडम को पता है कि जब हम लोग इंटूबेट करते हैं या एक्सटूबेट करते हैं उस वक्त अगर एक ऑक्सीजन पोर्ट होगी तो पेशेंट उसमें हम जाया कर सकते हैं. सो यू हैव टू हैव, जी बिल्कुल, यू हैव टू हैव 2 ऑक्सीजन पोर्ट विद एवरी बेड, 1 एयर, 2 सक्शन, 2 डाटा आउटलेट्स एंड एटलीस्ट 12 पावर पॉइंट्स. क्योंकि जब आपने मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स लगाने होते हैं, कभी कभी एक पेशेंट होता है जिसके ऊपर आपने 6-6, 7-7 वो लगाने होते हैं, इंजेक्शन के वो लगाने होते हैं, इन्फ्यूजन पंप्स और सिरिंज पंप्स लगाने होते हैं. सिरिंज पंप्स आजकल ज्यादा चल, इन्फ्यूजन पंप्स भी होते हैं जी. सो आपको, अच्छा ये सब कुछ है. CSSD जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपका हॉस्पिटल आप कहते हैं कि जी हमारे पास 4 ओटियां हैं या 5 ओटियां हैं और आपके पास अगर CSSD नहीं है, तो अगेन उस अस्पताल को आप जरूर बंद करें, क्योंकि CSSD के बगैर कोई हॉस्पिटल काम नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग. देखें दिस, जी बिल्कुल
یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے CSSD کے جو ہے نا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا ڈرٹی ایریا ہے, کلین ایریا اور اسٹیرائل زون ہے. اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا سارا ڈرٹی انسٹرومنٹ جب آتا ہے یا وہ آپ اس کو پہلے کلین کرتے ہیں, کلین کرنے کے بعد آپ اس کو پھر پیک کرتے ہیں, پیک کرنے کے بعد آپ اس کو اسٹیرلائز کرتے ہیں. اسٹیرلائزڈ آپ کو کس چیز سے کر سکتے ہیں آپ, یا اس کو ٹیمپریچر سے کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو ہائی ٹیمپریچر سے کریں گے کیونکہ اسپورز یا اس کے لیے تو وہ مریں گے نہیں جب تک آپ اس کو پورا جلا نہیں دیں گے. تو اس کا انگریزوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ آپ اس میں پریشر دیں, پریشر کے ساتھ آپ دیں گے, اسٹیم کا پریشر دیں گے تو آپ کو بے شک لو ٹیمپریچر کے اوپر آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے پھر خاص ڈیزائن آٹو کلیوز ہیں, اور جو آٹو کلیوز آپریشن تھیٹرز کے ہوتے ہیں, سوری CSSD کے ہوتے ہیں, وہ بڑے آٹو کلیوز ہوتے ہیں. فلیش آٹو کلیو جو ہے نا, فلیش آٹو کلیو کو ہسپتال میں بند کریں. یہ ساری کہانیاں لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں کہ فلیش آٹو کلیوز ہونے چاہیے. دیر از نو سچ تھنگ ایز فلیش آٹو کلیو. آٹو کلیونگ جو ہے نا وہ پورا کا پورا ٹائم لیتی ہے, آدھا گھنٹہ سے لے کر کے ہر ایک چیز کے اپنے ڈیٹرمنٹ پروسیجرز ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اتنا ٹیمپریچر, اتنا پریشر کے اوپر آپ اتنی دیر تک دیں گے تو اس کے بعد کہیں جا کر کے وہ آٹو کلیو ہوگا. سو اس کے لیے وہ پورا سسٹمز ہے. یہ میں آپ کو صرف اس کا ایک ایگزامپل دے رہا تھا, ڈیزائن بتا رہا تھا. سو آٹو کلیوز جو ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ڈبل ڈورز ہوتے ہیں, ایک ڈور جہاں سے آپ لوڈ کرتے ہیں اور دوسرا ڈور جہاں سے وہ نکالتے ہیں. سو جہاں سے وہ نکالتے ہیں وہ چیز اسٹیرلائز ہو جاتی ہے تو وہ اسٹیرلائز ایریا ہوتا ہے. جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیٹ سے یہ وہ ایریا ہے کہ اس کے اندر ہم نے آٹو کلیو ڈالا ہے تو اس طرف کلین ایریا ہے اور اس طرف جہاں سے وہ نکال رہے ہیں وہ اسٹیرلائز ایریا ہے. اس ایریا کا اور اس ایریا کے آپس میں کوئی مکسنگ نہیں ہوگی. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر پارٹیشن ہوگی, آٹو کلیو اس پارٹیشن کے اندر کیا ہوا ہوگا اور وہاں سے جو بندہ اس کو نکالے گا وہ اور کہیں پہ بھی نہیں جائے گا. وہاں سے وہ ڈم ویٹرز کے ذریعے یا لفٹ کے ذریعے یا کسی اور اس کے ذریعے وہ اس کو سامان کو اوٹی میں یا باقی جگہوں پر پہنچائے گا. یہ اس کے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آٹو کلیو کے لیے آپ کو اسٹیم چاہیے ہوتی ہے, اسٹیم کے لیے آپ کو بوائلرز چاہیے ہوتے ہیں. کچھ آٹو کلیوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آٹو اسٹیم جنریٹرز ہوتے ہیں, وہ خود اسٹیم جنریٹ کرتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ یہ ادر کنسیڈریشنز ہیں وارڈ کے, وہ ہیں ہاسپٹل ویسٹ واٹر کی جس میں آپ سے بات کر رہا تھا. اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سیویج از فل آف بایولوجیکل اینڈ کیمیکل ہیزارڈس ویسٹ. اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ایٹ ہاسپٹل جس کو 3 لیول کہتے ہیں, پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری. اس کے بعد کہیں جا کر کے آپ اپنے ہاسپٹل کے اس کی جو گرے واٹر ہے آپ اس کو میونسپل ویسٹ میں داخل کر سکتے ہیں. یہ واٹر سپلائی ہے. واٹر سپلائی آپ کو پریفریبلی 2 سورسز سے لینی پڑتی ہے. 300 سے لے کر کے 500 لیٹر پر بیڈ پر ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ کو ہسپتال میں 7 دن کا وہ بنانا پڑتا ہے اسٹوریج. یہ بڑے بڑے مہمت فگرز ہیں. تو اسی لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ کے پاس سنگل سورس ہے تو اس لیے آپ کو 2 سورس سے لینی چاہیے تاکہ آپ کے پاس اسٹوریج کا جو بندوبست ہو وہ صرف 2 دن کا ہو. الیکٹریسٹی کا بھی اسی طریقے سے ہے. سوئی گیس کا, سوئی گیس دیکھیے کس لیے استعمال کرتے ہیں, اٹس یوزڈ فار کوکنگ, ہیٹنگ, چلرز, بوائلرز اینڈ انسینریٹر. سو اگر آپ کے پاس سوئی گیس نہیں ہے تو آپ نے پھر یہ والے اکوپمنٹ نہیں لینے. پھر آپ نے اکوپمنٹ لیتے ہوئے ان کو بتانا ہے کہ ہمیں گیس والے نہیں چاہیے ہوں گے, کیونکہ وہ جنرلی آپ کو گیس والے دیں گے, وہ آ جائیں گے پھر کسی کام کے نہیں ہوں گے. میں نے بہت سارے جگہوں پر انسینریٹر اسی لیے استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھے 4 سال سے کہ وہاں پر گیس ہے ہی نہیں, اور جہاں پر انہوں نے گیس والے انسینریٹر خرید کے لگا دیے ہیں. سو بٹ اینی ہاؤ اوکے جی, یہ ہاسپٹل پیرامیٹرز ہیں کہ آپ کے ہاسپٹل کے جنرل جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس میں کتنے بیڈ جو ہیں, اگر 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے تو کتنے بیڈ کس کے پاس جائیں گے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ نے اپنا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن اٹ از جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. ہاسپٹل کورڈ ایریا ہے. ہاسپٹل کورڈ ایریا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی زمانہ تھا کہ آپ کو ایک بیڈ کے پیچھے آپ کو جو کورڈ ایریا ہوتا تھا وہ 45 ٹو لے کر کے 55 اسکوائر میٹر چاہیے ہوتا تھا. اب 111 تک چلا گیا ہے. سو آپ امیجن کریں کہ آپ ابھی بھی ہمارے بہت سارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس ہیں وہ بڑے ایفیشینٹ ہیں, وہ تھوڑی سی جگہ میں نا بہت ساری جگہ گھیر لیتے ہیں, کام کر لیتے ہیں. سو ان کے ایریاز ابھی بھی جو ہے نا وہ 55 سے اور 60 سے اوپر نہیں جاتے, ان کا جو ٹوٹل کورڈ ایریا ہوتا ہے پر بیڈ کے پیچھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کم بیڈز میں
वो पेशेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एफिशिएंट होते हैं, उनकी लेंथ ऑफ स्टे कम होती है, वो पेशेंट्स को डे केयर सर्जरीज के साथ, ये तरीके हैं। फिर हमारी तरह तो नहीं है ना कि हमने 6 मेडिकल वार्ड बनाए हुए हैं, एक मेडिकल वार्ड में 20 की जगह पर 22 मरीज दाखिल होंगे तो बाकी मेडिकल वार्डों में 10-10 मरीज दाखिल होंगे, यानी बाकी वार्ड खाली पड़े होते हैं। वो उसको फ्लेक्सिबल रखते हैं, वो कॉमन पूल रखते हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तमाम चीजों को, तो उसकी वजह से उनके पास एरिया की भी कमी होती है। ये जो आखिरी चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल बेड की आपको मेजरमेंट पता होनी चाहिए। पूरी दुनिया में हॉस्पिटल बेड स्टैंडर्ड है, वो है 1 मीटर इन ब्रेड्थ है और 2.15 मीटर इन लेंथ है। ये बस आपको पता चलना चाहिए कि आपका तमाम हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है ये आपका की है कि आपके दरवाजे कितने आपके साइज के होने चाहिए, आईसीयू के दरवाजे किस तरह के होने चाहिए। आपके हॉस्पिटल बेड शुड हैव व्हील्स, ताकि आप उनको व्हील पर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए, उनको आप शिफ्ट ना करें स्ट्रेचर्स में वहां पे करें जहां पर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये फिर मुख्तलिफ चीजें हैं, उनके पैरामीटर्स हैं, ये स्पेस रिक्वायरमेंट है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फॉर 300 बेड हॉस्पिटल यू कैन हैव 165,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, और जब आप उसको बड़ा बनाना चाहें तो आप उसका 3,30,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया भी उसी के लिए आप बना सकते हैं। तो उसका खर्चा आप जरा देख लें, कॉस्टिंग अगर मैंने बड़ा वो किया है उसको अगर आप 7,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर करें तो 1.15 बिलियन से खर्चा बढ़कर के 2.31 बिलियन भी हो सकता है, यानी उसका डबल हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, आपने देखना है कि प्रूडेंस क्या है, आपके पास कितना फंड है। सो थैंक यू वेरी मच जी, दिस इज ऑल। मैंने तो कोशिश की थी कि मैं ओवर शूट ना करूं, लेकिन ने मुझे लेट बहुत शुरू करवाया, मैं तो आ गया था। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। If there is any question or answer, most welcome. Okay. अभी सर एक सेकंड, ये सोनी तारिक साहब बताएंगे कि क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। कर रहे हैं अभी क्वेश्चन। ये विचार में है। Thank you very much, General Saudin. We have only 5 to 10 minutes, maximum 10 minutes. Questions जो है आप बड़े जी हाँ आधा घंटा हमारे हिसाब से, अगर आप अपना टाइम है, इसके बाद मेरा लेक्चर था, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी हुई तो मैं शुरू कर सकता हूँ। जी सर, क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एफिशिएंटली वर्किंग सिंगल आईसीयू बेड रिगार्डिंग सिंगल आईसीयू बेड रिगार्डिंग मैन पावर स्पेशली द नर्सेज पर 24 आवर, नंबर 2 इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड, नंबर 3 कॉस्ट। Question repeat करें। No, I understand. I understood two points. You want me to tell you that how many nurses are required per ICU bed? Number one. Okay, Ji. So it all depends that there are different standards all over the world. It all depends that if you've got total 93,000 nurses in Pakistan and there are more than 1,500 hospitals, so how can you have one nurse for every bed? So basically, if you have, then you should have at least one nurse per shift per bed. In Pakistan, what we are doing, that we have a standard of 1 nurses per 2 beds per shift, and depends on all ICU beds are supposed to be fully monitored and ventilated. Ventilated means that every hospital ICU bed should have its own ventilator. And fully monitored means everything, like it should have cardiac monitor, and every ICU should have access to other facilities, like every ICU should have its own image intensifier, it should have a mobile X-ray machine, it should have its own ultrasound, preferably colored Doppler. So all those things are required in a ICU. Next question. एक सेकंड, चलें आप करें क्वेश्चन। नहीं, I understand. Yeah, but I was responding to his question.
अच्छा सर, मैडम प्लीज एक मिनट क्वेश्चन आपकी बारी आती है। सर जी तो मेरा क्वेश्चन तो आपके जो हॉस्पिटल डिजाइनिंग रिलेटेड इतना नहीं है, लेकिन वैसे हेल्थ मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड है। सर ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप KPMTI में भी एज ए यानी मेंबर हैं। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे जितने भी KPK में MTIs हैं तो उसके BOGs जो होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं तो वो मेडिकल रिलेटेड नहीं होते, वो कोई कंट्रैक्टर होता है, कोई एडवोकेट होता है, कोई बिजनेसमैन होता है। तो ये इन कमिंग डेज में हमारी जो हेल्थ है ये इम्प्रूव होगी या इससे खराब हो जाएगी हमारी हेल्थ सिस्टम जो है? देखें, बेसिकली द होल आइडिया इसके जो MTIs हैं, उसके जो MTIs जो होते हैं वो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो द होल आइडिया इज दिस कि जो MTIs हैं उसको जो रन करने वाले हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं। डीन जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, ही हैज टू बी अ प्रोफेसर, उसकी बहुत एक्सपीरियंस होता है कॉलेज का। जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है, ही नीड नॉट बी a doctor, but we have ensured it that we take a doctor because हमारे पाकिस्तान में आपको डॉक्टर्स, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। सो ऑल आवर हेल्थ HDs आर डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ट्रेंड हैं। तीसरा जो होता है, जो की कंपोनेंट है, वो है मेडिकल डायरेक्टर। मेडिकल डायरेक्टर इज अगेन a very seasoned clinician, वो क्लिनिशियन होता है। जो नर्सिंग डायरेक्टर होता है वो अगेन उसने नर्सिंग में वो प्रोफेशनल होता है। सो MTI इज एक्चुअली रन बाय दोस पीपल। जो बोर्ड है, बोर्ड के पास तो सिर्फ एक वो है कंट्रोल है उनके बजट का, उनकी पॉलिसीज का। उसके अंदर जो 6 मेंबर्स होते हैं उसमें 2-3 डॉक्टर जरूर होते हैं, 1-2-3 डॉक्टर जरूर होते हैं, लेकिन उसमें आपने फाइनेंस का बंदा भी रखना होता है, उसमें आपने लोकल कम्युनिटी से भी बंदे लेने होते हैं। बाकी दुनिया में भी जो बोर्ड्स होते हैं उसमें उस रिलेटेड फील्ड के लोग उसमें कम होते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड फील्ड के लोग ऑलरेडी वो सारा काम कर रहे हैं। सो मैं तो कम से कम 2 बोर्ड ऐसे जानता हूं जिनके साथ मेरे बल्कि 3-4 बोर्ड हैं। डॉक्टर फजल हादी चेयरमैन रहे हैं, मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ, नदीम खावर है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर आसिम है। चेयरमैन तो काफी सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं कि जहां पर चेयरमैन, उन बोर्ड का ख्याल ये था कि जो फलाना आदमी वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये वो है वोट्स पर है। सो वो तो वोट पर है, मतलब वो जिसको करना चाहे। और लेकिन चेयरमैन BOG का कोई रोल नहीं है हॉस्पिटल की रनिंग में, और मेडिकल कॉलेज की रनिंग में उसका कोई रोल नहीं है। वो जो रोल है वो तो प्रोफेशनल्स का है। जी पॉलिसीज उन्होंने कराने। सर क्या नहीं है रोल उनका? सारा रोल तो उनका नहीं रोल है। मैंने आपको बताना कि वो आपकी वो सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं। मैं नहीं, मैं आपको डे टू डे रनिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं देखें पॉलिसी, नहीं ये देखें, ये एक हम बिल्कुल डिफरेंट, हम इस वक्त अब एक डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्कशन पे जा रहे हैं, वो आप मुझसे अलग में कर लें, क्योंकि आप खफा मत हो। आपके अगर कोई इफ यू आर हार्ट बंस है तो वो डिफरेंट चीज है। हमारा अलमिया यही होता है कि जो चीज जिस काम के लिए हम आए हैं उस चीज के अलावा हम बाकी हर चीज डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी टू से, आप मुझसे हॉस्पिटल प्लानिंग और डिजाइनिंग की बात करें, मुझसे मेरे कद के बारे में बात ना करें, आप माइंड ना करें। नहीं, लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया ना, लेकिन आप बड़े जज्बाती होकर के कुछ और कर रहे हैं। तो वही चीज कर रहा हूँ जी नहीं प्लीज, नहीं बस हम ये बात नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैडम। थैंक यू। बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी। बट एक तो जैसा कि आपने कहा कि SCC बिल्कुल भी नहीं करता, कोई नक्शा अप्रूव नहीं करता, कोई लेआउट प्लान नहीं करता। लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का देखें तो ड्रैप एक ऐसी जगह थी जो कि लेआउट प्लान अप्रूव करती थी, उसकी वजह से वो करती है फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसकी वजह से फ्लो बहुत अच्छा होता है। जो कि फ्लो प्रॉब्लम आपको हॉस्पिटल में नजर आते हैं वो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नजर नहीं आते। आपके इक्विपमेंट का अलग एरिया है, आपके पर्सनल का अलग फ्लो है, आपकी हर चीज का अलग फ्लो है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इसी तरह का कोई हॉस्पिटल के डिजाइन का भी किया जाए। मैंने आपको बताया ना कि हमने अभी तक पाकिस्तान में कोई इस तरह की अथॉरिटी या कोई इस तरह का सेटअप नहीं बनाया। सर दूसरा ये था कि HVAC जो है हम हॉस्पिटल में लगा देते हैं, लेकिन जो HVAC है
ہر جو سا ہیومیڈیٹی وینٹیلیشن سسٹم جو ہے ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے تو بیسیکلی ہم وہاں پہ لگا دیتے ہیں, لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کو ایچ ویک کے فلٹر بھی چینج کرنے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, وہ پیریوڈیکلی اس طرح سے چینج نہیں ہو رہے ہوتے. دیکھیں ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جب کوئی اکوپمنٹ لیتے ہیں تو ہم اس کی مینٹیننس کانٹریکٹ نہیں کرواتے. اب تو یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں کہ اب اکوپمنٹ لیتے ہیں تو آپ اس کا مینٹیننس کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کا مینٹیننس, اگر آپ ایم آر آئی کا مینٹیننس کانٹریکٹ نہیں کریں گے, اگر آپ کی زیرو بوائل آف ایم آر آئی نہیں ہے تو آپ کو سال میں 3 دفعہ شاید آپ کو اس کا ہیلیم چینج کرنا پڑے. تو اگر آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے تو ایک ہیلیم چینج کرنے میں آپ کو 57 لاکھ روپے کا خرچہ پڑے گا. آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ چینج نہیں کریں گے تو اکوپمنٹ بند ہو جائے گا. لیکن میڈم یہ چیزیں اب اچھی طریقے سے وہ ہو گئی ہیں, اب یہ کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتا اس کا مطلب وہ نالائق ہے, اس نے کیوں نہیں کیا, اس کو پوچھنا چاہیے اس سے. سر جو جتنی بھی دیواریں ہوتی ہیں ہاسپٹل کی, دیٹ شوڈ بی ویری اسٹریٹ, اور جتنے بھی فلور ہوتے ہیں ان میں کنارے نہیں ہونے چاہیے, جیسے کہ آپ thank you very much. It's your comments, it's not question. Just I want to take question from online. Dr. Fahim. جی میڈم. ایک منٹ. Dr. Fahim is despair. Last question. جی میڈم. Last question. Sir, my name is Rushna Zafar and I am working as radiology manager at Shalimar Hospital. Sir, my question is that most of the hospitals are like moving towards getting JCI certification. So what is the impact of hospital design on getting this certification? ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ there are only 5 hospitals in the country which are JCI accredited. I'm sure کہ there are certain others that they would like to have them. JCI نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں تو اپنے اسٹینڈرڈس بہت وہ رکھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں ان کی کچھ اسٹرکچرل ریکوائرمنٹ تو ہوتی ہے. Let's say if you do not have HVAC system, they would not like to accredit you. کیونکہ انہوں نے ایشرے کے اسٹینڈرڈز اٹھائے ہوئے ہیں. سو جو جے سی آئی ہے اس کے ذرا پرسکرپٹیو اسٹینڈرڈز تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سو نیچرلی جب آپ جے سی آئی ایکریڈٹ ہونا چاہیں گی سو آپ کو ان اسٹینڈرڈس کے اوپر ان کا پورا ایک سسٹم ہے, آپ اس کو ایکچولی ویب پہ جا کر کے جے سی آئی سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. دے ول لیڈ یو تھرو ویریس اسٹیجز. سو اس میں ٹائم لگے گا, اس میں آپ پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو بالکل اسی طریقے سے جس طرح آپ اپنے لیے ISO سرٹیفائی کرتے ہیں اپنے ہاسپٹلس کو. سو دس از مور اور لیس لائک دیٹ. لیکن چونکہ جے سی آئی زیادہ ہیلتھ کیئر اسپیسیفک ہے تو اس کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ بھی زیادہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس میں کچھ اسٹرکچرل چینجز بھی ہیں تو وہ آپ کو کرنے پڑیں گے یا آپ کو ابائڈ بائی کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹس ویری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ. آفٹر لنچ certificate ceremony will be held. آپ لوگ سارے 250 کتنے 220 پہ ہیں 210 پہ 210 پہ آپ کائنڈلی سب لوگ یہاں پہ آ جائیے گا. اس کے بعد ہم کلوزنگ سیشن اسٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد سرٹیفکیٹ سرمنی ہوگی, ڈسٹریبیوشن ہوگی. تو آپ کے پاس اب آلموسٹ 40 منٹس ہیں فار لنچ. اس کے بعد ہم میٹ آفٹر لنچ. پلیز گو فار لنچ. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. اٹ واز پلیزنٹ. Okay, participants, we'll be starting our session now. For our next session, I would like to invite Dr. Tariq Mahmood Ali, Associate Professor, Health Services Academy, Islamabad. His title of the talk would be Medical Records and Hospital Inventory Management. بس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین.
आपका तारुफ मेरा तो पहले आपके साथ इंटरेक्शन रहा, लेकिन अब फॉर्मल प्रेजेंटेशंस, the role and importance of medical record. When you think medical record, what comes in your minds? What comes in your mind about the medical records? कोई बता सकता है कि जब आप कहते हैं मेडिकल रिकॉर्ड क्या आपके दिमाग में आता है? Anybody please raise the hand. Patient documentation. और कुछ? Anybody और? बड़े बड़े उलमा कराम, जय्यद उलमा कराम यहाँ बैठे हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर कोई हॉस्पिटल मैनेजर्स, तो फॉर्मल आप बड़ी इल्माना बात कर रही हैं। तमाम पेशेंट का रिकॉर्ड, चले, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। बेसिकली रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स ऐसे है जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट के लिए सांस आना, जो आपकी वाइटल साइंस है, हम कहते हैं देयर आर सम वाइटल साइन फॉर द पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, लाइक दैट। बट इन द मेडिकल system, in the policy system, the medical record is a vital sign. Without medical record, you can't do anything. This is unfortunate. We have no data about any organizations, any hospital. हम क्लेम तो करते हैं कि हमारे पास बड़ा डाटा है, हम ये है, वो है, फ्लॉ है इसमें, लेकिन बट स्टिल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, रिमेंबर दैट द फिजिकल रिकॉर्ड, नॉट अ सॉफ्टवेयर या HMIS के बता मैं बात नहीं कर रहा, रिमेंबर दैट HMIS के बाद आफ्टर माय प्रेजेंटेशन देन डॉक्टर अहमद will deliver a lecture on HMIS. The first thing is the record and the data and the stats. It's unfortunate. मुझे कहने में ये कोई यार नहीं, we have a data less nation. We have a data less nations. हम आपको जितने जितने NGOs, बड़े बड़े एमनेस्टीज और ये सब आपको कहेंगे कि जनाब हमने ये सर्वे किया, हमने ये, खासकर मेरी जो फील्ड है हमारे हेल्थ की, इसमें सब लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ये सर्वे किया, हमने ये क्लस्टर किया, फलाने सैम्पलिंग, ये वो, बट ऑल दे हैव फज डाटा, प्रॉपर डाटा नहीं है। Reason behind it, we have not maintained a medical record properly. The first thing, it's a formal academic definitions. What is medical record? The medical record is a legal document providing chronicles of the patient's medical history and care, physician, like that, so on. जो आपने अभी मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ एंगल से ये सारी इसके अंदर लिखी हैं। आई डोंट वांट टू रीड दिस डेफिनेशंस। सो व्हाट इज मेडिकल रिकॉर्ड? इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। कंट्रीब्यूशन प्रोफेशनल केयर रेंडर्स टू द पेशेंट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी केयर और रेंडर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। थर्ड इज डिफरेंशिएशन ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड। अब जब आपका मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में जब भी कोई बात आती है, हम तीन चीजें हमारे, एक इन पेशेंट रिकॉर्ड है, एक आउट पेशेंट रिकॉर्ड है, एंड इमरजेंसी रिकॉर्ड हमारे जहन में जो आता है। मेजर तीन, दीज आर मेजर important record in a medical hospital. Being a hospital manager, it's your duty to maintain all these records properly and develop the data and stats on the basis of these records. जैसे मैंने कहा कि we are a data less nations. इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि when I was in Manchester, वहाँ एक बहुत बड़ा डाटा साइंस सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। वो जो डाटा साइंस की हेड थी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया, वहां पे एक इस तरह फॉर्मल प्रेजेंटेशन हो रही थी। He asked one question, Mr. Ali, do you think Gambia is better than Pakistan? Or Djibouti, like Niger, is better than Pakistan? I said no, never. But she said, unfortunately, we have put ahead in annexes in all matters, the very small country before Pakistan, because all these countries provide the data accordingly
to the UNESCO, World Bank, and other international organizations. Unfortunately, हमारे पाकिस्तान में कोई डाटा प्रॉपर होता ही नहीं है कि हम यहाँ पे प्रॉपरली इन इंस्टीट्यूशन को उनके रिक्वायरमेंट या उनके जो क्वेश्चनेयर होते हैं उसके मुताबिक हम तैयार कर सकें. अनफॉर्चुनेटली अभी जनरल साहब ने एक प्रेजेंटेशन दी आपको, उन्होंने कहा कि हम वी हैव देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया कि कितने मेडिकल हमारे पास वार्ड में कितने होने चाहिए, मेडिकल वार्ड कितने होने चाहिए, सर्जरी के वार्ड कितने होने चाहिए, गायनिकी. The reason that we have no data. If we have a proper data, medical record, then we can build a scenario, we can build a proper policy. जितने भी पॉलिसी दुनिया में डेवलपमेंट नेशन में या डेवलप कंट्री में बनाई जाती हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे यहाँ क्या जो भी प्लानर्स या पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव नो डाटा. दैट इज रीजन कि उनकी जो पॉलिसी होती है, उनके जो प्लानिंग होती है, दे आर वेरी पुअर प्लानिंग. जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमारे पास कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है, वजह हमें पता ही नहीं है. इफ वी हैव डाटा कि जनाब मेरे पास इतने मेडिकल के पेशेंट्स हैं, इतने सर्जरी के पेशेंट हैं, इतने आप कह सकते हैं कि जनाब यहाँ इस एरिया में मेडिकल के पेशेंट ज्यादा हैं या इसके नंबर ऑफ बेड या नंबर ऑफ वार्ड ज्यादा होने चाहिए, सर्जरी के कम होने चाहिए, लेकिन ये हम इस तरफ जाते नहीं है. अब लोकेशन एंड डेज एंड आवर्स ऑफ ऑपरेशन, टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं जरा बहुत क्विकली इसको, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि ये सबसे इग्नोर्ड डिपार्टमेंट होता है आपका किसी भी हॉस्पिटल में, खासकर इन पब्लिक सेक्टर आप चले जाएं, जो मेडिकल रिकॉर्ड या मेडिकल स्टोर रूम बनाया तो वो इतना पैथेटिक होता है कि आप उसमें दाखिल हो जाए तो आपको उसको खौफ होएगा. और उसका सारा जो स्टाफ या वो भी प्रॉपर्ली ट्रेन स्टाफ नहीं होता है, स्टैटिस्टिशियन नहीं होते, प्रॉपर्ली असिस्टेंट्स, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट नहीं होते, सिंपल आम एलडीसी यूडीसी उसको एक आदमी जो रिकॉर्ड को हैंडल कर रहा होता है, और वो कहीं हॉस्पिटल के कोने खदरे में जो पुराना सबसे गंदा जो कमरा होगा किसी सीढ़ियों के नीचे, वहां पे उसको बिठाया होगा. और जब आप कोई चीज लेने जाएंगे वहां पे रिकॉर्ड या कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, तो आपको वैसे ही हुआ इतना खौफ आता है. तो इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी बीइंग हॉस्पिटल मैनेजर, इट्स अटमोस्ट ड्यूटी, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना मेडिकल रिकॉर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड रूम जो है वो इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल हो और अच्छी जगह पे और एक्सेसिबल हो टू द पब्लिक. ये ना, अब मैं इस बहुत सारी मिसालें आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या वाकयात होते हैं. जब आप, मैं एक दफा बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लेना था, तो हम होली फैमिली हॉस्पिटल गए. आफ्टर 6 months ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, हमें पहले तो मिल ही नहीं रहा था मेडिकल रिकॉर्ड रूम कि किधर है जी. उन्होंने कहा जी फलां जगह पे, फलां जगह. आखिरकार हम बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे, वहां जब पहुंचे सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, सर उधर ही जा रहे हैं. हाँ, वो यही बता रहे हैं कि आप सर होल्ड योर नर्व्स, आप उसी तरफ जा रहे हैं. तो वहां पे जब हम पहुंचे तो वो जनाब वहां पे एक तो वो उस जगह पे ना वो एक आदमी था, तकरीबन 3 बजे हम पहुंचे थे, 2:30-3 बजे. वहां पे वो मेडिकल बड़ा पैथेटिक किस्म का उसका रूम था, वो वहां पे उस कोई बंदा नहीं था. उसने कहा जी अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से उठा और देखा, उसने कहा जी आपका तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं है, यहाँ मेडिकल रिकॉर्ड नहीं. उन्होंने कहा जी लेबर रूम में चले जाए. लेबर रूम में जब पहुंचे तो तकरीबन 3 बज चुके थे. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो जनाब जो जैसे सर ने कहा कि सुबह वाली बाजी जो वो लॉक कर गई इमरजेंसी में, तो यहाँ रिकॉर्ड मेरे पास तो होते ही नहीं. तो सच किस ये बीइंग, अब आपको ये जो बता रहे हैं, जो बीइंग हॉस्पिटल में, इट इज योर ड्यूटी, आपने आप फील्ड में होना है, आपने उसको मेंटेन रखना है, रिकॉर्ड को प्रॉपर इंश्योर करना है कि उसको प्रॉपर जो जितने भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट स्टार्ट विद इन 10 to 15 days, इवन 6 to 1 week वो मेडिकल रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाना चाहिए, प्रॉपर्ली उसको मेंटेन होना चाहिए. अब इसमें और बहुत सारी बातें, गाइडिंग प्रिंसिपल जो अभी आपने कहा सोल्यूशन है इसके अंदर, तो हॉस्पिटल शैल मेंटेन द एडिक्यूट मेडिकल रिकॉर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज इवैल्यूएटेड एंड ट्रीटेड एज अ पेशेंट, आउट पेशेंट एमरजेंसी. जितने भी पेशेंट, इनका प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए, इनको मेंटेन, इनकी स्टैटिस्टिक डेवलप करनी चाहिए. यानी मेडिकल रिकॉर्ड शैल बी रीडली एक्सेसिबल फॉर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूइंग पेशेंट रिकॉर्ड. यानी अगर तो जाहिर है आप भी जितने भी हमारे पंजाब गवर्नमेंट में या दूसरी जितने भी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उनमें HMI किसी में इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुआ. आप इतने एफिशिएंटली उसको नहीं कर, एटलीस्ट उसको एक्सेल शीट में, किसी वर्ड में, किसी प्रॉपर कंप्यूटर में उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सकता है. जो कि सर अभी कह रहे हैं सोल्यूशन की तरफ, उसका सोल्यूशन यही कि आप हार्ड फॉर्म में आता है, उसको स्कैन कर लिए जाए, उनको कंप्यूटर शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए और एक्सेल में कन्वर्ट कर दिए जाए ताकि वो रिकॉर्ड आपके लिए एक्सेसिबल हो. देन कोड ऑफ एथिक्स, मेडिकल स्टाफ, ये तो एक सिंपल बाउंड्री बाय द प्रोफेशनल्स, सिक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आपने बहुत सारे वाकयात अब देखे होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीक हो जाते हैं. एक्सक्लूसिवली मेडिकल, आपका मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. इसका आपने बहुत एहतियात करनी चाहिए. बीइंग ए हॉस्पिटल मैनेजर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली उसको एक खास जगह पे रखा जाए और महफूज बनाया जाए. उसकी सीक्रेसी को, उसके एथिकल कंसिडरेशन को मेंटेन रखा जाए. इवन कि दूसरे भी आपके इन पेशेंट या आउट पेशेंट, इसमें एथिकल कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए इसको भी आप कोड ऑफ एथिक्स जो है इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम. व्हाट आर द यूज, ये तो अब मैं नहीं बताऊंगा. ये अभी बड़ी नो कि ये जैसे हमने बताया कि इसका यूज ये है कि बहुत ज्यादा मेडिकल रिकॉर्ड ही की बुनियाद पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, आपकी पॉलिसी प्लानिंग बनानी होती है. आप जितने भी फिजिशियन सर्जन, इसकी इंटेग्रिटी है, इसको आपने मेंटेन रखना होता है. पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेस, इसका लोग इसको रिसर्च के लिए यूटिलाइज करते हैं. अगर पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो तो आप रिसर्च के लिए तमाम हॉस्पिटल में आप तकरीबन जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल में उनमें IRB होना चाहिए, ताकि और एक्सेसिबली हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनके पास ये डाटा अवेलेबल हो ताकि वो इस पर रिसर्च करें. अभी वी हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अभी हमारे स्टूडेंट जाते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल में वो अलाउ ही नहीं कर रहे. रीजन दैट उनके पास डाटा भी नहीं होता और IRB नहीं होती. तो उनके IRB होती है इंटरव्यू बोर्ड्स, या उनके पास कोई ऐसा बोर्ड हो जो कि प्रॉपरली उसको देखे और उनको एक्सेसिबल यूजल फॉर्म में डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. एंड देन द हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स, मैंने बात कर रहा था कि ये प्रूफ ऑफ द वर्क डन फॉर करंट एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ये बात मैं कर चुका हूँ. इसमें डेथ रेट सबसे इम्पोर्टेंट है. आप उस ये वाली जो जितने भी डिजीज पर रिकॉर्ड, आउट पेशेंट, आई हैव रिटन ओनली 4 or 5 इंडिकेटर्स. इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज. मैं आई डोंट वांट टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंडिकेटर, वो एवरीबॉडी नोज, बीइंग मेडिकल प्रोफेशन आप उनको जानते हैं. WHO के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, यू शुड मेंटेन द रिकॉर्ड एज पर हेल्थ इंडिकेटर्स गिवन बाय WHO, जो कि उसके मुताबिक आप उसको मेंटेन करें ताकि लोगों के लिए और रिसर्चर के लिए और आपके लिए और पॉलिसी मेकर के लिए ये जितने भी आपके डाटा हो विल बी यूजफुल. ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है. एवरीबॉडी नोज, बीइंग हॉस्पिटल मैनेजर, मेडिकल डॉक्टर, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कंसल्टेंट है, उसमें फिर आउट पेशेंट है, इन पेशेंट है तो एडमिशन चला जाएगा, और फिर एक प्रोसेस है जिसमें अल्टीमेटली फाइलिंग वहाँ से होता हुआ कंप्यूटर एंट्री, स्कैनिंग एंड परमानेंट फिलिंग. जो अभी हैव डिस्कस दैट के हमारे पास HMIS अभी किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, मासवा 1-2 के अलावा. तो ये जो सोल्यूशन यही है कि अगर जब तक वो सिस्टम हमारे पास नहीं आता या एग्जिस्ट नहीं करता, तो एटलीस्ट इसको एक्सेल शीट में या एटलीस्ट इसको वर्ड फॉर्मेट में, यानी एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर फॉर्म में उसको ले आए ताकि ये डाटा आपके पास अवेलेबल हो, हैंडी डाटा हो हर वक्त. इनपेशेंट रिकॉर्ड, समलिंग फॉर्मेट, ये सारे सब लोग आपको एवरीबॉडी नोज अबाउट दीस थिंग कि समरी शीट होनी चाहिए, एडमिशन रिकॉर्ड होने चाहिए, डिस्चार्ज समरी होनी चाहिए. ये पूरा एक प्रोटोकॉल्स है जिसके तहत कि आपको अपना मेडिकल रिकॉर्ड इज प्लेस अकॉर्डिंगली. दिस अबाउट ये 17 स्टेप्स आप इसको कह सकते हैं. यू कैन से दैट देयर आर 17 स्टेप्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड प्रॉपर्ली. इसमें आप एक तरतीब से मेंटेन करना होता है. सेकंड है मेडिकल रिकॉर्ड कमेटी. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अब प्रॉब्लम आ रहा है. हमें अपने स्टूडेंट्स को जब भेजते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में वहाँ डाटा कलेक्ट करने के लिए या अपने थीसिस रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे कोई IRB नहीं होती. तो एटलीस्ट अगर आपके किसी हॉस्पिटल में प्रॉपर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसमें एटलीस्ट एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, 3 या 2 कंसल्टेंट होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, HOD कंसर्न वार्ड का हो. HOD क्वालिटी सिस्टम अगर नहीं है तो उसमें आप डेवलप करें. नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स ये भी लाजमी होनी चाहिए साथ. HOD ऑफ OP, आपके आउट पेशेंट एंड पेशेंट सर्विसेज जितने भी वहाँ पे OPD के या एडमिशन के HODs जो है इन वार्ड्स के, उनको भी मेंबर बनाए. इस कमेटी को चाहिए कि ये रेगुलरली मेट करे और इसका रिव्यू करता रहे कि हमारे स्टैट्स क्या है हॉस्पिटल की, इसे एनालिसिस करे, देखे और क्या हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली, आइदर आवर रिकॉर्ड इज प्रॉपर्ली मेंटेन और नॉट. At least 2 or 3% should be उसमें आप ड्यूटी लगाए रिकॉर्ड रूम में. अब जो आइडली तो एक स्टैटिस्टिकल स्पेशलिस्ट होना चाहिए इन ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना नहीं है. तो एटलीस्ट जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हम रख सकते हैं.
अगर वो भी नहीं है तो एटलीस्ट हम कोई अच्छा पढ़ा लिखा जो असिस्टेंट है या LDC UDC जो भी है कुछ जरा बेहतर पढ़ा लिखा है उसको उस पर ड्यूटी लगाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ होता है कि ये मेडिकल ऐसा एक नोट डिपार्टमेंट है कि हम उस बंदे की ड्यूटी लगाते हैं जिसको सजा देनी होती है, किसी क्लर्क को असिस्टेंट को वहां पे भेज देते हैं कि ये उधर बैठा काम करता है। तो एटलीस्ट आप बीइंग ए हॉस्पिटल मैनेजर, ये आपकी फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि आपने वहाँ पे क्या करना है कि ऐसे लोग, अच्छे लोग पढ़े लिखे वहाँ पे लगाएं जो कुछ स्टैट्स को जानते हो, कोई ग्राफ डेवलप कर सकते हैं, कोई स्टैट डेवलप करते हैं, कोई एक्सेल शीट जानते हो, कोई सॉफ्टवेयर के मतलब जानते हो जिनमें वो डाटा उसके अंदर एंटर कर सकते। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है ये, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसके दी गई हैं कि WHO की क्लासिफिकेशन है 1970 तकरीबन 1989 में मीटिंग हुई थी, उसके तहत उन्होंने क्लासिफिकेशन की है, इसकी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, ये मैनुअल्स है, इसके अंदर मेडिकल रिकॉर्ड्स की कैसे एंट्री करनी है, उसके क्लासिफिकेशन की कोडिंग दी गई है, कोड आप लगा सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप WHO के मैनुअल्स को फॉलो नहीं करते तो आप देसी तरीके से हमारा जो एटलीस्ट वो इंडिकेटर तो बन जाए ना। मतलब हम कहते हैं कि आउट पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, गैस्ट्रो कितने, सर्जरी कितने, एडमिशन रिकॉर्ड्स आपके पास, उसकी क्लासिक डिजीज क्लासिफिकेशन के मुताबिक, वार्ड के मुताबिक उसकी एटलीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो कि जब आप कहीं पे उसको प्रेजेंट कर सकें। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, यानी सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज, पेशेंट डिजीज लाइक न्यूप्लॉन, डिजीज ऑफ द ब्लड ग्रुप, उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी क्लासिफाइड चैप्टर्स है WHO ने दिए, यू कैन रीड एंड थ्रू इन द मैनुअल्स। इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग ऑफ द पेशेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास डाटा नहीं है, वी हैव नो डाटा, दैट इज रीजन वी कांट डेवलप इंडेक्सिंग ऑफ द इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स नहीं बन सकती, इंडिकेटर्स नहीं है हमारे पास प्रॉपर्ली। Disease and operation of index are maintained separately. Indices, जितने भी इंडेक्स दुनिया में डेवलप किए जाते हैं, is based on the indicator, either is a science technology indicator, either is a health indicator, either economic indicator, is a famous index everybody knows about, human development index. वैसे तो अभी STI science technology innovation index है, आप innovation global index है, innovation index है। हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ का इंडेक्स बहुत कम आपको देखने में मिलेगा। रीजन क्या है बिहाइंड इट कि वो सारे हमारे पास उसका प्रॉपर्ली डाटा ही नहीं है। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अनएबल टू डेवलप हेल्थ इंडेक्स प्रॉपर्ली, इसलिए कि उनके पास बहुत कम जो SDG, आप सारे लोग जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो इंडिकेटर दिए वो मोर देन 270 प्लस इंडिकेटर्स है। अब उनका उसके मुताबिक डाटा, अगर 270 नहीं तो एटलीस्ट हम 150, 130, 100, 70, 50 तक तो इंडिकेटर का डाटा बना सकते हैं ना, एज पर SDGs या एज पर WHO। ये फ्यू एग्जांपल्स हैं, ये इनकी कोडिंग है, वो जाहिर है अगर आप रिकॉर्ड रूम में हैं तो बीइंग एक हॉस्पिटल मैनेजर आपकी ये ड्यूटी है कि उनको कहें कि यार इसको कोडिंग करें एज पर इंटरनेशनल जो रिकग्नाइज कोडिंग दी गई है WHO ने, कि कैंसर लंग्स के लिए क्या है, कैंसर लिवर के लिए क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या है, लाइक दैट। नंबर सिस्टम, फाइलिंग नंबर अलॉट किया जाता है, ये एवरीबॉडी नोज कि आप जो पेशेंट एडमिट होता है उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, तो एटलीस्ट उसको एक वो नंबर जब आइदर वो एक्सरे में जाए, वो पैथोलॉजी में जाए, वो उसका एक ही नंबर होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, आपने देखा होगा, वी हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम के हॉस्पिटल के, जब वो पैथोलॉजी में जाता है वो अपना नंबर जनरेट कर देते, वो उधर जब जाता है वार्ड में, गायनी में अगर रेफरल पेशेंट जाता है तो उसका अपना नंबर अलग जाता है, एक्सरे में जाता है, तो इसलिए इंश्योर करें एक नंबर अलॉट कर दिया जाए और वही तमाम जगह उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए। जब HMI सब हम बात करते हैं, HMI इसमें एक नंबर आता है उसके पास, वो अगर आप मेडिकल के पास, OPD वाले के पास जाए, ENT वाले के पास चले जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, वही नंबर उसका हर जगह यूटिलाइज होता है, वो एक्सेस करने में बहुत आसानी होती है। देन द फाइलिंग सिस्टम, ये हमारे यहाँ इट्स वी हैव नो सॉफ्ट copy, we have no soft system, we have to develop a properly filing system. Agar if we have no filing system, then we fail to develop a proper data, a proper indexing, a proper to maintain the proper medical records. तो filing उसको करना है कि आपको इसका जो असूल है कि फर्स्ट 2 डिजिट टर्शरी नंबर दिए जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, लास्ट 2 प्राइमरी होते हैं, द प्राइमरी रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बाद फिर कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मेडिकल्स OPD है तो उसका एक नंबर होता है मेडिकल OPD का, वो पता आप पहले नंबर से पता चल जाएगा कि ये मेडिकल OPD का है, पहले नंबर से पता चल जाएगा ये सर्जरी OPD का। वो एक स्पेशल फर्स्ट 2 डिजिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं स्पेसिफिक वार्ड को या डिपार्टमेंट को, वो उस डिपार्टमेंट को इंडिकेट कर रहे होते हैं।
देन उसके फिर आगे सब एडिंग उसके नंबर चल रहा होता है पेशेंट का। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी इंश्योरेंस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, सिक्योर, करंट, ऑथेंटिकल, लीजिबल एंड कंप्लीट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी इंश्योरेंस, ज़ाहिर है अब हॉस्पिटल में तो QEC नहीं हो सकता, क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट या किसी भी एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। तो एटलीस्ट आप अपने तौर पर जो जब आप AMS, DMS, MS या DHO जहाँ भी आप आए, तो कम से कम आप इंश्योर कर सकते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस को बता खुद, या जो आपने वो कमेटी बनाई है उसके अंदर ये चीजें ला के उनको डिस्कस किया जा सकता है। रिस्पॉन्स टाइम, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, जैसे अभी मैंने कहा कि हमने 6 माह बाद जब हम गए तो वो उसके पास अभी तक रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड में लेबर रूम से शिफ्ट पहुंचा ही नहीं था उसके पास। तो एटलीस्ट it is your duty to ensure that the birth to be reported to the corporation within 21 days, यानी अगर CDO को है, CDO को चले जाए मुतलका कॉर्पोरेशन के पास, वहां पे रिकॉर्ड पहुंच जाए, या आपके इवन के अपने मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट पे रिकॉर्ड जो है, पेशेंट अगर डिस्चार्ज हो जाता है, अगर डेथ हो जाती है, या उसको फौरी तौर पर उसका रिकॉर्ड जो है मेडिकल रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाना चाहिए फॉर एक्सेस टू द कंसर्न अथॉरिटीज। ये इसका एक बेसलाइन है। आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, ये प्लेंटीज है, कुछ लिखा कुछ जगहों पे डिफाइन की गई है कि अप टू 1 मंथ है तो 5 रुपीज 5 रुपीज एज पेनल्टी लगाए। ये बहुत थोड़ा है, लेकिन ये शायद उस बुक में जो लिखा था जिसमें मैं पढ़ रहा था तो बहुत कम है। ये तो अब कम 1500 होना चाहिए कि अगर आप लेट करते हैं 1 मंथ तो 1000 रुपये एटलीस्ट फाइन हो, तब वो आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या LDC UDC वो जो है वो काम करेगा। तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स फॉर रिस्पॉन्स टाइम। आउट पेशेंट रिकॉर्ड रिट्रीवल एरिया की वही है कि आप अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ रिकॉर्ड नंबर इज सेंट टू लाइन इन द सिस्टम एंड आल्सो इन फॉर्म फॉर वर्किंग पेशेंट बाय द रिस्पेक्टिव कंसर्न्स सेक्रेटरी ओवर द सेक्शन इंटरकॉम। ये रिट्रीवल सिस्टम जो यानी डाटा रिट्रीव करना, जो अभी मैंने कहा था कि हम जो फेस 6 माह बाद गए कि हमें डाटा ही नहीं रिट्रीव हो रहा, रीजन है दैट कि उसने सबमिट ही नहीं किया, उसके लेबर रूम में पड़ा हुआ रिकॉर्ड उसका। डेथ आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेथ सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन द पेशेंट जो है, जो पब्लिक है, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, मैंने आपको जानती, उस बंदे ने उसकी फ्लाइट थी कुछ 8-10 दिन बाद, उसने बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना था, अब उसको रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तो ये रिट्रीवल ऑफ द डाटा ये आपने इंश्योर करें, इट्स योर ड्यूटी कि आप जब आपके पास पब्लिक आए, डेथ सर्टिफिकेट आपको तो इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इस पे तो सारी प्रॉपर्टी और दायरे उसके डिसीजन होने होते हैं, तो इनको इनके साथ फोजरी नहीं होनी चाहिए, इसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए और ये एट द टाइम आपको डिलीवर हो जाना चाहिए। तो आखिर पे जो मेडिकल ट्रेसर रिकॉर्ड नॉर्मली आम हमारे यहाँ ऐसे होता नहीं है। ट्रेस कार्ड स्पेशलिस्ट जो भी हमारा एडमिशन जो रजिस्टर होता है या एडमिशन फॉर्म होता है, उसके साथ एक ट्रेस कार्ड होना चाहिए किसी भी पेशेंट। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर अलॉट कर दिया जाए तो वो ट्रेस करने के जब वो एडमिशन डिस्चार्ज होता है पूरा उसको एक फाइल बना के उसको एक ट्रेस कार्ड नंबर लगा दी जाए, जब एक्सेस करना हो तो उसको एक्सेस करने में आसानी हो। सेंसस ये एक फॉर्मेट है सिंपल, अगर आप इज वेरी सिंपल, आप अपने तरफ से बना सकते हैं उसको, तो कि पेशेंट कब आए, कितने नंबर ऑफ पेशेंट कब डिस्चार्ज हुए और डेथ कितनी हुई है, ऑक्यूपेंसी कितनी है, बेड ऑक्यूपेशन कितनी है, लाइक दैट। ये तकरीबन इन ऑल हॉस्पिटल ऑल दीज इंडिकेटर्स आर अवेलेबल और यू कैन डेवलप बाय देयर ओन्स। मेडिकल लीगल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये इसके लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े पब्लिक कंसर्न होता है, ये सुसाइड, एक्सीडेंट, क्वारल, फाइट, ज्यादा आपको पता है सारे इस मेडिकल लीग, तो ये वेरी इसमें भी एक इश्यूज है जो आपने हल करना है। आप इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग, मसलन जब मेरे सीएमओ के पास जब ये केस आते हैं तो सीएमओ क्या करता है, आप सब लोग जानते हैं, अगर किसी ने सीएमओ शिप की है तो उसका बड़ा आसान तरीका है, हालांकि वो उसी वक्त डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ही कैन डिस्पोज द पेशेंट या मेडिकल रिकॉर्ड एट मोमेंट, लेकिन वो नहीं करता, अपने जिम्मे नहीं लेते, वो कोई भी करके सर्जरी को रेफर कर देता है या गायनी को रेफर कर देता है। अब वो कहते हैं गायनी वाले आएंगे देखेंगे या सर्जरी वाले देखेंगे तो वो रिपोर्ट लिखेंगे, वो एक्सरे होते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल लीगल एक्सरे होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। अब वो तीसरे चौथे दिन जब आता है वो पेशेंट या पुलिस वाले आते हैं डॉक्टर लेके या उसके साथ तो वो कहते हैं अभी तो गायनी वाले आए, उन्हें देखा ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं सबमिट। तो
आप सर वो अभी सर यहाँ कह रहे थे solution is that being a hospital manager, ये आप इंश्योर करें कि मेडिकल लीगल केस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कि उनकी रिपोर्ट उनके कंसर्न कंसल्टेंट विद इमीडिएट इफेक्ट जो उनका टाइम ड्यू टाइम है उसके 1 डे 2 डे या 2 घंटे या 4 घंटे सीएम ने जो लिखा है उसके मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और जो मेडिकल लीगल है वो उसकी प्रॉपर रिसेप्शन पे पहुंच जाए जब वो पुलिस वाला या डॉक्टर लेके आए या जो भी उसका कंसर्न डिपार्टमेंट आए ताकि वो उसको सेस कर सके. One certificate वो medical legal इसको मैं retention of the medical record. Yes, this is also very important. We have to retain the OPD record at least minimum 5 years as per books. IPD या आपका inpatient record है वो 10 year तक होना चाहिए. Medical record is 30 years. This is very important. बाकी इसके as per law मैंने कुछ चीजें इसमें mention की. You can read at time. We have a very short time इसलिए मैं इसको जरा skip कर लूँ. आप पढ़ सकते हैं. बस इसके important चीज है इसको रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाए, फेंक ना दिया जाए, पानी शानी ना गिरा दिया जाए, आग ना लगा दी जाए. These are the very important रिकॉर्ड होता है. मेडिकल लीगल केस या आपका इन पेशेंट रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड ये भी नॉर्मली ये है कि 1.3 physicians shall maintain a medical record pertaining to the is an indoor patient of year 3 years for the date of commencement of the treatment. नॉर्मली ये कहते हैं कि आप इसको भी आफ्टर जो इन पेशेंट रिकॉर्ड है उसको 5 साल बाद और जो आउट पेशेंट जो रिकॉर्ड सॉरी आउट पेशेंट जो रिकॉर्ड है वो 5 साल बाद, वो इन पेशेंट रिकॉर्ड है ये उसको आप 10 साल बाद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और मेडिकल लीगल जैसे आप बताया वो भी यही कंडीशन है कि उसका एटलीस्ट 25 to 30 ईयर्स होना चाहिए, उसके बाद आप डिस्ट्रॉय करें. इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड वो मैंने आपको बात कर ली है कि जितना भी ये क्योंकि हमारे पास वी हैव नो HMIS, so it's our duty and especially in RSC, BHQ, district DHQ, THQ, यहाँ तो अभी कोई HMIS नहीं ना हमारे पास इतना resources है. At least we have one computer in each and every hospital. उस कंप्यूटर पे तो वो डाटा शिफ्ट कर सकते हैं, उसको स्टैट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उसको इंडिकेटर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वही है कि आप उसको शीट की फॉर्म में लेके आए, वो जाहिर है आप अपनी एज पर रिक्वायरमेंट बना सकते हैं. मैंने बनाई है लेकिन इसमें बहुत डिटेल है, आप उसको देख सकते हैं. ये पूरी हाँ ये सॉरी डेफिशिएंसी ये जो है जैसे मैंने कहा कि आपने अगर कमेटी बनाई हुई है उसके अंदर तो इसमें उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए बीइंग ए हॉस्पिटल मैनेजर्स इनकी डेफिशिएंसीज को आपने काउंट करना है. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उसमें यानी आपके डिफरेंट डायग्नोसिस उनको आप देखें प्रॉपर्ली. उसने जो आपका LDC UDC है उसने प्रॉपर्ली मेंटेन किया डायग्नोसिस के मुताबिक. ज़ाहिर वो एक लेमन कंसेप्ट उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी की पता नहीं होती, मेडिकल डिजीज के नाम भी नहीं आते होते, तो उनको आप ट्रेन करें या उनको बताएं कि जनाब इसके मुताबिक इनकी चेक करें कि उसकी डिफरेंट डायग्नोसिस जो है उसके मुताबिक उसने डाटा को अपलोड किया है कि नहीं है. रॉन्ग फॉर्म, मिसिंग प्रोग्रेस नोट, नेम, डेट की सारी चेक करने की. एक तो जब डाटा आता है तो वहाँ पे वैसे हम क्वालिटी एश्योरिंग में QEC बंदा होना चाहिए जो जब भी आपके मुख्तलिफ वार्ड से या OPD से जब डाटा है तो वो उनको चेक करे क्या उसके नंबर उसकी पेशेंट का नाम प्रॉपर सही लिखे हुए हैं कि नहीं, लाइक दैट. उसके बाद यस गुड मेडिकल, ये एक मिथ है कि आपको पता नहीं. गुड मेडिकल रिकॉर्ड, good medical care generally means good medical record, while the inadequate record generally reflects the poor medical care. So ladies and gentlemen, it's my humble suggestion when you go in the field, so the medical record is very important. आपकी responsibility जहाँ बैठे हैं इसको maintain करें properly. अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा helpful हो सकता है, WHO को manuals दिए गए हैं about the health indicators, अगर आप उसको read करें वहाँ पे टाइम क्यों बहुत थोड़ा होता है, उनको हम बता लिस्ट दी हुई प्रॉपरली उसको मेंटेन करने की और उसको रखने की, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है और WHO इंडिकेटर लिस्ट दी हुई. कोशिश करें अपने हॉस्पिटल में, अपने डिस्पेंसरी में, अपने तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में आप एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसको एटलीस्ट अगर थोड़ा बहुत उसके मुताबिक 100% नहीं तो 60, 70, 50% तक उस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करें ताकि हम उसको प्रॉपरली आपका रिकॉर्ड ही की बुनियाद पे अगर इंटरनेशनल जो प्लानिंग या पॉलिसी मेकर इवन के रिसोर्स एलोकेशन, जिसको बीइंग इकोनॉमिस्ट मैं कहता हूँ कि रिसोर्स एलोकेशन इज डिपेंड्स ऑन योर मेडिकल रिकॉर्ड. आपके बजट्स जो है बजटरी एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, प्लानिंग, पॉलिसी, इट डिपेंड ऑन योर मेडिकल रिकॉर्ड. आप प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे
तो प्रॉपर आपके मुताबिक उसके मुताबिक ही डिसीजन लिए जा सकते हैं. Is a simple medical record में the patient forget and record remembers. And this is my last slide. इसके बाद I would request to Dr. Ahmed का वो एक आपको ये था हमने बातें की purely खालिस्तान physical record. Everybody knows we have in our hospital a physical record. Still, we have no HMIS system in all hospitals. So, but Dr. Ahmed, before Dr. Ahmed comes in the stage, I would a little bit introduce him. Dr. Ahmed basically he's a PhD in infectious disease from US MIT. And he's a very good experience in ministry, and as well now he's working as associate professor in health service academy. He's also a technical lead in a very health population tank, which is advise policy in health matter directly to the president of Pakistan and prime minister. Now I would like to invite Dr. Ahmed to deliver HMI system lectures. Thank you very much. I will take अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं इसके बाद हम इकट्ठे लेंगे. Thank you. Assalamu alaikum everyone, and right now I know it's 2:45, so most of you would be feeling drowsy. So I'll try to be quick and precise. Health information system. I think Dr. Tariq has elaborated quite a lot that about the medical records. Most of them are the physical records. Just a simple question. If you have talked with someone probably 4 years ago, 5 years ago on your WhatsApp, you can still retrieve its record, right? However, if you go to a same hospital after 2 to 3 years or after 6 months, does the hospital has your record? Not really. So we all know that ये एक मसला है, a problem which exists, and yes, it's a huge need. And secondly, when you have thousands and thousands of patients, so probably you have seen that patients are carrying their file, X-rays, CT scans, MRI, prescriptions, a lot of things they are carrying. And sometimes when they go to a doctor, it's a whole confusion. Among all those documents, what is the right document to identify and what to do? So we will talk about that, and we'll try to focus more about how we can actually address this problem at a macro and a micro level. Why we need hospital management information system. Yesterday, Dr. Shahzad has mentioned really well that right now we are going for specialization, subspecialization, super specialty. So we're actually making a lot of compartments within our tertiary healthcare facilities. So what it is causing? It is creating a lot of fragmentation within a health system. Now, in order to solve a patient problem, we need to have a way where all those fragments can talk with each other in a very precise, accurate, and efficient manner. Can a human being do that? Not really. It's not possible. Let's assume if you have 10 or 15 or 20 different departments, and then if a patient healthcare is affiliated with those needs, normally what happens? If you have any patient, he need to have a diagnostic test, some kind of a medication requirement. Maybe he need to visit 2 or 3 departments. So even in this scenario, you can see there are 4 or 5 departments which are linked together. And I think yesterday the speakers have mentioned it really well, that sometimes you will see a patient running around from one ward to another and all. So this is a mess. How we can help to solve this mess? By having an HMIS system. We can integrate those small components so they can talk with each other. How they will talk? They will talk through data. It will connect the diagnosis, treatment among all the departments. One of the most important thing, I think most of you have witnessed it in your medical career, and you have seen someone went to a hospital and there has been some problem, some medical record, some error. और आप में से कुछ लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि भाई डेथ हो गई बंदे की, टीका गलत लग गया, कुछ ऐसा हो गया.
How we can solve it? In order to solve it, there has to be a way where everything is recorded properly. Not only recorded properly, it is accessible efficiently. And not only it is accessible to one or two person, it is accessible to most of the stakeholders. So HMIS is the answer to that problem. Medical errors, yes, medical errors is the third leading cause of death. How we can stop or prevent that? If we have a really good HMIS system, in the good HMIS system, what we can do? We can have very good documentation and records to at least try to control the medication error as much as possible. And secondly, when everyone is cautious, whatever intervention he's applying, it's going to be noted down and it's going to be checked and evaluated, then people will be more cautious in dealing. I believe most of you are aware that in US, they have the highest amount of medical litigation. Their doctors, nurses, everyone is scared that if they make a mistake, they are done. Their license is cancelled. However, in Pakistan and in a lot of other countries, we know that there is a huge gap. And the huge gap is there because we don't have a good record keeping system. So HMIS is actually a more better, good, efficient record keeping system. Among the leading causes of death, we know CVS, cancer, medical error is one of them. Medication errors are done at diagnostic, treatment, preventive, and other stages. And diagnostic and treatment are very well noted in the HMIS system. And in Pakistan, there are some good hospitals. Shaukat Khanam is one of them. Shifa is also trying to do that. The CMH, the military hospitals are also moving toward the HMIS system implementation. And I think those of you who have worked in CMH and those of you who have worked in a public sector hospital also know that there is a good mechanism of monitoring and evaluation. So if you want to refine monitoring and evaluation, there's just only way to have a better documentation. And how to ensure better documentation? Through a good HMIS system. The documentation of medical record, the importance of that is known since quite a while. And recently, with the boom of technology, the way slides are mentioning from 2001 to 2012, yes, the computer and all those things are becoming more cheap, accessible. And as the technology is evolving, if we use that in our health system, things will definitely improve. It will improve the quality, it will reduce the cost, and it will make the planning more easy. I think most of you remember from the yesterday's lecture from Dr. Shahzad when he mentioned that, in the evening, the cupboard is empty and in the morning, the cupboard is full. If we are able to forecast it well, what exactly is the need for the evening, what exactly is the need for the morning, so the MS or the head of the department can check, okay, for the morning cupboard and evening cupboard, this is the amount of supplies we are supposed to keep as per our forecasting tools. And for developing a forecasting tool, you just need to know how to use Microsoft Excel. Microsoft Excel is something you can use free of cost. And if MS Office is not there, the Google Excel is available. So we need to understand and learn more how to use these softwares to make our life more easy and to actually make an attempt in implementing the HMIS system. Here, something is really, really important. What is the purpose of HMIS system? Is to integrate all those components in our health facility. Now, here is the challenge. Most of the senior doctors, okay, let's not talk about just senior doctors, even many of you. If all of you are asked to master yourself in any computer tool, then most of you hopefully will be comfortable. Some of you will say, yaar, ye kya musibat hai? We are trying to learn something new. This is for kids and all that. So sometimes we are also not very reluctant and comfortable in understanding and learning new things. And there was a very good example in CMH when they were trying to implement the HMIS system at the health facility level. Initially, a lot of doctors were quite reluctant. Okay, what is this going on? And everyone has to learn how to reuse the computer and the software. That was little pain, yes. But what's the benefit?
The benefit is that right now, every patient whose record is saved there, he don't need to carry his whole bundle of medical records. One question to my audience here, in person and online. Can you name which country in the world has one of the best hospital management information system? It's not Sweden, it's Estonia. It's a very small country in Europe. And Estonia is one of the countries which have a population of less than 0.7, 0.8 million, yes, but its HMIS system is gold standard. If a patient is having an accident on the road, so when the paramedics reach them, from their CNICU identification number, hospital is informed that this is the patient which is coming. And there's a national integrated system which have a medical record of a person from birth till that time. So they have everything aligned. So when a patient is coming there, they already know, does it have a history? Who's his parents? What is the last medication he took? Is he taking heparin or whatever is going on? So this is one of the best example which exists in the world right now. Okay, for Pakistan, what we need to do? At least in our capacity, in our health facilities, wherever we have an influence, we can at least try to start implementing this HMIS system. Normally what happens, I believe most of you will spend a good amount of money in buying a good smartphone, right? Because it have WhatsApp, Google Map, everything. Some of you may also probably have their own clinics or work in a health facility. How much you are actually willing to spend on IT? There, a lot of people like to save the cost. Especially, okay, HMIS system, when you want to buy it commercially, yes, it is expensive. I will give you an example of a system which has been developed in Pakistan by Pakistanis, and it is as good as one of the best HMI system in the world. Most importantly, I think Sir Tariq has also mentioned, sometimes you don't even need an HMI system. Sometimes just a good Word document or a good Excel document of your daily record is good enough. And in Pakistan, one of the really huge treasure in a gold mine we don't realize. We have two huge gold mines. One is we have a lot of patient, means a lot of data, which is a gold mine. Secondly, we have a more cost effective and a cheap human resource. If we can train them, we can use them really, really well. So spending in IT, banking and finance, where money, paisa involved hota hai, so they put a lot of money right now. Cryptocurrency, Bitcoin, probably you guys a lot of heard about it. So it's a lot of more IT systems, technology going into that, have a crazy amount of money. Manufacturing, now it's an aim to make manufacturing more and more automated, more software systems. Why we're elected in healthcare? Healthcare is probably one of the biggest industry. One of the speaker mentioned yesterday, $8 trillion in US alone. Is this a small amount of money? How much is the GDP for Pakistan? Less than $300 billion. And what is the expenditure of healthcare in US alone? $8 trillion. So you can see the amount of difference. So the more we deploy technology, more tools we have to better monitor and evaluate, the better service we can give. We can actually make our human resource trained quite well, quite smart, quite efficiently. Computerized patient record. We give example of US. Why? Frankly, a person can make more money in US than anywhere else. That's one of the reasons. Secondly, even in a country like US, which have a quite developed health system, not one of the best health systems, definitely not. Scandinavian countries have one of the best healthcare systems. US is a very, very good market. You can see even in US, there are hospitals, like you can see here the graph of 29, which have no HMIS systems properly installed. Then there are some other components which are involved in HMIS system, which, and probably a lot of you know, that a doctor is prescribing an order through an online system, which means it's a physician generated, computerized physician order entry. For example, physician will write, okay, I'm looking at this patient. This is the diagnostics and the treatment and the follow-up I recommend. Something which we do by hand in our patient records, if we do it in a more computerized form, it will be more easy to save, more easy to access. Likewise, there is another small thing. A lot of you heard about artificial intelligence in healthcare and all that.
right? It sounds fascinating, exciting. What is the most amazing thing you can imagine about using an AI in a HMIS system? I'll give you an example. If any one of you would like to become a super clinician in which you have the access of most of the standard guidelines on your fingertips, knowing what is the best differential diagnosis, knowing what is the best possible test to be recommended at this point, it's really hard to memorize that, right? I think all of you have been going through the pain of recalling the anatomy and physiology, the relations and all that was painful. So HMIS system integration with advanced technologies help us to access that. These are some of the slides. Slides will be shared. Yes, you can go through that. My job here is to provide you a general solution, how we can solve it. And secondly, the time is really short. So these are some of the ways in which the HMI system can make things better. This is one of the pharmacy order, patient order, physician's order, prescribing history. Clinical decision support system, that's one of the most amazing thing which HMIS is helping all healthcare providers. It can help reduce medical errors. It can actually help empower most of the healthcare staff in making things and making clinical decisions really, really fast, really, really efficient and accurate. With clinical decision support system, I will share with you some of the wonders I know based on my experience in Singapore. So some of my colleagues were developing a technology. They were integrating with the clinical decision support system that whenever a patient MRI scan for the brain is conducted, they are able to tell what is the percentage accuracy for him to have a stroke. Will the patient is going to have a stroke from calcification, or will the patient is going to have a stroke from atherosclerosis based on its lipid profile, based on its calcium levels. So these are all the things which needs lot of technology integration, which is actually only possible through a more advanced HMIS system. So yes, we need to make our basics first, then we need to come to the more advanced level. These are some of the treatment guidelines which are actually accessible to HMIS system. And I think some of you are already familiar, especially the young lot. They have some clinical book on your app or mobile, and whenever you want to open any formulary, you want to understand what is the right dose for that medication. You need an active resource access. So HMIS also provides you that resource. So that makes your job much easy as a clinician. So these are some of the computer-assisted antimicrobial prescription. One of the things Dr. Shizad also mentioned yesterday, it was stewardship. Stewardship is leadership. In order to make leadership more and more effective, you need to know the right actions to be taken and the right references which needs to be there. So HMIS system at one point give you the best practices, step 1, step 2, step 3. And at another point, it also gives you the reference booklets. So one of the antibiograms which exist in one hospitals, the way to treat and manage different type of infections, how renal insufficiency can be mentioned. So this is the physician, computer generated physician order, then clinical decision support system, how both of these things can be integrated. Most importantly, yes, these are some of the things, some of them are boring, some of them are exciting. Some of us forgot, okay, there is certain specific intervention for a patient to be taken. So alerts and reminders are there to make sure the medication errors are low. Alerts. One of the most important thing I would like to mention here is, let's assume if I'm an ordinary clinician and I would like to become as good as someone with 20 or 30 or 40 years of experience. How I can achieve that? HMIS is one of the fastest tool which can integrate the experiences of all those amazing clinicians together. And HMIS is one of the tools which can help me to nurture that potential, to make my clinical practice more and more better, more and more accurate, and to reduce more and more medications error as low as possible. Some of you will be having this question that, okay, HMIS system is very expensive. If you buy it from commercial US market, yes, it is expensive. But how many of you know there are some open source HMIS systems which are free of cost? You just need to have a good collaboration with any computer science department of any Pakistani university. And that can help you deploy your own HMIS system at a very, very low cost. The system you see right now, it's something developed in Pakistan by one of the university in Lahore.
And this is the system which has been deployed by the Shaukat Khanum Hospital, and now it's been deployed in most of the other countries. So I believe I have not taken too much time, and I believe I have tried to address some of the basics of HMIS, and slides will be there for you to understand more and more. So thank you very much. Questions are welcome. जी सर, आपके पास माइक आ जाता है, then probably you can ask the question. ठीक है. For example, if in a radiology department we want to have a paperless radiology department, no film, nothing, only computerized report and CD. What is the running cost of this HMIS with the? Have you any research data or something like that? Sir, actually running cost. क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट, हमने डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो है ना, वो हमने काफी दफा हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा भी है, लेकिन ये कि हमारे पास डेटा नहीं है कि इसकी रनिंग का, जब हम वेंडर्स को बुलाते हैं वो कहते हैं 2-3 करोड़ रुपया जो है ना वो दे, तो हम आपको जो है ना वो RIS HMIS जो है ना वो लगा देते हैं हॉस्पिटल में. दूसरी तरफ ये कि हम फिल्म जो है ना परचेज कर रहे हैं पर ईयर जो है ना तकरीबन 1 करोड़ रुपए की. सो हमें जो है ना ऐसी कोई रिसर्च है या कोई ऐसी रियल डेटा हो जो कि कंपैरिजन करे कि इसकी रनिंग कास्ट जो है ना वो EMR की और फिजिकल अगर हम लें तो उसकी क्या है? Thank you. Very good question. I think quite relevant. Okay, so this is how it is. First of all, the X-ray machine you are having, is it generating a digital X-ray? Yes or no? First thing, if it is generating a digital X-ray, then you don't need to have a whole EMR system. There's a very small module or a component just specifically for a radiology department. So if you have that small module installed, the prerequisite is that the X-rays you are generating must be digital. वो ना ज़रूरी है. At the same time, you also have a backup for electronic record. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome the CG of Comstech, Dr. Bal Chaudhary. I think आपने बात की है रनिंग कॉस्ट की. कॉस्ट जो है IT की वो एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट होती है ज्यादा. It's a development cost, initial cost, it is very high. Millions में होती है. डिपेंड करता है आपको कितने बेड का हॉस्पिटल है, आप कितनी आपको चाहिए, इंटरफेस कितने चाहिए, कितने नोट्स चाहिए, कहाँ पे आपने पॉइंटर रखना है, एक्सेस देनी है, कितने आपके एक्सेस एरियाज हैं, पोर्टल्स कितने हैं, मुख्तलिफ किस्म की, जितना ज्यादा ऐड करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन उतना महंगा भी होगा. सो द कॉस्ट जो आप बात कर रहे हैं, कॉस्ट एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत हाई है. दैट इज द इनिशियल कॉस्ट विच इज वेरी डिफिकल्ट टू पे. मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है. उसकी वजह यह है कि आपके बंदे ट्रेन हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपके पास होगा. लेकिन ये बात याद रखें कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस्ड होता है किसी कंपनी से, और उस लाइसेंस की ड्यूरेशन होती है 3 साल होगा, 5 साल होगा. 5 साल के बाद फिर वो मांगेंगे 2 करोड़ रुपया, क्योंकि वो काम करना छोड़ देगा. और अगर CDSS जिस तरह तारिक ने बताया, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या अगर वो इंटरनेशनली किसी के साथ कनेक्टेड है तो डेफिनेटली फिर उसकी दोबारा से उतनी कॉस्ट पड़ेगी. सो कॉस्ट इज वन कंपोनेंट कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर क्यों नहीं ये आ रहे. और मैंने ये देखा है कि हमारे कई प्राइवेट सेक्टर के लोग, जिस तरह शौकत खानम ने ये जो दिखाया है, इन्होंने ये डोनेट किया था पंजाब गवर्नमेंट को, सॉफ्टवेयर अपना जैसे खत्म हो गया दे दिया, लेकिन पब्लिक सेक्टर में उसको नहीं यूज कर सके, नहीं चलाया उन्होंने. बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल दे देते हैं, अपना नया ले आते हैं सिस्टम, और पुराना जो है वो डोनेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट में उसको थोड़ा सा, बहुत सारे रीजन है. इट्स नॉट जस्ट द कॉस्ट, देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर हिंडरिंग द growth of telemedicine or hospital information system in the public sector. बहुत सारे रीजन है, cost is just one. आप ये सब ध्यान में रखें बात कि सबसे बड़ा जो इशू है ना ये हॉस्पिटल में डाटा डालने का, उसका इशू ही प्राइवेसी का और सिक्रेसी का है. ठीक है ना. इट इज अनएथिकल कि किसी का डाटा किसी के पास पड़ा. अच्छा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में डॉक्टर को पता है, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं कि मेरे सिर्फ डॉक्टर को पता है. अगर मेरी जो राज है, मेडिकल का जो प्रॉब्लम है, वो किसी सिस्टम में चला गया जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर भी ऑपरेट करता है और 4-5 और लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो मुझे शक है,
तो मैं इस चीज को पसंद नहीं करूंगा। अमेरिका के अंदर भी उन्होंने बताया 2-3%, 4% आईटी का इनरोट आई है उसके अंदर। सो इट्स नॉट जस्ट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर हिंडरिंग। अभी हम ब्रेक में भी आप आईटी के एक साहब से बात कर रहे थे, हेल्थ HMIS की और मेडिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रही। इट्स नॉट जस्ट द कॉस्ट, इट इज प्राइवेसी, data confidentiality. The private sector does a lot of things to reduce their financial, कहते हैं ना, अपना फाइनेंशियल चीजें छुपाने के लिए वो एंट्री नहीं करेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो आसान होता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग हार्ड कॉपी में करना। फाइनेंशियल उसमें जाएगा लैपटॉप में, तो लैपटॉप उठा के ले गए तो किसी भी इनकम टैक्स वाले तो वो पता लग जाएगा। तो इट्स नॉट जस्ट दैट। दूसरा, सिक्योरिटी के बाद इसका रिन्यूअल कॉस्ट है, लाइसेंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट उस तरह से नहीं है, वो इतना इशू नहीं है। ट्रेनिंग कर दी आपने, अच्छा सॉफ्टवेयर ले लिया, सिस्टम में ट्रेन कर दिया, बट इट हैज अ लाइफ 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। आपके साथ बैठे हैं बिल्ड हॉस्पिटल बिल्ड करने वाले, आप इनसे मशवरा करें, ये आपको पूरा डिटेल में इसका बता देंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन फॉर रिकॉर्ड दी? बट हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स इंडिविजुअली बिल्ड करते हैं एंड ऑन द बोर्ड नेशनल लेवल पे इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जांपल शिफा एक एक्सप्लेन बनाता है, आपका ने का एक्सप्लेन बना दिया, चौकस लाहौर एक बना दिया। हाउ we like connect all three of them like we want to take something? And second question is कि आप डेटा को हॉस्पिटल में लोकली रखना चाहेंगे या फिर क्लाउड पे रखना चाहेंगे? क्योंकि क्लाउड में है ऑलवेज चीपर, बट अगेन क्लाउड पे रखने से आपके पास मल्टीपल पीपल कैन, मल्टीपल स्टेकहोल्डर्स कैन एक्सेस इट। वही बात आपने, वही जो मैंने जिसका जवाब पहले दे दिया कि ये आप डिसाइड आप करना चाहते हैं कि आपको डाटा, आपका जो हॉस्पिटल है क्या ये वो सिस्टम हॉस्पिटल इन्वेंटरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ जाना चाहता है कि नहीं। सरकार में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्लिनिशियंस का, डॉक्टर्स का अपना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स का भी है लेकिन डॉक्टर्स का ज्यादा है। दूसरा, वो जो लोकल जरूरत है, अगर आपने सर्वर रखना है उसकी बड़ी कॉस्ट है, अगर आप उसको गूगल पे या क्लाउड पे रखेंगे तो वो पर मंथ एक रेंटल चार्ज करते हैं। इट्स द ऑप्शन आफ्टर यू डिसाइड दैट आई वांट HMS। अगर आपका हो जाए तो फिर जी, I think closing ceremony कर लें and then. Okay, thank you, Dr. Shazad. Has to, I think, leave. He's traveling after this. So we will quickly. Thanks for him for joining. Okay, that marks the end of the technical sessions, and now we'll move on to the closing remarks. Firstly, I would like to invite Coordinator General Comstech, His Excellency Professor Dr. Mohammed Iqbal, for his closing remarks. You've been so fortunate to learn from Professor Dr. Shahzad, a person who is not only a practitioner of all this what you have learned, but also led an institution of a very high quality. Second thing which really surprised me, that you still have about 70 people or more still sticking on for 2 days of attending this very important workshop. That primarily tells you that certainly a very important subject, and that certainly relevant to the need. So I see a lot of intellectual outcome of this exercise, which is primarily focused on developing capacity. We have discussed this with Dr. Shahzad, that the real issue is unfortunately our least developed countries in the OIC world. We have 27 of them. And by any definition of development, you don't really find them going anywhere. You know, increasing population, shrinking financial resources, lack of capacity in almost all sectors. Now, what is the best gift which Pakistan can give to them? Of course, we are not really a very affluent nation. We are not very rich. We cannot build convention centers or roads and bridges. But the excellence you have, and the excellent institution which we have, and the intellectual capital which we have in this country is our niche. This is something which we can use not only to develop linkages and promote their healthcare sector, but also to promote the software image of the country. And this was one of many efforts which comstech is doing. We're absolutely proud to be partner with Health Services Academy. This is a very high quality institution led by a very high quality and passionate Vice Chancellor. And I would like to thank you all, both in person and also online participants, for a very active participation
I can see that this discussion can go on till very late in the night. I have to go to the airport and reach home. But certainly, let me tell you that it's an absolute delight to have you with us. I hope that we were able to contribute a bit in your knowledge and in your spirit. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Professor Iqbal. Just a few quick closing words by Professor Siddharth. I think if we have started thinking about hospital management in these 2 days, we have served the purpose, because Azad Ali ka bada mashhoor call hai ke watch your thoughts, because your thoughts can become your words. Watch your words, because your words can become your actions. Watch your actions, because your actions can become your habit. Watch your habit, because your habit can become your character. Watch your character, because your character can become your destiny. So आपकी जो थॉट से लेके डेस्टिनी का सफर है ना, वो सिर्फ एक आइडिया से शुरू होता है, थॉट से शुरू होता है. हमारी जो थॉट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये जो पूरा फ्रेज है हजरत अली रज़ी अल्लाह का, इसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि ख्याल या सोच जो है ना इंसान की, उससे उसकी डेस्टिनी का तयन होता है. तो अगर हमने यहाँ पे 2 दिन बैठ के अपनी सोच को थोड़ा बेहतर कर लिया है कि हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बेहतरी लानी है, हॉस्पिटल को बेहतर करना है, तो सॉल्यूशंस निकल आएंगे. वी डोंट हैव लोकल सॉल्यूशंस, बट start thinking globally and then act locally. There are people sitting in this room who have the solutions. वो आप इकट्ठे मिले आपस में चाय पे खाने पे आपने डिस्कशंस की, मैं देख रहा था. People were discussing and sharing ideas with each other. तो इस तरह के फिजिकल इंटरेक्शंस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है. ऑनलाइन तो है ही कि फिजिकली जब आप मिलते हैं एक दूसरे से तो आइडियाज का एक्सचेंज ज्यादा अच्छा होता है. सो कीप ऑन लर्निंग, कीप स्ट्राइविंग एंड कीप थिंकिंग पॉजिटिव. मैं हमेशा अपना जब भी कहीं जाता हूँ इकबाल साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि हम एज ए नेशन बड़े पेसिमिस्ट हो गए हुए हैं. हम नेगेटिव सोचते हैं, हम डूम्स डे देखते हैं हमेशा कि बस कल खत्म होने लगा है पाकिस्तान. रोज हम सुबह उठते हैं ना तो हमें लगता है आज जो है ना पता नहीं शाम तक क्या हो जाएगा. एवरीबॉडी इज लाइक दिस. हालांकि 1947 से लेके अभी तक मेरी और आपकी हम सब की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इजाफा हुआ है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा हुआ है, हमारी सर्विसेज बेहतर हुई है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है. लेकिन हम नाशुक्री के अंदर रहते हुए हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव शो करने की कोशिश करते हैं. खुद अपना पेट नंगा करते हैं, खुद अपने आप को बुरा कहते हैं. हमें जरूरत ही नहीं किसी दुश्मन की. हम पाकिस्तानी खुद एक दूसरे कहते हैं दुश्मन है कि सुबह शाम इतनी बुराइयां करते हैं एक दूसरे की कि पाकिस्तानी बागी कहेंगे तो पाकिस्तानी खुद का है, हमने थोड़ी कहा, ये तो खुद कहते हैं कि हम ऐसे हैं. तो एटीट्यूड अपना इस तरह से कर लें कि स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली दैट वी कैन मेक अ डिफरेंस, वी कैन डू गुड एंड वी विल डू गुड. सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, आप अपने आप को, मैं पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसलिए मैं स्माइल करता हूँ और शायद इसीलिए मैं थोड़ा बेहतर लगता हूँ. और मैं अक्सर कहता हूँ उन लोगों से जो नेगेटिव होते हैं और जो नेगेटिव सोचते हैं, उनके चेहरे के ऊपर अजीब सी उदासी और मायूसी होती है, वो कभी भी खूबसूरत नहीं लगते. याद रखना, हमेशा वो बंदा खूबसूरत लगेगा जो स्माइल कर रहा होता है, हमेशा वो बंदा खूबसूरत लगेगा. तो वो बार बार मैं ये अक्सर मैंने हर जगह ये शेर पढ़ा है, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं. तो आप जो है ना उदास लोगों से मिलना छोड़ दें, हंसने खेलने वाले लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, अपने वार्ड में, अपने हॉस्पिटल में उन लोगों को सपोर्ट करें जो खुश रहते हैं, जो पेशेंट्स को खुश देखना चाहते हैं. तो अगर हम ये एटीट्यूड डेवलप कर लें, पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड हों, अपनी थॉट्स को डेस्टिनी के साथ कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्ट रहें, तो आप में से ही सारे जो हैं वो निकलेंगे लीडर्स और वही जाके चीजें चेंज कर देंगे. ये हमने, हमारी जनरेशन ने उदासी फैलाई है, जो हम और आप जो 60s और 70s की पैदाइश है ना, इन्होंने तबाही की है इस मुल्क की. अब हमने अगली जनरेशन को समझाना है कि आपने अपने इस मुल्क को बेहतर करना है. सो होप टू सी यू ऑल स्माइलिंग एज ऑलवेज and hope to see you doing something good and then feeling good about it whatever you do. पाकिस्तानी है, मुसलमान है और हम यहाँ पे रहते हैं, हेल्थ के शोबे से हैं, हमसे ज्यादा लकी कौन है यार इस दुनिया में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Professor Siddharth. I would like to now request Professor Iqbal and Professor Siddharth if we will be handing over the certificates to our resource persons, please. While we get ready, I would also like to thank the resource persons who are not here right now. Dr. James, who was present with us virtually, Lieutenant General Asif Mumtaz Sukhaira, Major General Muhammad Salahuddin Qasim, and Mr. Mubashir Nabi. Okay. I'm sorry, I forgot to acknowledge your
Thank you, sir. So firstly, Mr. Mohsin Raza Khan. Dr. Tariq Mahmood Ali. Dr. Ahmed Hussain Tariq. Professor Dr. Shahzad Ali Khan. And Professor Dr. Abdul Rashid. Thank you so much. Okay, to all the participants, so that we, yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, to rest of them, those staying at the accommodation, your certificates are at the guest house. Those that came with the HSC delegation, they're with Dr. Tariq. But one by one, you can come and take a photo with Dr. Shahzad. Afterwards, the rest of you, your certificates are outside. So the ladies from the right, gents from the left, there are two desks. You can start collecting your certificates. But before that, you can take individual photos with Dr. Shahzad one by one.